The city of love, forging dreams for some, but a cruel mistress for others. Our first day at the champion stage saw Heroic continue their playoff romance. No tragedy striking for the Great Danes. The heartthrobs of the arena vitality, creating history before our very eyes with the Org's deepest major run so far. Semi-final secured and the hearts of the arena safe for now. The other side of the tale, heartbreak unfortunately for FaZe, no longer a chance to add a second major trophy to their already brimming cabinets. On the other side as well, we saw unfortunately Into the Breach departing the major early. The UK lads, a valiant effort, but unfortunately heading home from the major quarterfinal. My name is FaZe Spears, and joining me down here on the desk, we've got Matthew and Mary Snake to open up another epic day of Counter-Strike. Gentlemen, yesterday it was amazing to be back in an arena once again. The energy was electric. More so for the second game, of course, when Vitality was playing. Those Golden Hornets were going absolutely crazy. I stood in the arena for just a little bit there, and it was just like, oh my goodness. Like, it's contagious. It's contagious. Arena CS is the best CS. If money allowed, I would say every BO3 should be in Arena. I mean, just play in Arena the entire year? Yeah. What we're doing then? No online qualifiers, Arena qualifiers. All Arena qualifiers. Yeah, listen, I think we were blessed in both ways, in both possible ways, yes, yesterday in Counter-Strike. Of course, we had the home crowd champion in the form of Vitality making it through, but we also had a very high-quality Counter-Strike game between FaZe and Heroic, one that we could talk about for hours, and that was very impressive to witness. A game that was worthy of being a grand finals, right? We look at these two names, it's a shame to see them clashing in that quarterfinal, but I think Matthew was totally right. We saw incredible level coming out from both sides. Unfortunately, though, for FaZe, they do lose out in this one, as you coined them, the procrastination kings. Left it too late to submit the essay this time. Yeah, the great procrastinators fell this time, not getting the paper in by due date. We saw the great comeback that they were pulling off on Nuke, falling just a little bit short. Second map, Overpass, they look convincing, but map number 3, Heroic showed class. Why they are the best overall team in CS. They might not have the same firepower, the stars that FaZe Clan have, but they know how to get it done as a unit. Everybody on the team delivering. I think the differential between the top fragger, bottom fragger was something like 5. It's crazy how they all were able to put it forward, and that was obviously to the detriment of FaZe, and Kerrigan, just the one major for him. You know he wanted more, but that's going to end his story. Yeah, what a journey they've had. We have the results here, the path, the adventure that FaZe had to go on to here in Paris. And I have to admit, yes, the romantic in me saw some of the comebacks they've done here in Paris and had me believe. I still remember the comeback against Na'Vi in the Legend stage, which, again, a potential grand final type situation, and still they were able to pull it through. But then I think this was sort of a smokescreen for some of the issues in terms of quality of game that we witnessed, and no one can really argue that Heroic wasn't the better team. You can literally see it on every single page that we go through in terms of FaZe's result, almost playing every single match that they needed to be qualifying here. And as you aptly said, Matthew, that Na'Vi game, that was really something special to see from FaZe. Of course, pushing Na'Vi out, they didn't make it to the playoffs because of that clash. Yes, I mean, this in itself kind of had me believe, as I said, but it was an apt reminder that FaZe did drop maps along the way. There was obviously that 16-7 against Heroic that happened. They lost to Into the Breach as well. And the third map against Heroic is all you needed if you wanted to debate that FaZe should win that game. This is the end of the argument. The fact that Heroic on their CT side just constricted FaZe, and it literally felt like I was watching a YouTube video, and then Heroic were just on 1.5 speed. They were playing faster than FaZe. They had faster rotations, faster decisions. They were together. They were in synchrony. And then FaZe were just running after the game, and they were very much more static. So for me, the result is very logical. And we could see just the way that Heroic played. You talked about it being 1.5x. And yeah, all those moments of transition where FaZe was trying to get into the right spaces so that they could go for their split, try to hit that execute. It was Heroic that were meeting them every single time. Every time FaZe was trying to approach, Heroic had an answer for it. They caught them consistently with their pants down. Cadian made FaZe look foolish. Shush on that A-site defense on Mirage was a standout player, and we don't say his name enough because he is a support player, but in that game, he showed that he is one of the best, if not the best, in that role. Listen, I don't know what you think, Moe, but for my money, Heroic plays the best Counter-Strike, period.
That is Agreed. the best Counter-Strike in terms of if you're really in love with the game and if you really like to kind of pinpoint rotations and timings and again kind of synergy between players, like Heroic is your go-to. They optimize what can be done in Counter-Strike, whereas in a team there's a couple of seconds here and there where people are second-guessing themselves. Heroic have none of that. They just move as a unit. They reclaim map control. They abandon positions if they have to, but then they have a player coming in behind to cover them. This is what we like to call team play. They embody team play. And now Heroic clawing themselves ever closer to lifting their first ever major trophy. We know the heartbreak that they experienced back in Rio just last year, but no heartbreak, gladly, for the Arena this time around. Into the Breach, they did have quite a hot start to that first map, but then it ended up just being a Vitality show kind of after that. At the very least, we're going to remember one guy's name on Into the Breach. Cypher made life miserable for Vitality. His entries on the A side of Vertigo made Vitality sweat. I saw the worry in their faces. People like Magisk, multiple-time major champion. Yeah, I'm sure both of your guys' faces were a little bit worried too, because that was so impressive from Into the Breach. An underdog story. You look at some of their wins, though, and there is quality with this team. Yeah. The fact that in the Legend stage, they took down FaZe in the BO1, ENCE in the BO1, and then actually made Vitality in an arena worry for their tournament lives. These guys should be proud of themselves because they put UKCS back on the map. It felt like a laughingstock for the longest of times. Sure, Endpoint, yeah, they're working their way through those RMRs. Sometimes they get close here and there, but you were never actually expecting them to do anything at the major, and the reality is Endpoint never did anything at a major. Into the Breach showed that there is talent in the UK. And they defied expectations every single step, right? I don't think much people had them qualifying from the RMR in the first place. We know how hard it is to make it through the European qualifier. Coming into the Challenger stage as well, they didn't. They were straight in that Legends. We thought, that's it. 0-3. I'm sure like most people had ITB as an 0-3, and they proved us all wrong. They proved us that stories don't matter. It's what happens in the game. I love that Maui's just gassing up the UK for me. I don't even have to do that. Just have that one time. Myself. Just have that one time. Long live the king, Freya. Long live the king. Thomas, he Only is my king. My real king actually was ZywOo yesterday because, man, he made history for himself, for the organization of Vitality. Finally, Matthew, we get to see him in a semi-final of a major. It seems like we have been robbed of that occasion so many times. Listen, he was correcting what I like to refer to as an astronomical mistake. The fact that ZywOo has never set foot on a semi-final of a major stage. But again, it's a reminder of the issues that he, as an individual, and the Vitality project had throughout the years. It truly felt this time, though, that everything was coming in together. And people are getting that belief, that deep belief that Vitality can have the way to the grand final. I made a claim during the Legend stage. I said if Vitality survived the quarterfinal, they would win the major. I'll stand by it. I have Vitality winning this goddamn major. But Heroic got me a little worried. I'm not going to lie. The Counter-Strike they played got me a little worried. I think that is a legitimate concern, Maniac. I mean, what I'm scared, Maui. I'm scared. What Cadian did, what Heroic did, it actually made the Vitality audience, the Golden Hornets, when Heroic are coming out on the stage, they're getting booed. They're booing them. They're even cheering. They're cheering for Vitality. When Heroic is out there, they're saying Vitality, 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 because they want them to lose. Inside, they're crying. They're saying, this is the one team that could beat us. So Vitality, they look good. What they did at IEM Rio, it's showing that everybody is becoming a contributing member again. Dupree is looking like his former self. Magisk is, to me, the second best player, and it's supposed to be Spinks. So there's a lot of people that you can choose from if you're Apeks and say, get me this frag. Get me this round that we need in order to get past a team like Into the Breach. Yeah, and the work is coming in together, right? We talked about the T side. We talked about their struggles over the months to try to find an attitude, find an idea on how to play the game, and it's really, really happening. Magisk was an unsung hero of that best of three T sides as well, just under ZywOo in stats, which in itself is kind of a compliment. And then the man, ZywOo is providing 1.45 rating in his first playoff here. These are the numbers we like. Things you absolutely love to see. We also love to see the bracket settling after our first day of the quarterfinals. Of course, 2 more quarterfinals coming up today, but I feel like everything has kind of gone as expected, right? We expected a really close fought battle in that first game, and then we expected Vitality to be going through. Order has kind of been restored coming into Champions Is that going to happen today? Right? Is that happening? I think Chaos is just going to be ensuing today. So let's see what we've got on the cards. 2 more best of 3s and 2 more quarterfinals going down here in the Accor Arena. Last thing of the day is going to be Apeks taking on Team Liquid, but first it's Monte versus GamerLegion.
Winning a major is the ultimate dream. And to some, it will only ever be a dream. So how does winning a major define your career? For some, it's the confirmation of decades of efforts. For some, it's the vindication of an idea, a philosophy, a vision. And for some, it's a way to propel yourself under the light. If you win a major, you'll be remembered forever. It's like a dream for most players to be able to say they have won a major. It's really hard to win such a prestigious tournament. I think without winning a major, you can still have an impressive career, but there will always be a debate. There will always be people questioning and wondering, but why didn't they win a major? Everybody wants to live with the feeling that they proved it at the highest level. One of my biggest memory from back when I was entering the scene as a pro were that a lot of people were against me because they didn't think that I had enough and they didn't believe that I would become the next big star from Sweden. And that was something that made me more motivated than ever to break it off and succeed. I mean, it was a sweet feeling to finally get it, because it felt like it was destined to end up in our hands in the two first ones. It finally happens! I think it was also like a breaking point for the team, so that's why I was crying in the end, because it felt like we were in a slump, we didn't perform to our level, we started off bad, and doing everything in my power to push it through and play that good in the final, and the whole playoffs was just the answer that was needed for us and me personally to be like, hey, I cemented myself as one of the players that actually has won a major in CSGO. It would have been sweeter to win more than just one, but I did win with the right group of people, because I consider them family and friends for life. I think for me, Get Right, think of as a sort of a foundational person within this space, and I think inspired more people than we can probably count. I think he did a lot for the scene, a lot for CSGO. He is a legendary player and he's a historical figure when you guys think about CSGO. I think you can look at the moment where he brought out that trophy in Stockholm as why he is such an important person in the space. I think the mentality of what I did in my career would probably be the best answer for my legacy in CSGO. I think in the early days, it was about winning what was then just the biggest competition there was. It's so magical that you capture a snapshot in history. I will always remember the legendary years of the majors. It would not be right to wrap up a decade of CSGO history without getting an absolute legend up here to join us on the desk. Christopher, thank you so much for taking the time. First of all, how are you enjoying Paris? Are you getting emotional thinking that this is the last one? Yes, and especially yesterday when it was the introduction of the whole major playoffs and all those things, and then you see some of the players through the years, how young they were before, and you see older, and then, like when I saw Elise crying, I actually sat next to Jason and cried myself. I sat there like, God damn it, and like hearing, everyone saying basically the same line, I owe everything to CS. I owe everything to CS. But the thing is, for a lot of us people that work in the industry, even behind the scene, as a player and a coach, manager, organization that's been here forever, everyone has the same answer, and that's the beautiful answer. It's pretty simple, straightforward. It's like, I owe everything to it. Because it means that we're getting friends for life. We've seen people all over the world. We're also competing against the best, and we have also seen like bad and good times and all those things combined. And it's just a small group of people that actually been part of it, and it's very, very special. So I consider a lot of people family. It's mad, isn't it, when we just look around this arena and we think about how much the community has grown, right? Obviously, you were back at the first ever CSGO major, a lot smaller crowd then, but an incredibly intimate vibe, right? And I feel like we're just extending this, expanding this out to this amazing audience now. I mean, it is still mind-blowing, because like when I was 10, my mom and my dad asked me like, yeah, you're putting so much time into this game, Counter-Strike. I've only played for a year. I'm 10 years old. It came out 1 year before, and I'm like, one day it's gonna be big. They're like, yeah, like yeah, like one day I'm gonna be. So I was already having that dream when I was a kid, And then the first ever big real one was like probably Katowice, which is sadly not a blast tournament, but in the same time showing off, the audience coming there, bringing it up, and you're like,
actually there's something here, you know, and then the years go by, it's like everyone is having it, it just showed the support. Every bit of fans all over the world had the chance to be and see it like in front of themselves instead of seeing on a monitor or a TV or anything like that. And it's just amazing to see like the faces of the people just standing super happy Chris, to see. do you, sometimes I think about how crazy Counter-Strike has become, and I wonder, did I realize when I was part of it how incredible it was when we were playing at the time? Do you feel like when you were on that stage, you could realize what it has become? Or did we need maybe a couple of years, a bit more maturity to fully embrace like holy shit, esports become huge? I mean, I still don't understand how big it is sometimes. Like even now when I'm not even playing for the last 3 years, like professional or sitting on a stage like this anymore, but I'm like still mind blown every time when I'm standing. And I mean, especially this time when you know this is gonna be the last CSGO major ever. Like it's a lot of weight on it, you know? And this is something for us for the last 10, 11 years been playing like day out and in and being pro, or just having a casual night with your friends on a Saturday, you know, having a good time, playing matchmaking and all of those things, you know. It's not gonna be there again. It's like, it's so real, the whole thing, you know? It's going away, and I think the growth to me has been the most shocking aspect of all of it. I was watching back some old NIP footage, I think from 2013. Anders was casting on NIP TV, and in the cast, he was like just so happy. He's like, oh, the viewership numbers got to 8,000. Like, let's go. Tell your friends about this game and everything. And it's just like 8,000 today is like a tier 2.5 game, and there's just like random people in Twitch chat just getting angry, you know? But now people are just celebrating Counter-Strike to such a great degree. Like, it wouldn't have surprised me if that FaZe Heroic game yesterday, concurrent viewers maybe hit 900,000, a million, whatever. And the fact that it's 100x or 10x, 100x, whatever, that's so brilliant. I mean, and it's seriously such a testament to how amazing this game is. Yeah, but I think that's the beauty of it, and you have to remember the history of CS. Like, we have to go back 20 plus years looking on all the versions and everyone being part of different scene, like even the source people, I didn't know them that well and so on, and hear their stories of what they did and so on. It's like so similar for me from 1.6, even the little battle between the games in a way. But it's just beautiful to see that everyone eventually came together and played the next version and actually really believed in it, and especially the beginning how weird the game were. Like in the beginning, it's like, is this really CS anymore? Is this the thing that's gonna take us to the next step? And now we see 10 years later, yes, it was. Chris, we got to see your winning moment, obviously with NIP at the major trophy that you lifted. You had your arm around Exist, which is kind of crazy thinking. He is now standing behind Heroic. Is that kind of surreal for you to see? It is, and I am cheering for him. If someone's going to ask me which team I'm cheering on, I'm not going to say it out. I don't want to say it out loud because I feel like that's a small jinx in a way, so I'm not saying it out. Even everyone knows. Yeah, nobody heard it. Yeah, no one's listening right now. But it's so real because, like, I was a long time player with him, like a teammate of him, you know, and knowing him in and out of the game, and you know, that's experience itself. And then you're seeing like, we're done, like every one of us started stepping down more and more, and you're like, what are you gonna do, etc. Like, does he exist? Jumping Heroic, you know? I'm like, that makes sense. A lot of people were questioning a little bit again, you know. All of a sudden, he's actually the head coach. He's taking over for not even an analyst, and now he's standing on his second major. Last time was they came so close. He came second. I think it's time. I think it's time he's becoming the second manager or a coach ever to also get it as a player and as a coach. And I believe in it. Yeah, he'd truly be making history doing that. Christopher, I just want to give you the opportunity, if you want to say anything to fans at home that have maybe been watching you since you were competing all the way up until now, a decade later. Anything you want to say? I mean, it's pretty straightforward. It's like, it's just a lot of love because I wouldn't be here if it wasn't for you guys watching and follow my career, and like even playing against Maniac for the years as well. And he's a long-time friend of mine now, which I'm super happy to be, and people around the industry, and even like people who works on the tournament, etc. Like, I get very close friends with them, and it's like, for me, from the bottom of my heart, no matter where, it's like just a big thank you. It's like because of how amazing everyone is. So much love up here, man. This is a beautiful way to open things up. But we have a battle to be going down on the server. Our third quarterfinal here at the Blast TV Paris Major. It's Monte versus GamerLegion going down after this.
Two Cinderella stories, and for one, the fairy tale run will continue. We open up this quarterfinal with the collision of two underdogs, and the first time either of these squads have found themselves in a major top 8. We have Monte, we have GamerLegion going head-to-head as two of the most unexpected additions here in the Accor Arena, Matthew. Absolutely, Freya. There is no other way to put it. They were on nobody's cards for making it to the playoffs. And this is why this game is emotionally exciting for me. This is why I get involved in what's happening in the action. Because my dear people at home listening and watching this broadcast, if they are in quarterfinal, so can you. They're your everybody. They're your journeyman. They're not Astralis, crazy organization. They're not Simple or Zywoo, best players in the world. They're a bunch of dudes together playing Counter-Strike, having a good time. And suddenly everything clicks and they exceed expectations. They play much better than we think. They play without pressure. They are vindicated. This is why this game is so precious, because they represent what we like to call the openness of the circuit. It's the major. Everybody can come in. If you have a good result, you'll make it through. Doesn't matter your budget isn't a bunch of millions. If you play good, you are here. That's what they represent. I think that's actually a beautiful point. Just the fact that without the organizational support that so many people think you need to be investing, this is not necessarily an indictment on orgs that are spending a lot of money. It's just that it doesn't need to be the only way, because a lot of people look at what's going on with the teams like Astralis, with the teams like Heroic, where they have this huge staff, the support guy, the mental coach, all these different aspects that are helping their performance, but you can get it done by yourself. Monte doesn't even have their coach here, and they still made it through the Legend stage. They still made it through the Challenger stage. They still look like an incredibly strong team that has so much more to give. That's the point, right? We talk about Monte particularly putting them under the microscope. Obviously, their coach not able to come with them. We talk about, the political adversity that some of these players have been facing in the world currently. They're also changing up their in-game leader basically a minute before they're going live with the first Challenger stage game, and they've smiled in the face of adversity, Matthew. Yeah, they've thrived in the face of adversity. I'm right there with you, Freya. I think this is what everybody has noticed when it comes to Monte. And I know the matchup against Na'Vi was a very specific one. I'm aware of it. But the intensity with which they've been playing and how much will and grit they were putting on the server makes me feel like they're ready for battle. Like they're not going onto the server to shy away from the fight or to half play a game and leave with regrets. I'm expecting from these guys to put it all on the table, to play exactly the type of Counter-Strike they do. If it works or it doesn't, then if they do, then if they don't. But they will stay true to their identity with that same passion. Particularly in that Na'Vi game, right? Waro put his money where the mouse was, and he absolutely danced on Simple. Oh, yeah. That was a little bit of a revenge game for Waro. Obviously, having played with him in a charity match before that, Simple trash-talked him in the charity match, which for one is uncalled for, and two, it's also a great and sweet reason to hype yourself up for this game. So many other players, too, that have also just stepped up. SDY in that Na'Vi game, too. The one thing that is worrying for me, though, when it comes to Monte, is where will they get that motivation for this game? Because you're against another team that's in the Tier 2 space. They have no history between them, but with the veto here, looks like we're going to get Mirage from them. Yeah, we're probably going to see Mirage and Overpass, I'm assuming. I know you had a couple of thoughts about how obvious or relatively obvious the picks of each teams would be moving into this series. Yes. Mirage has really been the map that Monte like to go to if they can't get Anubis, and we'll see what the decider is in just a moment. It looks like it'll be Vertigo. But Overpass for GamerLegion also 8-map win streak on that right now. They're looking untouchable on the map. And for me, this veto actually favors GamerLegion quite a bit. This feels like one where they're definitely in the driver's seat because Monte couldn't pick Anubis, which is something they always want to do. I just want to zoom out for half a second. We got the veto coming over. Of course, we attacked it. We talked about the maps, but you just mentioned SDY. We need to take a minute to realize what he's been through and all of the roles and challenges he had to tackle to be in that position. Starts with being in Spirit, one of the pillar of Spirit being removed when that roster actually finds the most success. Then he gets a golden, luxurious chance to be in that prestigious Na'Vi team. He wins the first event, he goes with them, and then everything just unravels. Not able to keep up with the expectations, not able to keep up with the input, he's been put aside. You have been deemed insufficient. We are going to remove you now. He comes into this team of Monte, he's a player, he's a fragger, and a couple of weeks before, he becomes the IGL of this structure without his coach by his side, and now he's leading them into the quarterfinal. If you're in Hollywood out there, there's a script. Just buy the script
No. Write a movie We're about going to this have a damn couple of man. actors. Matthew McConaughey maybe can do that. I don't know. But there is a movie in there. It's a crazy story from SDY. Matthew McConaughey, Matthew Kikore sounds pretty I'm not similar I'm right going to stay now. on this. I'm good. Well, let's talk about some other star-studded individuals. A name that we always associate with Monte has to be Boros, looking so aggressive on the server. So, Mahone, what have you got to break down from this wonderful gentleman? Yeah, we always talk about Boros and just how good he is on the openings, and I want to break down one of the most creative openings I've seen him do on Mirage. So this actually comes back a little bit further back from the RMR against Heroic. This is really when he first cemented himself. Take a look at this round right here. So first starts off, he's here towards ramp, his teammate goes down towards Palace. He understands that Shush, he's probably here towards his balcony area somewhere. But look at the smoke that he throws. This smoke here is a lurk smoke. But what you might notice about this smoke is that it lands a little bit deeper. It lands a little bit deeper right here. Typically, when you see a lurk smoke, it usually lands a little bit closer. Now, keeping that in mind, with this deep smoke, it actually creates an opening. There's actually an opening here on this right side where a CT could peek it. But look at how Boros circumvents this. What he does is he actually crouches across. By crouching across, look at Shush's point of view. He actually can't see him crouch across. And the reason why is because there's actually an elevation dip in the floor here. That allows Boros to crouch across without Shush being able to see him, because the box covers him just enough with that lowered elevation that he can't see him. This allows him to cross that first angle. And next, pay attention to this next play. With that deep smoke, he's actually going to cross into Sandwich. By crossing into Sandwich, this is the effect of the deep smoke, because now if you look at this from up here, Shush, he can't actually spot Boros coming into Sandwich. This is why he throws this deep smoke. This allows Boros to then push in, find Cadian towards that triple side, and then find Shush in the side. And if you look at this from Shush's point of view, that smoke, because it's so deep, he can't see Boros come in towards Sandwich. And that's really the effect of it. This is why Boros is such a great player. It's not only because he has this raw aim, but he also has some creativity as well. That is such an excellent illustration from Mahone, because it really goes to show that Boros, he's not just, this mindless entry fragger, right? You put it perfectly, right? You said this proactivity has really been paying off for Monte. Right. We see that Boros had a great round there against Heroic. I think my favorite quote throughout the entire RMR was that when they were playing against Cloud9 and upset them in that victory there, they told Boros to just start running at Nafany because he's playing connector. Boros was able to show what he was made of there with a multitude of flash plays, smoke setups, and just ways that Monte allot him that space in order to find those kinds of openers. To say he's going to be important in that series is like the understatement of the year. Literally, like the amount of duels he takes first, he's put numbers of Art and Yekinder in the bin. We're talking 37% on the T side of opening duels for Boros, and he's got not only the creativity, but he's also a little bit reckless. Like he'll take the risk, he'll cross the smoke, and of course sometimes it doesn't pay off. But if it does, think about what it does to your opponent. You've just had a smoke. I have a game in mind against FaZe, I think it was, I'm not exactly sure, where he crosses the smoke, finds a double kill. If you're playing against him, your first reaction is, what is dumbass doing? Why did he cross that smoke? It's true. That's how you feel as a player, because when people take risks like that and they assume it fully, you find yourself in situations where you can have these multi-kills. And it's kind of crazy, right? When we look at the level of opposition that Monte have had to play against, Boros has actually been pretty consistent, no matter whether it's been lower tier versus higher tier opponents, right? I think he's one of the only one that kept kind of the ball rolling against Vitality. This was sort of the filter that I applied to that team. I kept their statistics under the microscope. He was sort of the only one that was still able to have that input against Vitality, where the rest, like Boros2K, for example, fell a little bit more silent. Yeah, and for a player that comes from such an underrepresented region, from Jordan, for example, I think that it's pretty interesting that he's able to keep this up, because he's used to playing with like 150 ping. He's usually playing most tournaments with such high ping, and I think that it's fair to say that LAN nerves have gotten to some of the other players on Monte, but whereas LAN nerves may be affecting Boros, he's getting a LAN buff, because now he's finally playing on 0 ping, good computer, and it's actually showing that on the way he's holding angles too on CT side, man, he's just laser beaming people in the face so consistently. He doesn't even have to play this like weird jiggle game when you're on high ping. It's just set your crosshair, nail the shot. Well, Matthew, you mentioned the name Waro earlier on, and I believe Dinko had a chance to catch up with him earlier. Hey, well, great to have you here ahead of the playoffs. You're about to walk out on that stage for your first playoff game at the last ever CSGO major playoffs. I just want to ask you how you guys as a team are feeling coming into today. We feel good, very good, but we will see everything when we will start to play, how it's feeling. And yeah, first round, and we will understand fully how it is to play here.
Is there a little bit of nerves knowing you're going out there? There's a huge crowd going to be playing in front of you. A lot of you guys are inexperienced in that kind of environment. Is there a little bit of nerves for you guys, or are you fully ready? No nervous. Everything good, and I think everything will be fine. Throughout your career, on a personal note, I think some people have maybe said that some of your best work is done online, right? We haven't maybe seen you on these big stages of these LAN events getting the same performances. So how hungry are you today to walk out on that stage and play in the biggest Counter-Strike stage there is and prove everyone wrong? It's my first big event, and I'm very hungry to win. And in terms of looking at your teams going up against GamerLegion today, obviously an opponent that isn't one of the biggest names of the world, it's their inexperience coming in as well, playing in one of these bigger stages. How do you think you guys fare against those the side of GamerLegion today? I think GamerLegion is a good team, but if we will play our game, our best, with our moral, with our confidence, it should be win for us. My favorite ever Waro quote is, if you believe, you can do anything. He coined that verbatim, original gangster right there. Original gangster from Euro 2K. Listen, I think he summed it pretty well at the end of that interview with Dinko. He said, if we keep our morale and if we keep our confidence, we'll be fine. I agree with that statement, but I feel like the question cannot just be slipped in that easily. In fact, it is the one question we have when it comes to Monte. That's going to be the first time that everybody bar SDY has an experience as close at what's happening over here in terms of the magnitude of the arena and how much space there is in it. We talked about how much intensity they put into this Na'Vi game. We knew for sure there was some emotional connection to it. I don't think they have an emotional connection to GamerLegion. So they're going to have to manufacture a way to be implicated with that level of intensity in that quarterfinal if we want to see the best of Monte. I mean, on the other side of the server, GamerLegion also going to be feeling that same intensity. We're talking about a squad who have never made it this far together. Obviously, Accor experience now in his home crowd of the Accor Arena, arguably. Good one, Freya. Good one. Original, man. Make sure the crowd doesn't miss that joke right there. Yeah, Accor in his very own arena. They named it after him and they added a C. But with the rest of this team, I think that it's kind of been a team effort for GamerLegion. The one guy that I would really focus on in terms of output has been Ima, IM, whatever you want to call him. All I know is he's not intermediate. He's damn good, okay? So Ima has been the playmaker for them so consistently. And because of that, Shuhei is able to put the pieces together, and also we talk about the revenge story from the side of SDY, Waro 2K when they were against Na'Vi. These guys had their own revenge story. They took down Mouse. We saw that Accor obviously was playing on that roster, that he had a little bit more to give in that one, highest rated player in that series, and Shuhei himself on that Mao's NXT team, leading Mao's NXT to 4 consecutive WePlay Academy League championships and showing that he can get it done on the biggest stages as well, and that it was a mistake for Mao's to pass him up. Look at where Mao's ended in this tournament, and look at where GamerLegion ended, and will you look at the personnel that Shuhei is working with? They're not as good as the Mao's players, bar none. There is no chance you're going to sell me that these players are as good as the ones on Mao's, but the teamwork is there, the structure is there. Shuhei's mid-rounding calling is better than Dexter's. I know, and honestly, here is my issue when I think about GamerLegion. My brain goes into this mode where I'm thinking, individually, this is an amazing audition. Right? Think about it. If you're Shuhei, we know how hard it is to find a great IGL out there. Now, he's put his name under the spotlight a couple of times. If you're Ima, you just mentioned him, huge output. Accor, bit of a different topic. I think he's been given a chance. He struggled a little bit in Mouse, but maybe he might be regaining credit. But here is my issue. They are not allowed to think like that. I might be thinking like that. I might be thinking, hey, Shuhei, maybe, you know what, there's a team going to be picking you up at the end of this. Who knows? If you're Ima, hey, maybe you're going to be under the radar of some of the great scoutings out there. But they cannot think like that because they will undo the bind that links them. And that's the end. You can never think that this stage is for you to shine as an individual, because if you do so, you will lose. So for today, they have to come together to make the most out of an incredible situation that they have. This is an audition for the world that they're starring in right now. I think, you know, Ima, Shuhei have been the two kind of greatest discoveries of this major, right? We're talking about two players that have such great synergy together. As you said, Maui, have some great mid-round calling coming out of Shuhei that was really crucial in what was an arduous journey throughout that Challengers and Legends stage. Yes, and really there's just one number I would point to just also solidify this point about Shuhei. They have the best 4v5 win percentage of any team once we hit the Legend stage. That is not easy to come up with plans, even when you do lose that opening frag, when Accor or Ima aren't handing it to you on a platter. That is why Shuhei, to me, has been
brilliant. Some of the other supporting cast members, Kios, Isaac, they've been doing their part, but the thing is that once again, I'm tying it back to the fact that Shuhei is one of the best in-game leaders left in this tournament. He is easily the better in-game leader left in this matchup between him and SCY, who has just taken it up a few weeks ago. And how crazy is it that he's so down to earth and like solid on an individual level? I have this conversation stuck in my brain. I saw him outside the hotel after they qualified for the playoffs, right? And I hadn't really talked to him too much before in the past, so I thought, hey, that's an opportunity for me. I'm going to get to know this guy a little bit. Like, I'm a fan of how you play in Counter-Strike, and we came to talk about the Apeks game, and I said, like, why was it so easy? What happened? And he just looked me straight in the eye and said, yeah, they were worried. They couldn't play the Counter-Strike they wanted. And I'm like, why are you giving me a talk like that? You're supposed to be the one that doesn't play your Counter-Strike. You're supposed to be the rookie. The nerve is supposed to get to you. And he felt like he was standing in his position where, you know what, my team, they know what they're doing. I know what I'm doing. I'm not worried at all. And this was such a disconnect between his actual situation and the way he plays. I was like, respect, man. Maui, you mentioned Kios' name as well. I think it was a surprise for a lot of us to hear the roars in the crowd yesterday when the intro video was playing, obviously hailing from Belgium, playing for some French organizations as well. So let's go ahead and check in with him, courtesy of Dinko. Well, Kios, is a big day today. You're going to be heading out there for the playoffs with GamerLegion. And I just want to ask, is there any nerves today? You feeling any of that when you woke up this morning? Actually, no nerves. I will totally enjoy it, and I'm happy to play here. Now, we heard yesterday, any time your name was mentioned, any sort of glimpse of Kios, the crowd just started erupting with cheers. They have a lot of support. Have you felt that already? Yeah, whenever I was here in the arena yesterday, I felt the support of the fans, and it feels just amazing. And in terms of your history with the French scene, obviously you speak French, right? So you're looking at your history with some of the French teams you've played with as well. You played with LDLC, Falcons for a bit. Can you talk to us a bit about the relationship with the French scene in your career so far? I'm actually a really good friend with most of them, so yeah. Do you think that's going to help today, that knowing that there's people out there, they've got your back, they're going to be supporting you? Vitality aren't playing today, so you're going to be their #1 fan club out there for you guys. For sure, it will push us forward even more than we were doing so far, so I'm looking forward for them to cheer for us. In your young career already, you've played with so many different teams in so many different regions, but you've never made it through to this stage of the major. You've never had this much success as you have with GamerLegion. What makes this team so different that has allowed you to get to this level? I think the working ethic of this team is really amazing. Like, even the staff that we have around us, that GamerLegion brought it, it's amazing. We feel always good whenever we go to tournaments. And also the team atmosphere is like really awesome. How do you think you match up in terms of firepower against Monte? Because we've seen those guys come out really strong in both stages of the major so far. You know, outmatching Navi, for example, in the firepower department. How do you think you guys fare in that firepower? I think, yeah, they do have a good firepower, but there's nothing to be scared of, and especially when we have our lineup. Is certainly going to be matching the decibels that this arena can reach, because, man, he was screaming his way through the Challengers and Legend stage, right? Yeah, he's been really putting that coal in that engine. Like, he was the one screaming around. And honestly, just to get technical for half a second, he's been such a last resort to use for Shuhei as well. Like, on the T side, he's got 80% of a success rate in the attempt when he's trying to go for the entry. It doesn't happen too often, but you can kind of use it every now and then. Every now and then, you know, he's going to unlock the situation, he's going to give you that free entry kill, and he's going to be needed today for that as well. Yeah, I think that with Kios, it was pretty much like a deafening, shrill, just like scream. Like, I thought there was a wraith that was like in our studio or something every time this guy was playing there. I'm interested to know if he's going to bring that energy. He said he wasn't nervous coming into this, but come on. We've heard that before. We've heard it before. You know, everybody gets nervous when they're in a big arena like this. So I want to see it. I want him to prove it. And I just honestly think that Kios, he's not really the guy we're looking to in order to just make the difference in this game. It still comes down to people like Imma, people like Accor, and if Shuhei can call a good game on top of it. And I think that's where it's really interesting when we're putting Accor under the microscope, right? Because you talked about, you know, having these opportunities in teams gone by. We're seeing, you know, again, a resurgence of him coming into things and a chance for him to prove himself once more. You're absolutely correct. And I think I'm just being the old man meme, you know, refusing to adapt to the new times. This is how my brain feels like that. My brain is telling me, no, Accor is going to drop the ball. Remember the days in Mouse. That's how I feel right now, because he let me down so much in Mouse, but maybe, just maybe, I have to let go of that time. I have to accept that this was a different constellation, this was a different time. He was probably feeling different as an individual, because his numbers have been much better in that GamerLegion team. He's not the one dropping, he's the one dropping the frag.
Well, two major newcomers now ready to be entering the arena. It's time to welcome the teams onto the stage. Yesterday, we kicked things off in the right way with two epic games to see who will be making it a step further at the last ever CSGO Major. Now, we go on to our other quarterfinal games where the pressure is still so high. Accor Arena, how are we feeling? Now later on today, we've got Liquid taking on Apeks in here. They faced off in a best of one, but on the stage we know things are different. We know that the pressure gets that so much higher, and it certainly won't be easy for either team. But first up, I know we got some GamerLegion fans in here. But what about Monte? I think that's pretty split. Let me try that again. GamerLegion? Monte? You ready to see the teams? Oh, you want to see the teams? That's more like it. It's time for you guys, as always, to bring the hype, bring the energy, bring the noise for me. It's time for our first game. It's Monte taking on GamerLegion. With me one last time. Let's bring the hype! This is GamerLegion. Kios, a unique path taken throughout his career, from competing at the minors in the CIS scene to heading back to Europe to see if he could go further than before. Perseverance is the most traveled path to success, and he has persevered in his own way. Now it's time to make it pay off. Accor, it seems fitting that he would make it inside the Accor Arena. But the pressure is high and the job is not done yet. Another mouse that has grown since joining the Legion. It's time to see the gamer in him hit his mark when needed. Sui, a four-time Academy League champion that was never given the chance to succeed on the main team, but he was ready to be next. With GamerLegion, he's carved his own way to success and taken them to their biggest stage yet. I am hitting his career best form at an international event, wearing his heart on his sleeve, never afraid to show his true self. He's now become the superstar the team desperately needed. Isaac, the supportive element of the team that has been far more than that. The Swedish player has come up huge at the perfect time, and he's rode that wave all the way into the champion stage. Let us hear it for GamerLegion!
is Monte. Boros, a Jordanian talent with aspirations to compete on the world stage, making tough decisions to further his career and never give up on his dreams. The pure aim machine who's been given the spotlight to succeed. Krasnal, showcasing his ability within the Polish scene, the firepower and positive energy has been a welcomed addition, bringing balance and a new lease of life to his team. SDY, he's always had the spirit with the ferociousness of a lion, but he wasn't quite born to win, at least in their eyes. Now he stands before us all as the experienced leader. His name might be some die young, but he could be immortalized in Paris. Demku, fighting through all the struggles of his past teams, determined to show the world that he can do and discovering the beast inside of him, activating at the most important tournament of his career. Woro 2K, the vital piece holding the most powerful weapon, alleviating the pressures of being an in-game leader from himself in order to have the impact required to perform at the major. Now he can show us what he is made of. Make some noise for Monte! It's an epic clash between these two in the quarterfinals. And these are two teams that many did not expect to even make it this far. A lot of change has gone on for both of these teams. They've had their fights. They've gone up against some of the toughest opponents so far. But now they need to show it on the stage. And that is certainly not an easy thing to do. Some of them have extra experience here, but overall it all changes when you get on that server. When it comes to the major, and especially the last CSGO major, this is one that matters the most. This is one where they can be immortalized on the final time. You have had one hell of a journey, man, coming from the Academy Leagues to this now. What does it feel like looking out here? Oh, it feels amazing. I'm so happy to be here. And you obviously got an extra set of fans, really, for the GamerLegion side. Kios, helping with that a bit? Of course. I mean, I hope we get the support from French fans today. Yeah, I think they're there for sure. Now, SDY, yep. You managed to take down Na'Vi on your way to this, right? You managed to put your team, who was unexpected to go this far, onto the stage. How much does it mean to you, especially as you only just took over the IGL role? We, like a team overall, very happy to be here and represent our country like it was our dream, so we will try to play our best Counter-Strike as possible. And what's interesting for me is, considering yourselves and GamerLegion, you're playing so much CS at the moment, you've never faced each other in an official game. What do you expect from this matchup? It's going to be a lot of mind games? We watch a lot of their demos, and I can say like it could be a very great game if both teams can perform under pressure. That's what it's about, right? Are you feeling that pressure at all, mate? Of course there is a little bit of pressure, but it's good to stay, straight in the game, focus on the game, and that's what we are here for. And in terms of SDY only just becoming the IGL and taking over from this, is that something you can feel more of a confidence in your own calling, that you're going against someone that doesn't just have it naturally in them? We don't focus on that, we just focus on ourselves as a team. I like it. Well, guys, shake hands, take your seat. Yes, you can say one word, of course. Go one more. Merci d'être venu. Je vous aime. Well, he's getting the French side on him there. Thank you very much, guys. It's time for us to move into our opening quarterfinal game of the day. It's time to see Monte taking on GamerLegion.
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का पेरिस मेजर 2023 के क्वार्टर फाइनल के दूसरे दिन में। मेरा नाम है रंजीत मामा सीनियर पटेल, मेरे साथ जुड़ने वाले हैं लूसिफर। कल हमने देखी थी 2 शानदार मैचेस, आज एक और दिन, 2 और क्वार्टर फाइनल्स। हमें पता चल जाएगा कौन से वो 2 फाइनल सेमीफाइनल्स होने वाले। पहली मैच होने वाली है मॉन्टे वर्सेस गेमरलीजन की। आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत ज्यादा चीजें सुनी हमने इन टीम्स के बारे में, बट लूसिफर मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं टीम्स के बारे में। एक जो चीज़ है ना मुझे जो बहुत पसंद आ रहा है, दैट वी आर सीइंग द अनएक्सपेक्टेड टीम्स इस आखिरी मेजर में काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के हैं, जबकि बहुत लोगों ने सोचा था ऑल द टॉप टीम्स विल बी देयर, लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टाइटल। वहाँ से निकल के टीम सच एज कल के दिन में हमने देखा इनटू द ब्रीच, आज के दिन हम देख पा रहे हैं मॉन्टे कमिंग इन, उनके साथ गेमरलीजन। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे काउंटर स्ट्राइक CSGO के ऊपर पर्दा यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है फॉर एटलीस्ट दिस मेजर्स, बट CS2 की तरफ जब जाएंगे विल सी अनदर सेट ऑफ मेजर्स स्टार्टिंग ऑफ। बट आई थिंक दिस विल बी अ रियली गुड स्टोरी टू टेल जब फाइनली काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव का आखिरी मेजर खत्म होगा। दैट वी सॉ फेनोमिनल टीम्स कमिंग थ्रू, अपने अलग अलग जो खेल स्ट्रैटेजीज थे वो दिखा के इतनी दूर आके दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रैबिंग द ट्रॉफी एज वेल। जी हाँ, कोशिश पूरी होगी जितनी भी टीम्स आई है यहाँ पे। आई डोंट थिंक दैट्स अ डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल भी। लेकिन अगर मॉन्टी की बात करें, दे कमिंग इन हॉट, और उसका एक कारण है बिकॉज मॉन्टी 2023 में HLD के हिसाब से सबसे ज्यादा मैप्स खेली है इस पूरे साल में। तो ऑफ कोर्स इतना ज्यादा जो Tier 2 Tier 3 टूर्नामेंट्स होते थे, स्क्रिम्स होते थे, हर जगह ग्राइंड किया उन्होंने। एंड स्टोरी लाइन्स की अगर हम बात करें, वॉर 2 के केम टू लाइमलाइट जब उनकी राइवलरी की बात करी जा रही थी सिंपल के साथ, उनकी मैच हुई थी इसके पहले जब नावी के खिलाफ खेले थे। वॉर 2 के केम ऑन टॉप, एंड मैच के पहले और मैच के बाद दोनों बार उन्होंने काफी अच्छे तरीके से समझाया था क्या इमोशंस थे उनके मैच के अंदर, मैच के बाहर, मैच के पहले और मैच के बाद। लेकिन बात करें SDY के बारे में, बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग है इनकी, 1.47 की रेटिंग है। जो नावी के खिलाफ मैच हुई थी उसमें बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाई दी उन्होंने। एंड ये प्लेयर्स एक एक करके जितने भी स्टैट्स आप ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, जो मैच उनकी हुई थी नावी के खिलाफ, वहां पे देयर वाज अ ड्राइविंग फैक्टर। हमारे जो एनालिस्ट बात कर रहे थे उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा उस इंटेंसिटी को, बिकॉज वहां पे देयर वाज अ लॉट मोर देन जस्ट अ स्लॉट एट द क्वार्टर फाइनल्स एट स्टेक। द प्राइड। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक सैम, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या कहना है ये दोनों टीम्स के बारे में, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने सुना है, जितना आपने देखा है? The way I enjoyed listening to the storylines इन दोनों टीम्स के अभी तक जैसे इन्होंने खेला है, जहाँ से ये निकल के इतने आगे आए हैं, एंड स्पेशली representing themselves in the last major that is happening, I think जैसे मैं शुरुआत में ही बोला, दिस लुक्स टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। एंड जिस हिसाब से अभी अभी इनकी वीटो भी हमने देखा है, वीटो के ऊपर भी चर्चे हुए थे, आई थिंक वी विल हैव अ वेरी अनथॉट ऑफ आउटकम कमिंग थ्रू, क्योंकि जिस हिसाब से इनका जो पहले 2 पिक्स आए, वन इज कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ मॉन्टी, जो सारे रिसेंट मैचेस से कम्प्लीटली जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर गेमरलीजन का बात करेंगे, ओवरपास उन्होंने सुना है, एंड उनका जो वहाँ पे विन रेट है इन द रिसेंट मैचेस, एक मैच सिर्फ आ रहा है, बाकी सारे मैचेस ऑन अ 7 विन स्ट्रीक आते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई फील लाइक द फर्स्ट 2 मैप्स आर गोइंग टू बी सुपर इंटेंस। एंड जब इनके प्लेयर्स के साथ भी इंटरव्यू हुआ था अभी स्टेज पे, इतने सारे मैचेस हो गए बट इन दोनों टीम्स को कभी एक दोनों के अगेंस्ट खेलने के लिए मौका नहीं मिला। सो आई थिंक जैसे आपने बोला, दे डोंट हैव अ लॉट टू गो ऑन, बट दे हैड अ चांस टू लुक एट व्हाट ईच अदर आर एबल टू डू, एंड उसके ऊपर आज के दिन में ये गेम खेला जाएगा। सो माई एक्सपेक्टेशन इज गोइंग टू बी दैट दे विल बी अमेजिंग मी। जी हाँ, बात करें गेमरलीजन के बारे में, इनका मेजर रन इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मेजर रन्स इन द हिस्ट्री। चैलेंज स्टेज में 0-2 डाउन थे, लेकिन जब एलिमिनेशन की बारी आई, जब उनका बैक, इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोबेबली व्हेन द बैक वाज अगेंस्ट द वॉल, दे शोड अप, 3-2 गए और फिर 3-1 गए अगले स्टेज में प्लेऑफ्स में आने के लिए। तो काफी बेहतरीन तरीके से शो अप किया था उन्होंने, जब जरूरत पड़ी थी परफॉर्म करने की, वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया था। एंड ऑफ कोर्स नाउ दे आर इन द क्वार्टर फाइनल्स। लेकिन ये मैच मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। बात करें वीटो के बारे में भी अगर हम, तो हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके का विन परसेंटेज खासतौर पे मॉन्टी का, if I'm not mistaken, और मिराज
बहुत मुश्किल होने वाला गेमर लीजन के लिए मैप नंबर 1. It's going to be a very tough one. I hope कुछ तैयारी करके आई है गेमर लीजन. उनका stats में जैसे देख पा रहा था, they've not at all had a great run. विन से ज़्यादा उनके पास लॉसेस है मिराज के ऊपर, सो आई फील लाइक ये फर्स्ट मैप मॉन्टे के लिए एक इजी पीसी रन हो सकता है. बट अगेन ऑन द अदर एंड, जिससे हम एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे, एनालिस्ट बोले थे कि दिस टीम्स आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आई थिंक मैं कहीं ना कहीं वो एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा गेमर लीजन को एटलीस्ट इन दिस फर्स्ट मैप. दूसरी मैप की तरफ जाएंगे वीटो में, दैट्स गोइंग टू बी ओवरपास, जहाँ पे हम बात कर रहे थे. इट्स वर्किंग आउट फॉर नन अदर देन गेमर लीजन. बट मॉन्टी के भी अच्छे स्टैट्स है ओवरपास पे. जी आप बिल्कुल सही कर ले. और फैंस देखिए विकेट लेके यहाँ पे बैठे हैं. फ्रेंच फैंस काफी इमोशनल, काफी कहते हैं काफी क्रिएटिव, जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से हर एक रीजन का अपना अपना एक तौर होता है, एक तरीका होता है, जिस तरीके से वो आते हैं, दिखाते हैं अपने कल्चर को. आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पे शूई किया जाता है. फ्रांस में आए तो विकेट के बिना अगर कोई आएगा अरीना के अंदर तो वो तो देखना मुश्किल है. I think everybody expected this, but of course कल वाइटैलिटी जब मैच हुई थी तब बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट देखने मिला था. पूरा स्टेडियम येलो बन चुका था. Beehive. And मैच खत्म होते वक्त तो it looked literally only vitality everywhere. हमारे होस्ट कास्टर्स को भी थोड़ा प्यार दिया जा रहा है यहाँ पे, who are on ground in Paris. Of course. Aww. I think लैंड का ये एक्सपीरियंस कहीं और मिलेगा ही नहीं हमें. यहाँ एक और बार I think now they're going to switch again. कल भी हमने देखा था. And देखना ये जरूर बनता है कि is the production team going to have fun with them today again? बट मैं बात करना चाहूंगा बोरस के बारे में. एक और नए प्रोडिजी सुपरस्टार राइफलर. उनकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो उनका एम, प्योर मैकेनिकल स्किल कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार है. तो मैं देखना चाहता हूँ आज किस तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं. बिकॉज देखिए जब आप स्टेज के ऊपर खेलते हो और आप ग्रुप स्टेज में खेलते हैं, ग्रुप स्टेज में आपके सामने ऑडियंस नहीं होती है, इतना ग्लैम नहीं होता है, स्टेज नहीं होती, इतनी लाइट्स नहीं होती आपके ऊपर. जो प्रेशर होता है स्टेज के ऊपर खेलने का, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते. सो यू नीड टू बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट प्रेशर. कल हमने साइफर को देखा था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. फर्स्ट मैप वर्टिगो जो वाइटैलिटी के खिलाफ खेल रहे थे, बखूबी प्रेशर एब्जॉर्ब किया, अच्छी तरीके से अपने आप को बैक किया, कॉन्फिडेंस जिताया, एंड ऑफ कोर्स स्किल था उसको भी दर्शाया. वही सेम चीज आज बोरोस को करनी पड़ेगी. एंड क्रैशनैल जो उनके 5th प्लेयर हैं, अगर यहाँ पे जीते हैं, सेमीफाइनल में जाते हैं, वहां पे भी जीते हैं, ही माइट एक्चुअली हैव अ शॉट फॉर हिज फर्स्ट एवर मेजर ट्रॉफी. 2014 में वर्चुअस प्रो कैटोविट्स में ये ट्रॉफी जीती थी. उसके बाद आज तक नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईलिंग मेजर भी जीती थी, आई एम नॉट मिस्टेकन, वर्चुअस प्रो. उसके बाद पहले पोलिश प्लेयर होंगे जो ट्रॉफी के ऊपर हाथ डाल पाएंगे. अभी भी जो सफर है ना मामा, इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्ग. अभी क्वार्टर फाइनल्स का ये मैच है, यहाँ पे अगर जीतेंगे देन दे हैव टू गो एंड प्ले सेमीफाइनल्स, जहाँ पे ऑलरेडी 2 टीम्स इंतजार करती हुई नजर आ रही है, हीरोइक एज वेल एज टीम वाइटैलिटी. तो इट विल बी अ टफ वन. यहाँ पे हमें एक हेड्स अप दिया गया, द रीजन व्हाई द मैच हैजंट स्टार्टेड येट. एक छोटा सा टेक इशू है स्टेज के ऊपर. आई बिलीव एक प्लेयर के हेडसेट के साथ इशू था एंड दूसरा एक प्लेयर के मॉनिटर के साथ इशू था. सो मॉनिटर रिप्लेस किया जा रहा है वहाँ पे. देखिए टेक्नोलॉजी हर जगह पे सेम ही होती है, सेम मॉनिटर्स होते हैं, यू कांट हेल्प इट. अगर किसी का मॉनिटर खराब हो जाता है या फिर किसी का हेडफोन खराब हो जाता है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स यू कैन डू अबाउट इट. बट एक चीज जरूर कहूंगा मैं यहाँ पे, सैम, नथिंग न्यू, राइट? एक्सपेक्टेड होता है लैंड इवेंट्स पे हमेशा. एंड मैं बोलना चाहूंगा ये जितना जल्दी ये टेक इशू होता है दैट मोर द बेटर. गेम के बीच में हो जाता है, गेम शुरू होने के बाद 1-2 राउंड के बाद, या गेम जब अंत होने वाला है, आप ऑलमोस्ट उस मैप को क्लोज आउट कर रहे हो, देन यू फेस अ टेक इशू. आई थिंक तब वो जो मोमेंटम बनता रहता है, दैट ऑल जस्ट ब्रेक्स थ्रू. बट अभी के लिए शुरू भी नहीं हुआ था. And I think having a technical issue is going to be good as of now for the players as well. Momentum build up नहीं हुआ होगा. Again, they can talk about it कि क्या अलग करना चाहिए, how to take away the map from Monte if you talk about GamerLegion's perspective. But I think अभी सारे tech issues clear हो चुके हैं. We are gearing up for the first map here
against Monte as well as GamerLegion underway. First round, ladies and gentlemen, देखेंगे Accor यहाँ पे इतना ज़्यादा aggression दिखा रहे, confidence Accor Arena के अंदर खेल रहे हो, what a one tap, Crashnal को वहाँ पे सीधा eliminate करेंगे high mid पे, लेकिन Accor पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। एक और fight, एक और kill, SDY को वहाँ पे take down करते हुए, लेकिन थोड़ा सा over extend किया, Water 2 और Boros ये shots नहीं miss करने वाले। 2-man advantage से man disadvantage पे आ चुका, और ईमा IM जो भी कहना चाहे आप उनको, बहुत ज्यादा डैमेज लिया है। 2v2 जरूर है, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है। 1 HP पे IM सर्वाइव कर रहे फिलहाल के लिए। Water 2 के पास अभी भी C4 है, but is a little bit stuck. दूसरी ओर से फाइट अभी भी लेते हुए नजर आ रहा है Zach. Can he make something happen? दूसरी ओर रोटेट ऑलरेडी करके अपने ड्यूअल बेड़ा के साथ साइड की तरफ आ चुके हैं Water 2 के विद अ प्लान। 1 HP पे बचे हुए, कमिंग इन फ्रॉम मेन, चेक करना पड़ेगा Water 2 के, पुट्स हिम डाउन। आखिरी खिलाड़ी आ रहे हैं कनेक्टर की तरफ से, कैन ही बी टेकन डाउन। एक खिलाड़ी सीटी की तरफ रहने वाला है, दूसरे डिफॉल्ट की तरफ, एंड इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन। ही पिक्स अप वन, अ क्विक ट्रेड फ्रॉम Water 2 के। Great and an interesting start. Oh my goodness, this is incredible stuff. दोनों तरफ से आप देख रहे हैं प्लेयर्स, मैं कह रहा था ये दोनों टीमें द कमिंग इन हॉट। खास तौर पर आप मॉन्टी की बात करें, जिस तरीके की शुरुआत करी थी उन्होंने, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए डाइस जरूर लगा था, लेकिन तुरंत जो किल्स निकालने की जरूरत थी Water 2 के, मैं बात कर रहा था इनके बारे में, इनके स्किल के बारे में, और इनकी जो हिस्ट्री थी लास्ट मैच में भी सिंपल के खिलाफ, कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटी के अंदर, और बेहतरीन तरीके से पहला पिस्टल राउंड खेला यहाँ पे। लेकिन मॉन्टे सीधा AK-47 उठाते हुए, देखिए 3 लोग अंडर की तरफ पुश कर चुके थे। आई एम नॉट टू श्योर इफ दे रेडी फॉर इट। क्विक ट्रेड्स कमिंग थ्रू, 2v3 सिचुएशन बन चुका है, दे कन्वर्टेड टू अ 1v3 कमिंग इन। आखिरी खिलाड़ी बचने वाले एक और, barely having any health, लैडर रूम में फंसे हुए, आइडिया लग चुका है, जंप एंड स्पॉटेड। Demq picks up the last one and Monte a quick second round. फर्स्ट राउंड में इट वेंट बैक एंड फोर्थ, बट सेकंड में इस बार मिड चार्ज किया गया, सारे प्लेयर्स को एक एक करके पॉजिटिव ट्रेड्स पे उठाते हुए Monte गेट द सेकंड। उनके पास वेपनरी काफी अच्छी थी, लेकिन बात करें GamerLegion के बारे में, रीड भी बहुत ज्यादा अच्छा था। 2 लोगों को अंडर पास में स्टैक किया था, एंड वहां पे प्लेयर्स आए जरूर थे, बस वो जो इनिशियल शॉट कनेक्ट करने की जरूरत थी वो नहीं कर पाए। लेकिन अब अच्छे वेपन्स, अच्छी यूटिलिटी दोनों लेते हुए, और क्रीग बहुत समय से ये नहीं देखी, बीच में बहुत बड़ा मेटा आ गया था क्रीग का, और इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड गन थी कि आप उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते थे, और अगर अभी भी ढंग से उसका इस्तेमाल करें आप, तो फिर तो बहुत डेडली वेपन साबित हो सकता है ये। क्रासनल देखेंगे क्या उसका फायदा उठाएंगे, पर अभी के लिए क्लोज टू अ 4v4 सिचुएशन, क्योंकि बोरोस का हेल्थ अभी सिर्फ 23 है, बट अगेन यू कैन नॉट काउंट एनी प्लेयर। हम देख रहे थे 1 HP के साथ ही वाज लुकिंग फॉर टू मेक सम मैजिक हैपन, और एक लिए अंडर का एज वेल एज हाई मिड का कंट्रोल रखते हुए IM और उनके साथी अंडर से एक एक कदम लेते हुए आ रहे बोरस। ही जस्ट माइट फॉल प्रे, जी हाँ, Sui picks him up। 4v4 अभी थोड़ा सोच समझ के खेल रहे थे, कैरिंग बैक, जो ऑलमोस्ट बी की तरफ अपना प्ले बना रहे थे विद C4, दे स्लोली हेडिंग टुवर्ड्स A। जी हाँ, काफी ज्यादा स्लो कर दिया यहाँ पे। उनको पता था ओवर कमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाई मिड पे ऐसी अभी भी इंतजार कर रहे, अगर उनको एक पिक मिल जाए तो शायद बहुत दिक्कत दे सकती है वो सीटी साइड को। लेकिन सूही अभी भी एम इन फाइट कर, Water 2 कियोस ये शॉट नहीं मिस करने वाले, एक्सपेक्ट किया SDY को उनके पीछे, एंड एलिमिनेट भी कर दिया ताकि Monte इतनी आराम से ये साइड का कंट्रोल ना ले पाए। लेकिन अब एम इन के अंदर बैक स्टेप आ चुका है, ये बहुत बड़ी दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन IM बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले। कियोस एक साथ उनके साथ पीक करेंगे, एंड ये देखिए GamerLegion कितनी ज्यादा खुश। पहला बाय राउंड, पहला राउंड, फर्स्ट राउंड वो जीत सकते थे जरूर, अच्छी ओपनिंग निकाली थी उन्होंने, इंटेंट के साथ खेले, तो लाइव अनबॉक्सिंग ये जरूर देखना चाहूंगा मैं। अगर यहाँ पे नाइफ अनबॉक्स हो जाती तो लेजेंडरी मोमेंट हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो, प्रोडक्शन, ऑडियंस, प्लेयर्स, एवरीवनस ऑन द सेम पेज, इतना ज्यादा प्यार करते हो इस गेम को कि हर एक छोटी छोटी चीज दिखाई जाती है, गेम को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि सिर्फ मैच को, ना कि सिर्फ प्लेयर्स को, और ये बेहतरीन चीज लगती है मुझे।
आई थिंक सबसे एक ऐसे कम्युनिटी हमें काउंटर स्ट्राइक में ही देखने के लिए मिलता है एंड आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग बिगर एंड बेटर। पर अभी के लिए देखिए GamerLegion पहला राउंड जरूर निकाला था, नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ सेकंड। डैमेज तो जरूर किया है मॉन्टी के खिलाड़ी को, बट कैन दे क्लोज इट इन देयर फेवर? अभी के लिए जो लग रहा है मॉन्टी, आई थिंक दे आर एक्चुअली कॉलिंग एन अर्ली सेव, आगे नहीं जाना चाहते, जस्ट गोइंग टू वेस्ट टाइम एंड वेट फॉर अ पुश। बहुत समय बचा हुआ है, सो आई थिंक GamerLegion शुड कंफर्टेबली गेट द सेकंड, बट मे बी आखिरी मूवमेंट पे कोई स्विच बनाने का इरादा बना रहे हैं। जी हाँ, looks like they want to try. Do have flash, molly, एक स्मोक जरूर नजर आ रहा है, कनेक्टर को चेक किया जा रहा है with the push coming in from Krasnal. साइड की तरफ एक खिलाड़ी जरूर रहने वाला है क्लोज टू बेंचेस एंड दूसरे मार्केट की तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए immediately on contact. It's all about timing. Isaac, he needs to call right. Sound सुन चुके हैं, पर पहले ड्यूल में हार जाता है, but quick trade coming in from IM. He's looking for the second, but he fails. HP बहुत कम है दोनों प्लेयर्स के पास, वॉर और क्रैशनल दोनों 24 और 15 HP पे सर्वाइव करते हैं। कियोस के पास एक ग्रेनेड इनका काम तमाम कर सकता है, लेकिन क्या ये रियलाइज करेंगे? क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिली? जी हाँ, इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन वायन पेनेट करेंगे पहला पिक, क्या दूसरा निकाल पाएंगे? जी हाँ, ट्रेड करने की कोशिश, थोड़ा सा ईगर हो गए वहां पे, और GamerLegion they will scoop it up. वो ये राउंड नहीं जाने देने वाले। एंड मॉन्टी की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं कहूँगा ईगर हो गए, ज्यादा इची हो गए, ठीक नहीं करते तो शायद बच पाते, लेकिन वॉर के ऊपर जो किल निकला था वो बहुत प्रिसाइज था, इतना आसान नहीं होता, बट एट द सेम टाइम वो ट्रेड लेने की काबिलियत वो नहीं थी, और उसके साथ साथ ज्यादा HP भी नहीं थी। लेकिन आप देख सकते हैं GamerLegion कितनी ज्यादा हाइप्ड अप है, कितनी ज्यादा खुश है फिलहाल। GamerLegion आई थिंक जिस हिसाब से खेल रहे, इट इज लुकिंग गुड फॉर देम। आई थिंक ये थोड़ा और आसान हो सकता है जो पिछला राउंड जहाँ पे अभी भी उन्होंने इक्वलाइज किया स्कोर को, इफ आई एम वाज एबल टू फाइंड अनदर, बट अभी के लिए इट इज गोइंग टू बी अ सेफ। एक जरूर वेपन जरूर क्रासनल की तरफ से नजर आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ हीरो। देखेंगे क्या उसका फायदा मिलेगा। जी नहीं, व्हाट अ पुश कमिंग इन थ्रू एप्स एंड बोरोस को आई एम निकालते हुए नजर आएंगे, इमीडिएटली टेकिंग डाउन अ कपल ऑफ द प्लेयर्स। नंबर्स घटा दिया जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स अगेन इट लुक्स लाइक GamerLegion मॉन्टी को हराने के लिए तैयारी करके आ चुके हैं। अगेन इट्स अर्ली, बट यहीं पे अगर कंपटीशन दिखा रहा है, इट कैन गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही, लेकिन फिलहाल के लिए डिफॉल्ट करते हुए इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए। पूरी की पूरी सीटी साइड, बी साइड पे भी स्मोक और नीड का इस्तेमाल, काफी यूटिलिटी डाली गई है। और ए पे देखिए, पैलेस के अंदर, ए मेन के अंदर फुटस्टेप अगर एक भी आता है तो उनके पास इंफॉर्मेशन जरूर मौजूद होगी। एक और खेल रहे हैं काफी नजदीक ए साइड पे, एंड टेररिस्ट एक पिक निकालने की कोशिश, क्रैश था, ओह सो क्लोज। IM ने स्पॉट जरूर कर लिया उन्होंने, क्रैशनल शायद पिक निकाल सकते थे, लेकिन सुई पिक करेंगे, डेम क्यू को वहां पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन क्रैशनल ट्रेड्स नहीं छोड़ेगी कोई भी टीम, फिर भी सीटी साइड के पास एक मैन एडवांटेज है। टी शॉट की तरफ एक हिट करने की कोशिश, यूटिलिटी बिल्कुल जगह ही नहीं है, नेस्टी को 1 or 2 टीम कर दिया वहां पे। GamerLegion keep it going in their favor. अभी जरूर चेहरे पे स्माइल्स नजर आ रहे हैं। ओके, अभी इंतजार करेंगे कौन जाएगा एयरपोर्ट। अभी के लिए ये पहला मैप है। 3-2 GamerLegion might have taken the lead for now, but finally एक फुल बाई के साथ मॉन्टे नजर आ रहा है। Quickly trying to take mid control, but high mid को deny किया जाएगा with mollies and smokes coming through. With दूसरी और under, और nice grenade, थोड़ा टाइम वेस्ट करवाया जाएगा एंड another molly। ये अंडर पुश को और थोड़ा स्लो डाउन करवा देंगे। नाइस प्ले कमिंग इन, नाइस रीड कमिंग इन फ्रॉम GamerLegion। बेहतरीन लीड। अब GamerLegion पूरी तैयारी करके हर एक बार उनको आउट प्ले किया गया यहाँ पे, लेकिन मॉन्टे मुझे लगता है थोड़ा सा डेस्परेट हो रहे फिलहाल, बिकॉज जिस तरह की वेपनरी उनके पास, 2 गली 3 AK, इतनी ज्यादा यूटिलिटी तक नहीं है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस राउंड में इंडिविजुअल पिक्स के ऊपर। और अगर पिक नहीं निकाल पाएंगे तो फिर ना उनके पास पैसा होने वाला अगले राउंड में, और एक बहुत बड़ा डेफिसिट बन जाएगा जिसको काउंटर करना प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है उनके लिए। लेकिन सुई बाल बचे वहां पे,
पगल से गोली निकली, लेकिन बोरस कोशिश करेंगे कनेक्टर के अंदर जाने के लिए। क्या वो पिक निकाल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल। अरे धीरे धीरे, लेकिन IM नहीं जाने देंगे उनको अंदर। गेमरलीजन एकदम कहते हैं ना कि गेम को कंट्रोल करके बैठी है, गेम की पेस को कंट्रोल करके बैठी है। एंड एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो, मॉलटॉव जो डाला गया था अंडर पास में, उसके बाद एक ग्रेनेड डाला गया अंडर विंडो। एरिया कट ऑफ करने के बाद उन्होंने ग्रेनेड मारी एक और बैकस्टैप करके, लेकिन कितना ज्यादा मैप कंट्रोल डिनाई कर रहे सामने वाली टीम को। ऊपर कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तक निकाले। नेशनल पिक जरूर निकाले, दे नीड मोर पिक्स, लेकिन जब तक सिटी साइड ट्रेड करती रहेगी मुझे नहीं लगता मॉन्टे इस तरीके से वो निकाल पाएंगे राउंड्स को। मॉन्टे ये राउंड में काफी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी, उनके पास यूटिलिटी नहीं थी मौजूद। उसके बिना यूटिलिटी आप एरियाज फ्लश आउट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है वो चीज। बहुत कम यूटिल बचे हुए थे। आई थिंक एक स्मोक एक मॉली था जिसको हमने देखा ट्राइंग टू काउंटर दी अंडर यूटिल, जिस हिसाब से डम किया गया फ्रॉम गेमरलीजन, उन्होंने अर्ली उसको इस्तेमाल कर दिया और उसके बाद कुछ बचा नहीं था। एंड आई थिंक ये अर्ली यूटिल जो गेमरलीजन की तरफ से आ रहा है, दैट इज जस्ट कमांडिंग मॉन्टेस फ्लो। उसके बाद मॉन्टी थोड़ा बैकफुट पे जा रही है एंड सेकंड थॉट्स वो नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से। बड़ा अभी के लिए अग्रेसिव जाते हुए कियोस, ही पिक्स अप वन, ही इज लुकिंग फॉर अनदर, डैमेज तो जरूर कर चुके हैं। ही गोस इनटू द सेकंड, मेक इट अ 3 फॉर हिम। वन और 2 के उनके सामने रहने वाले पैलेस से जंप करके आए, बट Sue is going to be there to put an end to Monte। एक और राउंड निकालते हुए नजर आएंगे गेमरलीजन। अर्ली 2 राउंड जो लिया गया था मॉन्टे की तरफ से, उसके बाद गेमरलीजन हैव नॉट लेट गो ऑफ द मोमेंटम एट ऑल। कियोस जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक किया, जो पहले से प्लेयर गिर रहे थे वो देखिए, मैं तो कहते हैं ना कि जब आपके सामने बहुत ज्यादा रोशनी आती है, चकाचौंध, इंग्लिश में फ्लैबरकास्टेड कहते हैं, वही चीज मुझे हुई। क्योंकि जिस तरीके का प्रिसिजन उन्होंने दिखाया MP9 के साथ, आसान नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स अभी भी कितना ज्यादा एग्रेशन। ओह, ऑलमोस्ट गेटिंग दैट पिक। काफी एग्रेसिव खेले गेमरलीजन यहाँ पे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है। यूटिल को काउंटर करके यहाँ पे फाइट लिया जा रहा है। डैम क्यू ही गेट्स द फर्स्ट ओपनिंग। अभी भी जंगल को कवर करना पड़ेगा एज वेल एज कनेक्टर, दोनों को स्मोक ऑफ किया जाएगा along with the flash coming through। बोरोस स्लोली ट्रेडिंग अप क्लोज, खिलाड़ी छुपे हुए हैं। Sui a free one for him, takes on Boros। DemQ सेकंड निकालेंगे बट Sui is looking unstoppable। क्रैशनल को निकालेंगे बट DemQ उनके पास तीसरा मिलता हुआ नजर आएगा। It falls back to a 3v3 situation। हेल्थ का अगर बात करेंगे, DemQ who's gotten 3 is not that great, but look at his flank। बहुत तेजी से जंगल से उन्होंने CT पुश किया, but IM reads it। What a read। C4 plant हो चुका है। Can SDY defend this? Oh nice। He sees the player propped up, but बहुत स्प्रे करके अपने लोकेशन बता दिया। And IM immediately white swings it and takes down SDY। जो कहते ना छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन ए मेन की तरफ, सीटी से जो फ्लैंक कर रहा था, एक फुटस्टेप की वजह से उन्होंने पीछे देखा, दोनों प्लेयर्स ने डबल पीक किया। काफी अच्छा डिसिप्लिन कहूंगा मैं गेमरलीजन की तरफ से, जिस तरीके की काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं वो फिलहाल काफी कॉन्फिडेंट होमवर्क करके आया अपना। मॉन्टे को बेहतरीन तरीके से किताब की तरह रीड कर रहे हैं वो। जब भी मौका मिल रहा है उसके ऊपर कैपिटलाइज करे, अपने आप को बैक करे, ऐसे नहीं कि डर डर के पीक करे, जब भी पीक करना है इंटेंट के साथ पीक कर रहे हैं। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है गेमरलीजन की। एंड लुक एट दिस, दे फोर्स्ड Monte to take a timeout, जिसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है that it is causing a little bit trouble for Monte। and दूसरी ओर उनके जो कोच थे गेमरलीजन, like you're on the right track boys। आपने देखा वो फिस्ट बम्प करते हुए नजर आए। we have forced them to a position जहाँ पे they have to rethink कि कैसे ट्रेड करे। अर्ली गेम को कंट्रोल जरूर ले चुके हैं एंड आई थिंक गेमरलीजन वो कॉन्फिडेंस बरकरार लेके चल रहा है अभी आगे। Another opening। फिलहाल एक अर्ली पिक निकालने की कोशिश, वॉरो आसान नहीं होना है और उतना ज्यादा। डिफॉल्ट इश सेटअप है, बी पे प्रेजेंस दिखा जरूर रहे, रोटेशन फोर्स करने की कोशिश, लेकिन ए पे बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है टेरेस साइड की। C4 लेके मिड पे जाएंगे, मैप कंट्रोल डिनाई कर रही है जो सीटी साइड। ऊपर से इतनी एक्टिव कोशिश भी नजर नहीं आ रही है मॉन्टे की कि वो मैप कंट्रोल है, रोटेशन मैनिपुलेट करे थोड़े। और बोरस देखते क्या ये पिक निकाल पाएंगे। यूटिलिटी इतनी ज्यादा है नहीं उनके पास, 2 स्मोक्स, 2 मॉल्टॉव और 2 फ्लैश बैंग, उसके साथ पिक निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है।
लेकिन ओ दैट वाज सो क्लोज. आई थिंक ईमा ने उनको स्पॉट कर लिया. नहीं, टाइमिंग हो गया बोरोस के साथ. अब बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है टेररिस्ट साइड को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालने में, बिकॉज देखिए सीटी साइड बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही. आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो, वो अगर पीक करे इंटेंट के साथ पीक करे, लेकिन अगर वो होल्ड करना चाहते तो एक गोली, एक फुटस्टेप, एक नेड, एक क्लिप बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे वो. अभी देखिए ड्रॉप किया गया अपने टीममेट के लिए यूटिल विदाउट मेकिंग एनी साउंड. ट्रक को क्लियर किया जाएगा विद द मॉली कमिंग थ्रू. बी की तरफ इंटेंशन जरूर किया जा रहा है विद द शॉट पुश कमिंग थ्रू. और हो गया क्विक वन विद हिज AWP. डैम Apeks 1 बेंच की तरफ अभी भी खिला रही है. शुई ट्राइंग टू मेक एंड होल्ड ऑफ बी फॉर नाउ. एक पिक जरूर निकाल चुके हैं उनकी तरफ. स्पैम आ रहा है. बोरस इन द मीन टाइम इज क्लीनिंग अप द स्क्वाड. एंड जी हाँ, GamerLegion फाइनली लूज कंट्रोल हियर ऑन मिराज एंड तीसरा राउंड सिक्योर करते हुए नजर आएंगे. वेरी क्लिनिकली Monte गेट इट. अगर उनके माताजी देख रहे जरूर आप चैट में हाई बोल दीजिए. I mean, I think all the parents, right? I'm sure my mom, every time मैं जब लाइव जाता हूँ तो मेरी मॉम भी पूछती है हमेशा कि लिंक भेज दीजिए. My dad is sitting outside, वो बाहर से मैच देख रही है ये वाली. एंड काउंटर स्ट्राइक में हमेशा कहता हूँ इट्स अ वेरी एक्सेसिबल ई स्पोर्ट. कोई भी चाहे वो खेलता हो ना खेलता हो, समझने में एज अ व्यूअर बहुत आसान गेम है ये. अगर आपको किल मिलता है अच्छी बात है, अगर आप मरते हैं तो बहुत बुरी बात है. अगर आप टेररिस्ट है और बॉम्ब प्लांट करते हो और एक्सप्लोड होता है तो अच्छी बात है. काउंटर टेररिस्ट है तो बॉम्ब डिफ्यूज करना अच्छी बात है. वेरी सिंपल. जो इंट्रिकेसीज होती है वो बाद में आप जाके आपको समझ में आती है जब आप गेम खेलना चालू करते हैं. लेकिन एज एन ऑडियंस बेहतरीन गेम है ये समझने के लिए और देखने के लिए, चाहे आप गेम खेले या ना खेले. Yep. Sweet, simple, and objectives are known. This is going to be a 10th round. अभी के लिए क्या कुछ अलग कर पाएंगे. मिड का कंट्रोल लिया जाए from under as well as high mid. स्मोक ऑफ करने की वजह से नो विजन थ्रू कनेक्टर. इस बार जो कंट्रोल हम अगर बात करेंगे, 3 खिलाड़ी ए के नजदीक जरूर नजर आ रहे हैं. बी को होल्ड करते हुए 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. एप्स को डिनाई कर जाएंगे एंड उन खिलाड़ी को बचना पड़ेगा. एक्चुअली स्लोली ट्राइंग टू ट्रेड एंड पुश अप. बोरोस इन द मीन टाइम आगे आना चाहते हैं. ही वांट्स टू टेक अप कनेक्टर कंट्रोल, बट उनके सामने सुई रहने वाला है. ये इंटरैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. बोरोस स्टिल वेटिंग इट आउट. टाइमिंग पे बट स्प्रे डाउन एंड गन डाउन एप्स की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से आइजैक हैज बीन टेकन डाउन. नंबर्स का डिसएडवांटेज थोड़ा फेस जरूर करने वाले GamerLegion. ऑन द अदर एंड लुक एट बोरोस स्टिल नॉट लीविंग कनेक्टर एट ऑल. वो ये इरादा बना रहे या सोच रहे कि कोई ना कोई खिलाड़ी चेक करने के लिए एटलीस्ट स्विंग करेंगे एंड सुई माइट जस्ट फॉल प्रे टू इट. बट दूसरी ओर IM ईमा कैन ही फाइंड एनीथिंग. क्या कुछ ट्रेड कर पाएंगे? अभी भी उस एप्स को गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं. जी हाँ, देखिए जब इमिन पे पिक मिला है कनेक्टर पे ओह नो, एक सेकंड लगा. जब हिलेंगे तो बोरोस शायद वो पिक ना निकाल पाए, लेकिन टाइम क्यू को ये पिक जरूर निकालना पड़ेगा. जी नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा. ईमा वहां पे उनको पूरी तरीके से डिनाई करते हुए बोरोस 2 प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन टू रन ट्रेड निकल जाएगा. यानी क्लॉथ प्लेयर यहाँ पे प्लांट करने की कोशिश, लेकिन फुल ऑन स्प्रे डन. वोरो किल निकालेंगे. 5 सेकंड बाकी है. प्लांट नहीं हो, उसमें क्लोज. आई डोंट थिंक प्लांट हो पाएगा. ओह सो क्लोज. वोरो क्या ये किल निकालेंगे? क्या ये राउंड निकाल पाएंगे अपनी टीम के लिए? एचपी उतनी ज्यादा है नहीं उनके पास. सामने वाले प्लेयर को इन्फॉर्मेशन दे दी जा चुकी है, लेकिन वोरो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं. स्मोक है नहीं उनके पास. स्टिक नहीं कर रहे, स्टिक नहीं कर रहे, वो स्टिक नहीं कर. वेट, he did? He stuck it. Oh, I remember. स्कोप खोल के उन्होंने रिफ्यूज किया. Oh my goodness. He actually stuck it. मैं इतना ज्यादा डायल्ड इन था इस 1 versus 1 में कि मैं भूल गया कि जो ब्लास्ट का हमारा हड होता है वो टॉप लेफ्ट पे आता है डिफ्यूज करने का, ना कि स्क्रीन के सामने जिस तरीके से पहले आता था. Incredible stuff. Incredible stuff. He's like, मिला मुझे डिफ्यूज करने को, मैंने कर दिया. GamerLegion making sure ज्यादा मौका ना खोए. Crasnal is going to be the first play. First blood निकल चुका है, but look at this. They're trying to take control. इसको रीड किया जाएगा. The foot was seen, the boot was seen, but I think ये सिर्फ एक बेट जिससे काम आएगा. Sui picks up one, but पैलेस से पुश आएगा and तुरंत SDY ट्रेड करते हुए नजर आएंगे. But this is going to be enough क्योंकि ईमा
वॉरो 2K को निकाल देंगे, जंगल का कंट्रोल रहने वाला है, कनेक्टर से पुश कर रहे बोरोस, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग्स। जी हाँ, क्रॉस कर लेंगे बट कैन ही गेट एनीथिंग? SDY एंड बोरोस दोनों मिलके दे पिक अप 2 फॉर देमसेल्व्स। AWP पर शॉट मिस कर देंगे। नाउ इट्स ऑल अप टू आइजैक इन अ 1v2 सिचुएशन। ओह, he might just be able to catch the player. रिकवर करने के लिए आ रहे हैं, बहुत तेजी से आइजैक भी भाग रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, एक दूसरे को देख लेंगे एंड SDY gets it. I think थोड़ा हैपेज़ाड हो गए गेमर लीजन के खिलाड़ी just to find those players who were inside. And again, proper crossfires नहीं थे, so they were trying to save each other after getting an immediate call. Pick कर रहे थे, shot miss कर रहे थे, जिसकी वजह से player push up करके immediately वो kill निकाल रहे थे। Monte slowly but steadily एक राउंड वापसी करती हुई नजर आ रही है। जय के राउंड में वापसी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन मुझे एक दिक्कत है अभी मॉन्टे जिस तरीके से अप्रोच कर रही है, इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच है उनको पिक। ऑब्वियसली अगर आप टेरेस साइड पे खेलो तो आपको पिक निकालनी चाहिए। ओह, टुक अ स्वीट टाइम, बहुत ज्यादा समय लिया उन्होंने, आराम से पिक निकाला। और ये चीज अब कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं वो देखना जरूर बनता है, लेकिन कन्वर्जन रेट मेरे हिसाब से इनका काफी ज्यादा अच्छा था। बोरस देखिए बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे कि वो ऊपर चढ़ चुके, इसलिए ज्यादा गोली चला रहे थे। काफी स्मार्ट चीज है, लेकिन एचपी उनके पास बहुत कम है। अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ईमा वो शॉट कनेक्ट कर लेंगे, बॉडी शॉट भी उनको शायद टेक डाउन कर लेगा। सुई, ओह माय गुडनेस, गेट्स वन। लेकिन वॉरो बहुत ही तेजी से ट्रेड निकाल दिया इन्होंने। सो मैन एडवांटेज खेल रहे फिलहाल के लिए। आई थिंक मॉन्टे के पास एक और राउंड आ सकता है। नॉट ग्रेट वेपन, स्मोक डिसपियर होने पे केयर कोई गलती करके ओवर एक्सटेंड करेगा। आई एम इज गोइंग टू पनिश, ही एक्चुअली डबल्स। C4 गिर चुका है शॉट पे, इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन। ओह वेट, SDY he picks up a double of his own. C4 रिकवर करने का चांस है, बट लुक एट रीमा अगेन इन अ डिफरेंट एंगल, वेट कर रहे हैं। He's done the damage, but can he pick up the kill? रिकवर कर लेंगे, दोनों डबल स्विंग कर रहे हैं। He's good for only one. तुरंत ट्रेड करते हुए देखिए, यही होता है एडवांटेज जब आप नंबर्स अपने पास रखते हुए चले जाते हैं। एंड आई थिंक थोड़ा ओवर एक्सटेंशन हो गया गेमर लीजन की तरफ से आफ्टर ईमा गॉट 2। वहीं पे दे हैड टू जस्ट स्कैटर अराउंड लिटिल बिट। आई थिंक स्मोक था, दे ट्राई एंड पुश इट अप एंड टेक अ फ्री किल, बट SDY actually made a double over there. ईमान ने जिस तरीके से खेला वहां पे, शानदार प्रदर्शन अपने डीगल का और अपने स्किल्स का। एस निकाल सकते थे वहां पे, 4K किया वैसे उन्होंने, 4 हेडशॉट्स डीगल के साथ। मैं इसलिए क्या मानता हूं कि डीगल इतना ज्यादा पोटेंट हथियार है। ओह माय गुडनेस, बोरोस इतनी जल्दी शॉट पहुंच चुके थे कि उनको मौका नहीं मिला वहां पे, लेकिन आइजैक स्मोक के पीछे इंतजार कर रहे हैं। क्या SDY को पता है वहां पे बैठे, जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पता हो ना हो, ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रही सीटी साइड। और बोरोस देखिए बिल्कुल डोमिनेट करना चाहते सामने वाली टीम को, लेकिन वॉरो भी साथ में बैकअप देने के लिए बैठे थे। एंड सुई टेक डाउन करेंगे वहां पे। एंड देखिए पहले हाफ की बहुत नजदीक आ रहे हैं ऑलरेडी स्कोर लाइन, जो इतना पीछे चल रहा था मॉन्टे की तरफ से, इट्स बैक एट 7-6। एक राउंड दूर रहने वाली है मॉन्टे। केस ही नहीं ओपन हुआ सैडली। ओह अनफॉर्चुनेट। ओह नो, नहीं, एक नाइफ अनबॉक्स करने की जरूरत यहाँ पे। GamerLegion coming in with a timeout. जो नए व्यूअर्स जिनको पता नहीं है कि टाइटन हॉलो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सो होलोग्राफिक या होलोग्राम, ये स्टिकर्स होते हैं जो हम 3D स्टिकर्स भी बोलते हैं। और कोई भी पुरानी टीमें हैं जैसे आई पावर हो गई, टाइटन हो गई, LDLC हो गई, पुरानी पावर हाउस टीम्स जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनके स्टिकर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और दैट्स द जोक ओवर देयर कि उनको जिस तरीके से जो लिखा था क्या बेचना पड़ा वो स्टिकर के लिए, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं वो। मतलब के लिए राउंड महंगा पड़ रहा था, बट ईमा पिक्स इट बैक इनटू कंट्रोल।
Krasnal making sure ईमा को वो put down करे and then to follow it up, Isaac the last player surviving, उनको भी take down करेंगे and that is an equalizer coming in from Monte. जो भी यहाँ पे time out लिया गया था coming in from GamerLegion, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसका. A quick round coming in, nice setup coming through. मेन का पुश एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक पिक निकाला, ट्रेड करने के लिए दूसरे खिलाड़ी आए, उनको भी निकाला एंड आई थिंक दैट्स वेयर इट कंप्लीटली केम इन कंट्रोल. एंड वो देखिए अंडर पैलेस को क्लियर करने के लिए मॉली भी आया था, उस खिलाड़ी को वहां से हटा दिया. दैट वाज नन अदर देन ईमा, बट स्टिल ईमा वाज गुड फॉर 2 बट कुडंट डू अ लॉट. ओ ग्रेनेड पहुंची नहीं दूसरी उनकी, लेकिन वॉर 2 के उनको जरूरत नहीं है लाइन ऑफ साइट की. स्पैम करके वहां पे बॉल बैंग करके मार दिया जाएगा प्लेयर को. मॉन्टी जिस तरीके से ब्रूट फोर्स कर रही है अपने आप को सामने वाली टीम के ऊपर, फोर्सिंग द वुल अपॉन देम, इट्स इनक्रेडिबल. कियोस ने भी काफी डैमेज दिया है, लेकिन अब अपनी साइड पे इतनी प्रेजेंस दिखाने के बाद रोटेशन फिर भी फोर्स नहीं कर पाया. कियोस MP9 के साथ हैज बीन डेडली, लेकिन बोरोस बी पे किल जरूर निकालेंगे. अब रोटेशन फोर्स कर चुके हैं, लेकिन क्या वो पीछे हटेंगे या फिर बी पे कमिट करना चाहते हैं? क्योंकि एक किल तो ऑलरेडी उनको मिल चुका है, उनको आइडिया जरूर है अगर यहाँ पे प्लेयर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक मे भी 2 प्लेयर एक मार्केट की तरफ होंगे, लेकिन बैक साइड आराम से क्लियर करना पड़ेगा. पूरी साइड क्लियर करने के बाद ही वो प्लांट कर पाएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता. बोरोस वो शॉट मिस नहीं करेंगे, कोशिश करी उन्होंने फाइट लेने की, लेकिन क्या बोरोस ओवर कमिट करे? जी नहीं. क्रैशनल पीछे से बैकअप देंगे. इकलौते प्लेयर यहाँ पे सुई. आखिरी राउंड है, कमिट करना पड़ेगा. इंतजार करे कि अंदर कोई पुश करे, गलती करे. कैश रजिस्टर के पीछे बोरोस पूरा चेक करेंगे. जी हाँ. बेहतरीन कमबैक मैं कहूंगा मॉन्टे की तरफ से. जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, GamerLegion बहुत अच्छी तरीके से रीड कर रहे थे, एग्रेसिव थे, कॉन्फिडेंट थे, लेकिन समहाउ मॉन्टे वो पिक्स निकाल पा रहे. और ईमा ये देखिए अपनी टीम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इट्स नॉट टर्निंग आउट टू बी इनफ. आई थिंक GamerLegion का जो प्ले हमें आफ्टर द 2 राउंड देखने के लिए मौका मिला, जैसे आपने बोला अग्रेशन बहुत ज़्यादा था. उसके बाद GamerLegion ने टाइम आउट जब लिया था मॉन्टे ने, दे स्टार्टेड टर्निंग अराउंड, दे स्टार्टेड ट्राइंग न्यू थिंग्स. थोड़ा स्लो डाउन किया, यूटिल सेव करते हुए नजर आ रहे थे. जब पुश आ रहा था तब डंप डाउन करने का नजर आ रहा था. एंड आई थिंक तभी जाके द प्ले इमीडिएटली बिकेम हैपेजार्ड. कॉल्स बहुत फास्ट थे एंड आप देख रहे थे मॉन्टे भी बहुत तेजी से ब्रूट फोर्स करके उस वक्त से वो मोमेंटम जो बनने वाला था GamerLegion का, जो स्ट्रीक बन चुका था, उसको तोड़ना चाहते थे एंड इट इवेंचुअली गिव वे फॉर देम. बट उससे पहले मॉन्टे वर द स्लो वन. स्लोली स्टेडीली वो आगे आ रहे थे, यूटिल डंप डाउन किया जा रहा था एंड GamerLegion उसका फायदा उठा रहे थे, अंडरस्टैंडिंग द पोजीशनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग कि क्या अलग कर सकती है मॉन्टे. एंड आई थिंक मॉन्टे रेड इट रियली वेल आफ्टर द टाइम आउट. जिस हिसाब से जिस तेजी से वो आए, और यहाँ पे एक और राउंड ले सकते थे. थोड़ा यही बोलते ना, लाइक अग्रेसिव बन गए SDY, थिंकिंग कि दोनों साथ में खेल रहे थे, एक बूस्ट हो चुके थे, दूसरे उनके साथ ही कहीं ना कहीं स्प्रे डाउन में पकड़े जा सकते हैं. इट डिडंट वर्क आउट. बट देन आफ्टर रीचिंग 7, वहां से मॉन्टे ने डिसाइड किया कि अगर वो पुश करेंगे कहीं भी, दे पुश टुगेदर, ऑलवेज गेट पॉजिटिव ट्रेड्स. एंड आई थिंक वो पॉजिटिव ट्रेड की वजह से ज्यादा से ज्यादा राउंड उन्होंने जीता, नंबर्स को क्लोज आउट किया एंड लीड वापस लेती हुई नजर आई GamerLegion से. जी हाँ, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मॉन्टे को. इवन दो शुरुआत में लगा कि उनका जो प्ले स्टाइल है उनके लिए काम नहीं कर रहा है, कमिट किया एंड इवेंचुअली जो राउंड्स हार रहे थे, छोटी छोटी गलतियों की वजह से राउंड हार रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने काम किया एंड दे मेड श्योर कि उस तरीके से राउंड्स ना हारे. लेकिन आप देखिए स्टेडियम ऑलमोस्ट जैम पैक्ड. जो फैंडम है काउंटर स्ट्राइक का, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते. आई थिंक कि प्लेयर बिल्कुल मेरे जैसे, कोई भी हॉट बेवरेज पसंद है SDY को, आई एम अज्यूमिंग, जिस तरीके से वो हाथ में लेके बैठे हैं. इवन इफ आई एम प्लेइंग, मैं जब खेल रहा हूँ तो मैं कास्ट भी कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई गर्म चीज चाहिए होती है. तो अभी मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उतना कॉफी पीऊंगा तो फिर इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ. बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं. और ये देखिए डिसिप्लिन, एक चीज आप देखिए, कोई भी बेवरेज होती है वो टेबल के ऊपर नहीं रखते, टेबल के नीचे ही रखते हैं हमेशा, ताकि गिर भी जाए अगर हाथ लग के तो टेबल के ऊपर ना गिरे. दिस इज द ट्रॉफी जिसके लिए हर एक टीम लड़ रही है एंड ये आखिरी मेजर का ट्रॉफी रहने वाला है. इसके बाद ना कोई नई ट्रॉफी रहेगा, ना कोई नया स्टोरी लाइन बनेगा, सब बनेगा सिर्फ CS2 के ऊपर.
एंड दैट इज द रीजन सारे जो टीम्स यहाँ पे नजर आ रही है, दे माइट बी डिफरेंट, दे माइट बी न्यू, दे माइट हैव अ लॉट पैकिंग इन देम, एंड सारे बड़े बड़े टीम को टेक डाउन करके आई है। ये जो शॉट था, अब इमेजिन करिए, कैमरा वर्क, क्रॉस बेहतरीन कैमरा वर्क। He knew, I think जब तक वो क्रॉस किया ना, he kind of understood. एक चीज की मैं हमेशा दाद दूंगा, प्रोडक्शन वैल्यू जिस तरीके से ब्लास्ट लेके आती है, हर एक एंगल, एक ऐसा एक्शन का पीस नहीं होता जो अनकवर्ड हो जाता है। लेकिन गेमरलीजन अब टेरिस साइड के ऊपर शुरुआत करेंगे, देखेंगे क्या गुल खिला पाते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोड करेंगे, एक स्मोक अवेलेबल उनके पास और एक फ्लैश, तो बहुत मुश्किल होगा डिफेंस तोड़ना, अनलेस ऑफ कोर्स वो पिक्स निकाल पाए। लेकिन बोरोस रुकने का नाम नहीं लेने वाले, उनको सीधा जाके पिक करना है। एंड हीमा P250 उस रेंज से हेडशॉट मारते हुए, इमीडिएटली उसको निकालना चाहता है, सी पुट्स हिम डाउन। अभी के लिए नेस्ट को चढ़ते हुए खिलाड़ी आ रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी अनदर हेडशॉट कमिंग इन। सी कियोस क्लींस वॉरो 2 के आखिरी खिलाड़ी क्रासनल ऑलरेडी डैमेज ले चुके, सी इज नॉट इवन लेटिंग हिम अप क्लोज। सी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज अब हो चुके हैं, बट क्रासनल को पता है यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, ही हैज टू टेक द साइड ऑन फाइट। इज़ैक को निकाल जरूर देंगे, C4 वहाँ पे प्लांट हो रहा है, प्लांट हो चुका है माय बैड, एंड आई थिंक अभी के लिए तो बहुत मुश्किल रहने वाला है। किट है उनके पास, बस जस्ट हेल्ड इट। अंदर बनी हॉप करने की कोशिश, लेकिन नहीं जा पाए, मिस कर दिया बनी हॉप। काफी अच्छी कोशिश थी बनी हॉप। देखिए, अगर आपकी मूवमेंट हो, अगर आप कंसिस्टेंटली कर पाए तो फिर आप अंदर जा सकते हैं, वो किल निकाल सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होता है। लेकिन इमोशन देखिए आप, कियोस के इमोशंस हर एक राउंड पे चिल्ला रहे हैं, हर एक राउंड पे उनके इमोशन आपको नजर आ रहे हैं, और ये बेहतरीन पैशन का एक डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। पर अब देखना मैं चाहता हूँ वॉरो 2 के स्काउट के साथ क्या करते हैं, क्या वो निकाल पाएंगे किल। इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, बहुत ज्यादा कमिट किया उन्होंने इस राउंड के ऊपर, फोर्स किया है, इको नहीं किया। एकेस गलील्स वापस, इट्स अ वेरी सिमिलर बाय जो चीज आपने देखी थी, आई बिलीव मॉन्टे ने किया था लास्ट राउंड, सॉरी लास्ट हाफ, सिमिलर चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है। Connector smoke from both ends, नेस्ट को स्मोक ऑफ किया गया, एंड स्लोली बट स्टेडली गेमरलीजन जो है कनेक्टर का कंट्रोल लेना चाहती है, एंड आई थिंक इनकी इंटेंशन एक ही तरफ नजर आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग दैट दे फाइंड, द इनिशियल फ्रैग। अभी के लिए वो फ्रैग देना नहीं चाहते। ईमा विद स्काउट, ही डज कनेक्ट वन, बट ज्यादा कुछ किल नहीं निकाल पाए, सो ही इज जस्ट गोइंग टू बी सर्वाइविंग विद 30, बट देयर 4 पीपल स्टैक्ड दैट कनेक्टर, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। एज मिलेगा ईमा को एक पिक जंगल की तरफ, बट वोरो 2 के ही फाइनली क्लोजेस वन ऑन नन अदर देन ईमा। कियोस was smart, MQ को जरूर टेक डाउन करेंगे, तुरंत बी की तरफ पुश आ रहा है, दैट रोटेशन इज क्विक। अभी अकेले खिलाड़ी रहने वाला है क्रासनल, कैन ही मेक एनीथिंग हैपन? इनिशियल शॉट उन्होंने डिश डाउन किया है, यस ही हैज मेड द डैमेज, मेक इट अ क्लोजर एज वेल। आइजैक को डाउन कर चुके हैं, इज लुकिंग फॉर द सेकंड एज ही स्विंग्स टुवर्ड्स Accor, बट वो अपने गलील के साथ साइड को कंट्रोल में जरूर ले लेंगे, वो अभी भी चेक करना पड़ेगा उनको, बट विद दैट प्लेयर गोइंग डाउन इट शुड बी अ इजी प्लान कमिंग थ्रू। बट दूसरी और आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए हैं, SDY is coming with a backstab. जी हाँ, बैकस्टैब के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ पे कमिट तो करना पड़ेगा उनको, MP9 खरीदी है, आई थिंक इट्स डूएबल। अब कियोस की HP देखिए, सीयू की HP देखिए, इन्फॉर्मेशन जरूर उनको दी होगी, उनको 2-3 शॉट पड़े हैं, तो एक अंदाजा आ जाता है आपके पास, आपकी टीम में जब आपको बता देगी कितनी HP उनके पास। लेकिन अच्छी तरीके से लॉकडाउन किया साइड को यहाँ पे SDY। लॉन्ग रेंज में MP9 थोड़ी मुश्किल होती है, बट एक हेडशॉट कनेक्ट करने की जरूरत। एग्जिट फ्रैग्स के लिए जाना चाहते हैं मेरे हिसाब से, $600 मिलते हैं जब भी आप MP9 से या कोई भी SMG से किल निकालते हैं तो, और शॉटगन से आपको $900 मिलते हैं, नाइफ के आपको $1500 मिलते हैं। यहाँ पे निंजा करने की कोशिश, Wait! They have no idea! So close. ये निकल सकता था राउंड वैसे। थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन, थोड़ा सा, लेकिन वो निंजा हो सकता था वहां पे। I mean, good communication, understanding. पिछले बार भी वोरो 2 के विद वॉल बैंक, इस बार स्काउट के साथ वो कमाल करके दिखा दिया है। गुड निंजा ट्राई कमिंग इन, बहुत कम टाइम बचा हुआ था, he tried his best.
अभी के लिए GamerLegion लीड अपने पास ही रख के चलेंगे, वरना वहाँ पे जो लीड है मोंटी के पास आ सकता था। एंड मे बी दे कुड हैव हैड वेपन्स। अभी के लिए वेपन सिर्फ रहने वाले GamerLegion की तरफ से। वी आर गोइंग टू बी सीइंग अ सेव। पैलेस की तरफ से एक पुश आएगा, दूसरी ओर ट्रिपल की तरफ से भी कंट्रोल लिया गया, बट बोरस इज गुड। ही टेक्स डाउन ईमा एंड ही मेक्स इट अ डबल। उसके बाद जाके एक और पनिशेस बोरो, बट अभी भी 3v3 सिचुएशन है। टिकट बूथ को क्लियर करना पड़ेगा। वॉल बैंक करने का ट्राई कर रहे हैं, हैज नो आइडिया। जंगल की तरफ एक खिलाड़ी पूरे छुपे हुए, इज राइट नेक्स्ट टू द वॉल स्मज्ड। वो मेक इट अनदर। सीटी की तरफ से 2 खिलाड़ी रहने वाले। दे हैव द राइट आइडिया कि पुश आएगा ए की तरफ। जंगल के खिलाड़ी पहले पीक करते हैं, वोरो 2 के गोज डाउन अलोंग विद SDY। आखिरी खिलाड़ी टिकट की तरफ है, सीटी से बाहर आते हुए। ही सीज वन, बट एक और गुड ऑन द ट्रेड, क्विकली टेकिंग डाउन क्रासनल। Another one for GamerLegion. शॉट्स देखिए बोरोस के, बेहतरीन शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट किए, और ये डीगल हेडशॉट इतने सैटिस्फाइंग होते हैं सुनने में। एक ग्लॉक का बिना हेलमेट का हेडशॉट और एक डीगल का हेडशॉट, ये 2 वेपन्स बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग लगते हैं सुनने में मुझे, कम से कम। बट अब जो बिग ग्रीन गन कह रहे हैं हम, वो बाहर आ चुकी है। एक और ऑप करने वाले हैं। सीटी साइड पे एक भी ऑप नहीं, लेकिन यूटिलिटी काफी अच्छी है, तो shouldn't be a problem. Oh! What? Boros, how in the world do you connect that shot? मैंने सोचा था वो एक फ्री फ्रैग है, बट नॉट द केस। ईमा ऑन द अदर एंड पुश अप कर चुके हैं। कनेक्टर के बाहर खिलाड़ी है, बट ही इज क्रॉसिंग ओवर। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। दे क्रॉस ओवर ईच अदर। सेफ रिट्रीट जरूर हो जाएगा उस खिलाड़ी का, बट पैलेस की थ्रू पुश आ रहा है। बट लुक एट द प्लेयर होल्डिंग। थोड़ा और अगर कियोस पिक करते, इट वुड हैव एन इंस्टेंट हेडशॉट कमिंग थ्रू। बट अभी के लिए वोरो 2 के, he finds Kios and उनको जरूर मार गिरा देंगे। and now it becomes a 3v4 3v5 situation, पर अभी भी 3v3 बहुत जल्दी हो सकता है। बोरोस as well as वोरो 2 के not looking that healthy. वहां पे ओपनिंग निकालने की कोशिश, जरूरत है उनको। 2 प्लेयर्स बहुत कम एचपी पे सर्वाइव कर रहे हैं मॉन्टे के लिए, बोरोस और वोरो, लेकिन ये 2 प्लेयर्स की जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा प्रेशर बना सकते हैं सामने वाली टीम के ऊपर। फ्लैश का इंतजार आई बिलीव, जी हाँ, लेकिन ईमा को फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। थैंक ओह माय गुडनेस, पैलेस के अंदर बैठे थे, अब ईमा को पिक्स निकालने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा डेस्परेशन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉन्टी यहाँ पे राउंड निकालेंगे अपने आप के लिए। एंड फोकस देखिए ना, उनको पता है द जॉब्स नॉट डन येट, ज्यादा सेलिब्रेट करके मतलब नहीं है, एंड बस फोकस करके बैठे वहां पे। एक राउंड करके पहला मैप हम क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बोरस ने एक किल निकाला, बेहतरीन। अभी के लिए आई एम स्टिल गोइंग टू बी सरप्राइज्ड फ्रॉम नन अदर देन GamerLegion। उनका जो स्टैट्स सारे रहे हैं अभी भी रीसेंट मैचेस के भी, it has not been great on Mirage, but अभी जिस टीम का जो स्टैट्स है, कंप्लीट डोमिनेशन है मिराज के ऊपर। उनको इतना काउंटर किया जा रहा है, लीड उनको अभी तक दिया नहीं गया है। GamerLegion are putting up a great show against Monte on their first matchup itself, in the first map. GamerLegion इस बार बी का इशारा बनाते हुए इस बार सेव जरूर कर रहे हैं, so it should be a very quick fast push coming through. एप्स की तरफ से कंट्रोल लिया गया, फ्लैश की तरफ से डाउन जरूर आएंगे बाहर, but SDY just gunning everybody down. फ्री फॉल करते हुए नजर आए, फ्री किल्स मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे SDY को। Sui, he is able to take one, but 1 or 2 के आएंगे, and SDY with a closer. Bring double digits for Monte as well. 10-10 डबल डिजिट्स। अभी भी मैं मानता हूं किसी का भी गेम हो सकता है ये। एक और के पास ऑप मौजूद, सुई यूटिलिटी उठाएंगे। सीटी साइड पे वोरो के पास ऑप, हमने देखा है किस तरीके से कितने ज्यादा इफेक्टिव है वोरो। ऑप, स्काउट, हर एक चीज, हर एक वेपन लेके, एंड पूरे सर्वर पे ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो अपने शॉट्स हिट नहीं कर रहा है फिलहाल। पर एक और को पूछ दिया जाए, ओह सो क्लोज, अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वॉरो को देखिए कितना ज्यादा कॉकी, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्या उनको पिक मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल। या स्पॉट कर चुके हैं उनको, वहां पे डबल स्कोप किया है, डबल पीक करने की कोशिश है, ऊपर कमिट कर चुके हैं ये, लेकिन नहीं। जैसी तारीफ करी मैंने उनकी कि वो शॉट्स हिट कर रहे हैं, मिस करेंगे शॉट्स को, एंड उनको फ्लश आउट कर दिया जाएगा मिड बॉक्सेस के पीछे। यूटिल डंप करना पड़ा टू रिट्रीट सेफली। मिड कंट्रोल वापस दे देंगे,
बट अभी के लिए GamerLegion वहां पे जाना नहीं चाहते. ओह, Boros actually trying to play on contact with Woro. एंटी फ्लैश खेल रहे वो. एंटी फ्लैश खेल रहे, बहुत जरूरी. अगर वो मिड पे पिक करने की कोशिश करते हैं तो डेडली साबित हो सकता है GamerLegion के लिए. लेकिन मॉन्टी, पेशेंस, एग्रेशन, दोनों चीजें दिखाई उन्होंने. पूरा मैप कंट्रोल डिनाई किया और धीरे से पीछे आ गए. GamerLegion को I don't know if they know, बी साइड की तरफ कोई है नहीं. SDY इकलौते प्लेयर होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे. M4A1S लेके इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट होगा, आराम से कंट्रोल ले लेंगे मुझे लगता है मॉन्टी यहाँ पे साइड का. नाइस फ्लैश क्रॉस कर चुके हैं. ओह ईमा, ही रीड्स इट. SDY पता था अभी भी उसी एंगल में खेलेंगे शॉट की तरफ. पनिश किया गया बट विद द फाइट अगेंस्ट क्रासनल प्रूव सुपीरियर. होल्ड ऑफ कर रहे हैं अपने टीममेट को और बुला रहे हैं शॉट की तरफ. अनदर फाइट गोज थ्रू बट अभी with a second, Ema stands strong towards benches. Abhi bhi ruke hue, but look at this push towards market. Oh no, failed push. DemQ, wo advantage utha lenge. It becomes a 2v3 situation. It could have been a 4v1. C4 plan zarur ho chuka hai. Ema ka position should be called out, but it's still good for the third. Oh, actually my bad, it's a fourth. He can get the last one here. वो एक और अपने AWP के साथ शट डाउन करते हुए नजर आएंगे. एंड दैट इज GamerLegion स्टिल कीपिंग Monte behind them. Oh no, that's not cool. That is not cool. I mean, इतने तेजी से जो प्रोडक्शन की क्रू भी है, कैमरा की क्रू भी है ना, like they're able to find these small instances happening around such a big stadium. Well, that's why the professionals aren't there. Yeah. 11-10 Monte काफी अच्छा एग्रेशन दिखाया था, लेकिन अभी भी पैसा होने वाला उनके पास यहाँ पे ऑप रखने का. एक और या वो पिक निकालेंगे, मुझे लगता है शायद निकाल पाएंगे वहाँ पे. जी हाँ, वॉर 2 के कोशिश जरूर करी उन्होंने पिक निकालने की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ए मेन के अंदर कंट्रोल लिया हुआ है. कियोस धीरे धीरे क्रीप अप कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं शायद 2 लोग ए मेन के अंदर है. लुक एट दिस, एडली साबित हो सकता है यहाँ पे. C4 गिरने वाला है. जी हाँ, C4 गिर जाएगा. इन्फॉर्मेशन रिले कर दी जाएगी. DemQ पीछे बैकस्टैप देख रहे हैं, लेकिन M4A1S वापस वो हेडशॉट नहीं लगा है. लेकिन बोस को बता दिया गया कि वहां पे प्लेयर HP जरूर कम है. मेरे हिसाब से ऑब्लिग पीक कर सकते थे, लेकिन 2 vs 3 आप सी उठा लिया जाएगा. एक और प्लेयर अभी भी बैकस्टैप के ऊपर आ रहा है. STY को ही विल हैव टू बिकम होल्ड, और यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा पूरी साइड को अकेले. लेकिन उनके लिए भी बैकस्टैप आ रहे. C4 ड्रॉप हो चुका है. एंड ओह माय गुडनेस, SDY एक्सपेक्ट किया था उन्होंने बैकस्टैप को, लेकिन टाइमिंग हो गया उनके साथ. क्रैशनल अब मिड की तरफ से रोटेट करते हुए C4 दे दिया जाएगा. उनको स्मोक किया था, जितना समय वेस्ट कर सकते उतना वेस्ट करने की कोशिश, लेकिन अभी भी 40 सेकंड है उनके पास. तो अगर उनको पता चलता है कि वहां पे C4 उठा लिया है, छोड़ दिया है, तो शायद वो बी की तरफ चले जाए. 30 सेकंड रहने वाला है. GamerLegion, what do they want to do? They need to be quick, but they head right towards A. Krasnal वो यहाँ पे गलत रीड कर रहे हैं. वो सोचे कि B चले गए खिलाड़ी, रोटेट करने वाले थे. आई थिंक he gets immediately the idea. जैसे स्मोक डिप्लॉय हो रहा था, he runs back from thicket. एक और स्मोक आएगा. It should be a safe plan, but थोड़ा डैमेज जरूर किया है Accor, but Ema nice positioning on top of the boxes, and यहाँ पे पिक निकालते हुए नजर आएंगे. That is going to be GamerLegion with another round. GamerLegion जिस हिसाब से यहाँ पे खेल रही है, they're like controlling the nerves as well. अगर वो खो भी बैठता है मोमेंटम को साइट मिल के बावजूद, जैसे अभी भी C4 जा चुका था उनके हाथ से, and they made after recovery they made another peak जहाँ पे वापस उन्होंने C4 को खो बैठे. Krasnal, he had a right read, right rotation जो वो C4 गिराने के बाद किए, but then all of a sudden he thought maybe इतना टाइम जो हो चुका है, there can be something different. अभी के लिए Monte will be playing on a save. GamerLegion will be super happy. 2 राउंड का लीड अभी भी उनके पास रहने वाला है, and this is their opponent's map. Missing a shot एक और, not Ema though. Emo has been having a great game यहाँ पे. देखिए 27 kills पे नजर आ रहे हैं माम्बा. 27 किल इतने बड़े स्टेज पे, प्रेशर बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हो, एंड जितनी तारीफ करे उतनी कम है. हमने वो 4 के देखा था. बोरोस, ये प्लेयर भी इतने ज्यादा शानदार तरीके से खेलते. डी कर लेकिन एक और उनको शट डाउन कर देंगे. थोड़ा सा वहां पे ओवर एक्सटेंड किया वेपन के लिए आई बिलीव, बट अब देखना ये बनता है. यहाँ पे आई थिंक चैट में कोई बातें हो रही है. जो टिक टिक आवाज आई थी वो चैट की आवाज होती है.
So I'm not sure क्या लिखा गया था वहां पे, लेकिन SDY he could get these frags. Yes indeed, he will get the first one, getting 5 second as well. सामने ऑफ है, उनको पता चल चुका है. Oh no, एक और वो शॉट नहीं मिस करने वाले. कोशिश करी लैडर के ऊपर जाके जंप करके मारे. मूवमेंट का शानदार इस्तेमाल, गेम के फिजिक्स का बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाए. वेपन था, रिकवर कर सकते हैं, बट ही सीज देयर आर लॉट मोर वेपन्स. AWP हाथ में लग चुका है. कैन ही फाइंड एन ओपनिंग? प्लान जरूर हो रहा है. शॉट का पुश रीड किया गया था 1 सेकंड के लिए. स्लो एंड स्टेडी. डेमक्यू एक खिलाड़ी ट्रक की तरफ रहने वाले, दूसरे बेंच की तरफ पोजीशन कर चुके हैं अपने आप को. डेमक्यू इज स्टिल स्कोप्ड इन एंड गोइंग थ्रू. अब थोड़ा ट्रक से थोड़ा बाहर निकल के खिलाड़ी खड़े. इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग. चेक करना पड़ेगा, बट he missed the pixel around the truck and दूसरी ओर बेंच के खिलाड़ी पीक किया and he gets that. GamerLegion with 13. ये जो किल था वो भी सोच रहे कि SDY किस तरीके से वो पीक कर रहे थे. अगर थोड़ा और ऊपर से पीक किया होता, SDY ने लैडर थोड़ा और ऊपर चढ़ के तो शायद पिक निकाल पाते. उतना जल्दी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कियोस को थोड़ी एनर्जी बचानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 है. स्टेज के ऊपर ये गलती हमेशा होती है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करते थे, बट देन अगेन प्रोफेशनल प्लेयर्स है. एक और वो शॉट मिस नहीं करने वाले, लेकिन तुरंत ट्रेड निकाला. मुझे लगता है मॉन्टे अभी भी इश्यू फोर्स कर रहे हैं. उतनी ज्यादा यूटिलिटी नहीं है उनके पास. ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा सामने वाली टीम को. पनिश करेंगे SDY को स्टेज की तरफ से अपने टीममेट को निकालने के लिए. It turns down to be another disadvantage. Monte के पास सिर्फ 3 लोग रहने वाले हैं, whereas GamerLegion will be playing with 4. C4 इस बार उन्होंने गिराया नहीं है. They're still playing around the T base. B के तरफ जाने का एक इरादा बना रहे हैं. दूसरी ओर Monte के खिलाड़ी अभी भी A को होल्ड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं. One is going to be towards the connector. दूसरी साइड पे खेलते हुए नजर आएंगे. The last but not the least थर्ड प्लेयर अगर बात करेंगे, क्रासनल अभी के लिए बी को होल्ड कर रहे हैं. जनरली हम देखते हैं कि क्रासनल को थोड़ा बैक स्टैप करने का पसंद है एंड वो करते हुए नजर आता है, बट अभी के लिए ही इज जस्ट होल्डिंग इट ऑफ. एप्स की तरफ स्लोली पुशअप किया जा रहा है मिड को स्मोक करने के लिए. और क्रासनल, मैं बात ही कर रहा था कि पुशअप करने के लिए इरादा बनाते एज टाइम टिक्स. इस बार किए, बट ही वाज नॉट रेडी फॉर द फाइट. बेंच की तरफ खिलाड़ी एक्चुअली ऑलरेडी आए हैं. नीमा फॉल प्रेस. डेमक्यू कैन ही गेट अ सेकंड? जी नहीं, अकेले खिलाड़ी बचेंगे. बोरोस ही स्टिल ट्राइंग टू मेक अ पुश. ही गेट्स वन. बाहर निकाल रहे. बॉम्ब जरूर प्लांट हो चुका है. इट्स हाई लो सेटअप कमिंग थ्रू. मुश्किल होगा ये निकालने के लिए. स्मोक प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ विजन. आइजैक विद अ क्राउच पीक गेट्स हिम. कियोस जिस तरीके से इंटेंसिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये Accor Arena जो स्टेडियम है उसका नाम Accor Arena है. फर्क इतना है कि एक सी ज्यादा है, वो स्टेडियम के नाम है प्लेयर के कंपैरिजन में. लेकिन ये जो डबल पीक था, C4 प्लांट कर रहे थे, इस साइड क्या प्लांट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन आइजैक एंगल का भरपूर फायदा उठाते हुए क्राउच पीक किया उन्होंने. एंड आसान नहीं होता उसको काउंटर करना, बिल्कुल आसान नहीं होता. और ये एक बहुत टेक्स्ट बुक ए एग्जीक्यूट की तरफ जा रहे हैं. पिछले बार जब मॉन्टे ने किया था, इट डिड गिव देम अ राउंड. GamerLegion वही करने का इरादा बना रहा है, एंड अगर ये कामयाब हुआ मामबा, दिस विल गिव देम द मैप पॉइंट. पुटिंग डाउन स्मोक्स. स्टेयर्स को ब्लॉक अप किया गया, टिकट बूथ को ब्लॉक अप किया गया, बट द स्प्रे डाउन इज नॉट स्टॉपिंग कमिंग थ्रू. बट बोरोस इज गोइंग टू बी द वन हु पिक्स अप द फर्स्ट. दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे पिक करते हुए नजर आएंगे. लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ पिक्स गोइंग देयर वे. बोरोस trying to control, and जी हाँ, अपने टीममेट्स के लिए एक नंबर एडवांटेज लेके आएंगे. मैन एडवांटेज, बट ईमा क्विकली शटिंग इट डाउन. ही गोज इन फॉर अनदर. टेक्स 2. वॉल बैंक करने का ट्राई कर रहे थे SDY विद दैट स्प्रे डाउन. ईमा जस्ट सर्वाइव्स विद 6 HP. 2 kills ऑफ द राउंड. एक और के पास एक रहने वाला है. इज अ सुपर क्रूशियल राउंड. अगर ये हारेंगे, इकोनॉमी भी नहीं रहेगा मॉन्टे के पास, एज वेल एज इट विल बी मैप पॉइंट फॉर GamerLegion. कितनी है? No time. This is a guaranteed round for none other than GamerLegion. 5 round streak and map point पे आ चुके हैं. जी हाँ, मैप पॉइंट पे आ चुके GamerLegion एंड डोमिनेंट परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में. जो 5 राउंड स्ट्रीक होती है उसका ग्राफिक भी आपने देखा, लेकिन ईमा इनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम. जिस तरीके से क्रूशियल पिक्स निकाले जब भी उनकी टीम को जरूरत पड़ती है, हमेशा वो किल्स निकाल रहे हैं. एंड Accor विद अ वंडरफुल ट्रेड.
तारीफ ज़रूर करूँगा मैं इनकी, लेकिन ईमा बेहतरीन तरीके से डोमिनेट करते हुए सामने वाली टीम को, जितनी तारीफ करे उतनी कम। I'm enjoying the play जो GamerLegion यहाँ पे करके दिखा रही है। जिस हिसाब से मॉन्टी को प्रेशराइज करके अपने गेम प्ले, अपने स्ट्रैट्स, अपने एग्जीक्यूशंस को काम नहीं कर पा रहे, एंड GamerLegion on the other end having a really good time. Great usage of util, and उसको काउंटर करने के लिए मॉन्टे के पास इकोनॉमी नहीं है, जिसकी वजह से they have come util, and उसके बाद they're just trying to go and force fights. अभी भी आप देख सकते हो, we can see 2 farmers in the mix, and उसके बाद जिसके पास भी M4 है उनके पास util नहीं है. Push towards mid. Boros back off कर देते हैं. There's going to be flashes coming through, but Boros is good. Edge मिला था smoke की तरफ, and Suyu को डाउन करते हुए नजर आएंगे. AWP अभी भी रहने वाला है एक और का, but if he extends a little bit वो farmers से निकल सकता है एक किल. कनेक्शन अच्छी तरीके से नहीं आया वॉरो 2K का, ही इमीडिएटली बैक्स ऑफ. दूसरी और अंडर से ईमा का पुश आया. बोरोस इज बैक टू इट्स कनेक्टर. जंगल की तरफ चले गए ईमा. ही स्लोली क्रीप्ड इन. कोई आइडिया नहीं है, जंगल की तरफ जा रहे. ही माइट बी एबल टू पिक अप फ्रीबी फॉर हिमसेल्फ. इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग. जी हाँ, ईमा को एक पिक मिल चुका है. खिलाड़ी साइड पर जरूर खेल रहे हैं अभी के लिए. कैन ही डू एनीथिंग? फंस चुके हैं, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन. डेमक्यू Isaac को डाउन करेंगे, but Ema he's not stopping. There is no stopping that man. 32 kills निकाल चुके वो. 32 kills, 17 डेथ. अभी भी वो फाइट लेना चाहते हैं. Make that 33. रेगुलेशन में 33 फ्रैग निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन एक और थोड़ा सा वो कमिट करते हुए वहां पे 1 versus 2. मॉन्टे को जरूरत, ये राउंड की डेस्परेटली जरूरत पड़ने वाली, लेकिन डबल पी करके 34 फ्रैग्स. ईमा क्या ही कहेंगे इस प्लेयर के बारे में? What? GamerLegion, जिस हिसाब से हमने बात किया था माम्बा, जिस हिसाब से हमने सोचा था, आई थिंक इसी के लिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जब हमारे सामने स्टैट्स रहते हैं ना, जो पिछले स्टैट्स रहते हैं, ऐसे गेम्स जब आते हैं, क्रूशियल गेम्स, व्हेन टीम्स नीड टू बी बेटर देन देयर ओपोनेंट, उनको आउटस्मार्ट करना पड़ता है. ऑल दी स्टैट्स दैट वी हैव, वी कैन क्रंच देम इनटू अ बॉल एंड थ्रो देम अवे. GamerLegion वही करके दिखाई है मिराज पे. They shut Monte down. जो भी Monte करना चाहते थे, whether it be T side or CT side, कुछ करने के लिए मौका नहीं मिला उनको. And GamerLegion closed the first one, and the next map जो हम जाने वाले हैं वो उनका खुद का पिक है, Overpass. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन GamerLegion की तारीफ करनी पड़ेगी. इंडिविजुअली भी उन्होंने परफॉर्म किया, बट Monte मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस थी उनकी. बस खाली एक दिक्कत हुई जहां पे इशू फोर्स नहीं करना था. दे वर स्टिल रिलाइंग ऑन दैट ब्रूट फोर्स अटैक, जहां पे वो फोर्स कर रहे थे कि नहीं हम फाइट लेंगे, फाइट जीतेंगे. लेकिन मेजर प्लेऑफ्स में, इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े स्तर पे जब आप खेल रहे होते हो, एक एक्स फैक्टर की जरूरत पड़ती है आपको. वो मिसिंग था, और वो GamerLegion ने आज दिखाया. मैन, क्या ही गेम था ये पहले वाला. आई थिंक GamerLegion जैसे इनिशियली अपने जो फ्रेंच फैंस जो आए पेरिस पे, उनको ऑलरेडी अपने तरफ ले चुके थे. वहाँ से थोड़ा एनर्जी उनको मिल गया, एंड फ्रॉम देयर दे वेंट गोइंग हेड. फर्स्ट हाफ में भी अर्ली लीड लिया था, एंड उसके बाद थोड़ा कंट्रोल में लेके आ गए मॉन्टे. बट उसके बाद मॉन्टे सेकेंड हाफ पे कुछ ज्यादा नहीं कर पाई. यू कुड सी फर्स्ट डबल डिजिट्स लेते आए GamerLegion विद द प्लेस दैट दे हैड, स्पेशली द सेटअप्स दैट दे वर मेकिंग. उनके जो क्रीपअप्स थे, उनके जो यूटिल यूजेज थे, वो हर वक्त उनको फायदेमंद बनते हुए नजर आ रहे थे. दे वर फाइंडिंग वैल्यूज एट ऑल टाइम्स, एंड हाउ कैन यू नॉट कीप टॉकिंग अबाउट ईमा. आई थिंक एटलीस्ट 4 बार या 3 बार इनके पास 4 या 3 राउंड्स में 4 किल्स आए बैक टू बैक. दैट इज नॉट अ नॉर्मल स्टैट टू पुल ऑफ. एब्सोल्युटली नॉट. मेजर प्लेऑफ्स में जब आपका 123 का ADR होता है, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंस जताई है सर्वर के ऊपर. एंड मैन शोड अप. जब भी उनको टीम की जरूरत पड़ रही थी, हमेशा उन्होंने वो इंपॉर्टेंट फ्रैग्स निकाले. दैट डीगल 4 के जो ऑलमोस्ट एस निकाल दिया था, इकलौते प्लेयर ने पूरा राउंड निकाल के दिया था. खुश जरूर होंगे,
यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे मुझे आइडिया नहीं है because well I mean anything that they touch is turning to gold. तो ज़्यादा डाइसेक्ट करने के लिए कुछ होगा नहीं, बस फोकस होगा अगले मैच के ऊपर. ये देखिए फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड शुगर. जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो, कई बार लगता है लोगों को गेम खेलना, चेस खेलना, लॉट ऑफ दीज थिंग्स आप बैठे रहते हो, ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करते, लेकिन जितना सोचना पड़ता है इन प्लेयर्स को. योर ब्रेन इज द मोस्ट एनर्जी हंग्री ऑर्गन इन योर बॉडी. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका दिमाग यूज करता है. एंड हम बात भी करते हैं ना कि इन ई स्पोर्ट्स इट्स ऑल अबाउट हाउ योर मेंटल स्टेट इज. अगर वो आप खो बैठते हो, आपका एम कितना भी बेहतर हो जाए, आपका जो विन स्टैच है, आपका कॉम्पोजिशन जो है, आपका प्ले स्टाइल जो है कितना भी बेहतर हो जाए, इफ़ यू लूज योर मेंटल स्टेट, वो बहुत मुश्किल होने वाला है. एंड आई थिंक अभी के लिए बरकरार लेके रख रही है गेमर लीजन. वी विल लुक फॉरवर्ड टू द सेकंड मैप कमिंग थ्रू, बट उससे पहले लेंगे एक छोटे से ब्रेक. Following the rules, there's some low-hanging fights been happening, and I thought that at that game Monte would have the better hand. I thought they would thrive into these weird mid-round chaotic situations. Turns out I was immensely wrong. GamerLegion all the way to the bank. Yeah, I think that the GamerLegion just style, the way that they play off of each other, the way that they had better plans, that all was enacted, but obviously there was one guy that stole the show. Already said his name right there in Ema. On the other side, we had Boros doing a really great job for Monte, but it just felt a little too one-dimensional for Monte. It was basically, is this the Boros show today, or is Boros dead and is the round over? Like, Monte don't always seem to have that second plan, that contingency plan. If the Boros plan, Boros is the A plan and he's the B plan. All the plans. We need to attack this one, I think, in a linear fashion, because as you said, it got quite chaotic, incredibly scrappy during the midsection of this game. But to start off with, apparently all Kios needed was the crowd behind him to really get ignited in this first half. And he did all he had to do that. Round 4, we can kick it off. This was what GamerLegion needed to kind of kick off the situation we have here. The 3v2, that's kind of a hard to read. Isaac doesn't really position himself to the best. Ema is going to get traded pretty fast. And now Kios, granted against low HP opponent, is going to put the clutch on his back here. He's got a good way to kind of decompose the map, and he's beautiful flick onto Krasnal now. I just want to put it this way. In the context of this very game, finding a 1v2 so early on is immensely important. Just to get your team fired up, get the crowd reacting. Off the back of that, Kios had a great streak of rounds, because I think this just put him in the right zone. For GamerLegion too, I mean, just the fact that if they didn't have that sort of buffer at the beginning of this one, it was a great run from Monte in that first half. After the first handful of rounds, I think they won about 5 straight or so. Yeah. And so that clutch, even though it was very early, it actually became pivotal in terms of just ending the half and seeing that it's just an 8-7 breakdown. We can come out ahead, especially if we win the pistol. Let's talk about the round that kind of started off that streak then. For Monte to be answering back, we spoke about Boros, we hyped him up so much, and he was just punching GamerLegion in the face, particularly in this round. And this round scared me a lot as a potential GamerLegion fan, because this was relatively unacceptable. We see the trades heavily favoring the defense. It's a 4 versus 2 with positions being known. Just Boros is unaccounted for, and you will see here his kind of intuition for the game, great cross replacement, and he's moving very silently. He's working face to face with ASDY. He trades Shuhi. There's a miss from Accor going on, and the situation turned on its head. This is the 4th round for Monte. It was a very complicated situation here. You could argue Isaac had the drop onto SDY. He was having a hell of a rough game, by the way. He's probably going to thank his teammates for that. But when they won this round, when Monte won this round, I thought, holy hell, GamerLegion is about to crumble. This was an unacceptable 4v2. They did an okay job tempering it down. Yeah, this was a little bit reminiscent to me of how it felt when FaZe and Heroic were playing against each other. It really just felt like one team was playing better, Team CS, and the other team just had that X factor. Round to round, Boros was a wrecking ball. He was one of those players that when he was moving around the map, he was just basically spinning in 5 different directions and killing everybody. It's not that necessarily Boros is even setting himself up for the best fights. It's just that if it's a 50-50 duel, his aim is so pristine. And you look at this, and we've seen some highlight packages of other riflers so far at this tournament. I want to bring up Robs. Robs had perfect crosshair placement. Boros has incredible corrections. Yes. When Boros is swinging out, he's not always even looking the right way, but he's so quick and so swift to actually move his crosshair exactly where his opponent's head is. Now, just to be a little bit annoying, a bit of a Debbie Downer right here, you talked about how if Boros wasn't
successful, then everything would fall apart for Monte. I would posit that Boros felt that too during the second half. And I thought he had a couple of moments where he went overboard. He crossed the Rubicon. He was way too aggressive because he felt like, holy hell, if I'm not going to do this by myself, no one's going to do it on my team. He had a couple of moments. He's in T-spawn with the bomb in front of him, switches to the USP because he really wants to get that second kill, unbeknownst to the fact that there are 3 opponents waiting for him. So just a little bit more balance. If he just kept the positive and then rein it in just a little bit. But he couldn't. I think he overcommitted a couple times. I mean, what can you do when you have his level and nothing's going your way? Right, and that's the thing with Monte. It's just that we've been looking out for this Waro 2K glow up for such a long time now. Like, I've been hearing his name so much in the Tier 2 space. People are saying, oh, he's the next best opera out of Eastern Europe. You know, he's gonna do it. But I've actually, again, it's just like, this feels like such a one-man show for Monte. If you actually go head-to-head on operas here, Accor did better than Waro 2K, and yet the narrative surrounding Accor for the last year or 2 years is like, this guy's washed, this guy can't even play on mouse sports, he's the reason they're losing, and yet he's out-dueling a guy who's supposed to be the next big thing out of Ukraine. Look at the camera. I think they understand what's the story of that first map as well. We've been following Ima this entire time in the hallway, and what an absolute superstar performance for him. His debut on the stage, 34 kills, more than 120 ADR. He's got 10 multi-kills, 6 out of 10 opening kills, and I will even add on top of that, early on in the game, there is a key moment where Ima messes it up completely. We're talking about a sitter from catwalk to A side, a spray that goes completely out of control, and they lose the round off the bat of that. He even looked at the camera and he said, oh, Jesus, don't look at me right now. I just messed up. So for him to find it in himself, to bounce back after this shameful moment, that's what it was, and still have this performance, whew, respect. Yeah, with Ima, honestly, I think that it's just like, he's making smarter decisions for himself. He's putting himself in better spots. When we put him against Boros, we talked about it in the pregame, just the fact that he's using his brain a little bit more. He's more cerebral of a player. And so even though he had that one whiff spray from catwalk, he was able to recover because he just kept putting himself in good positions to succeed. He was catching opponents off guard with positioning, with timings, by working with his teammates. And that's the whole GamerLegion system. It sets someone else up like Ima. If Ima were on Monte, he wouldn't be able to do that because the system isn't there. That's why it feels like Boros has to do this Herculean effort to try to get Monte across the finish line. And for Ima, he was a product of the system, but he exceeded even what that system provided him too. Well, let's listen in for what was one of many Ima highlights in this mic'd up moment. Flashing con now. Flashing con. Stairs. Don't smoke top con, guys. Firebox. I'm blind. Dead firebox. Out city, one more dead. There's one. You got this. I'm on triple. I'm on. Going deeper. Cabin. Dead. Freddy has no mates. 2v2. Stay alive if you can. I'm safe. Nice. He's connector. Don't see him. Cap behind the city. City out. He's going back now. Inside. 10. 9. 8. Yes, we'll keep it. 7. 6. Let's go! Mihai, you're so good, bro. Pure elation from the GamerLegion camp in that one, and I don't blame them because the fact that Ima was able to pull off those crucial kills in that moment, obviously sealing the fate for GamerLegion. Oh, absolutely game defining for Ima, and I think it's a great round to illustrate some of the points we've been making. This situation was supposed to be Monte all the way. Roro crosses a smoke completely on his own from CT spawn, gives away his life, unnecessary. Then it's a 2 versus 3 where Boros is committed like a bird. He's basically like a hawk on top of stairs, gets immediately removed. Then Ima has the ability to just single out Krasnal, which is again committed out of jungle. These are all moments where one individual is putting himself in a position that commits him to a fight, but the rest of the gang is not ready to. And this is what he was able to sort of abuse. And yes, a little bit of skill on top of that doesn't help, or help rather. Yes, I think that if we're going to get this sort of firepower from GamerLegion, that to me is the one win condition for Monte. The firepower that they showed in the Legend stage was spectacular, especially in the game versus Na'Vi. And it begs the question once again, just who is going to be there to step up, because Ima did such a good job for GamerLegion. Boros did as well, but there was a supporting cast behind Ima. It wasn't even just him. We had a good showing from Accor.
Kios was able to deliver some key moments as well. And yet for Monte, I feel like all I'm thinking about in terms of what they were able to produce was off the back of one man. And things only continuing to look up for GamerLegion as we do move on to their map pick. That is Overpass. And when we talk about streaks, it's just some incredible numbers that come up from the side of GamerLegion. Out of the last 12 times they played it, 11 times in their favor, and they've taken down, you know, some big names within that mix as well. What has been so dominant then for your money, Maui, about GamerLegion's Overpass? I love Shuhei's calling on the T side of Overpass. The reason they're okay with picking the most CT-sided map in professional Counter-Strike play is because Shuhei knows, based off of the first contact in a round, what to do next. If you get killed in a certain way, if you find a kill in a certain way, Shuhei has that flowchart mapped out in his head. He knows how to get the absolute most out of his players, and he is constantly toying with opponents. It is tough to outwork CTs in terms of their rotations, but Shuhei has found a way to keep the CTs guessing so frequently on this map. They are flying blind so frequently, and unless Monte just go for some random pushes here and there, then it's going to be GamerLegion in the driver's seat. You almost feel like they have to. I think they have to be that aggressive. I rewatched the demo against Apeks, and I agree 100% with you. The fact that Shuhei knows how to play the entire map almost in the first 5 to 6 rounds means that on the CT side, you're basically in alert mode every single area of the map. They could be long, they could execute from long, they can execute from bathroom, they can take quick B side, they can do quick monster, they can do all of these checkboxes. They mark it. It's going to be very complicated for Monte. They need to be aggressive and cut it, the snake at the head immediately. You know what? It's not complicated. If you're watching over on Blast TV, you can get involved in the map picks and bans, or the veto rather, for the show match that's going to be playing ahead of the grand final on Sunday. Now, we already had our say. Unfortunately, we did ban out Overpass, we did ban out Vertigo. We saw Ancient getting banned yesterday. During this map of this series, if you're watching on Blast TV, make sure to get your votes in. Gentlemen, before we do get this show underway once again, do you feel like this is written in the stars for GamerLegion now? Do you think they're sealing this in 2? The reason I picked GamerLegion is because I thought Overpass was a sure thing. And so for me, they're ending it here. Now just one map separates GamerLegion from potentially making it all the way to the semi-finals. That does come down to the map of Overpass. Their pick coming into things, so let's get the show on the road. Ladies and gentlemen, Overpass ये एक ऐसा मैप है GamerLegion के लिए जो एनालिस्ट ने भी बताया बहुत ज़्यादा फेवर करता है GamerLegion को. उनका परफॉर्मेंस देख के, आप उनके डेटा को देखिए, पिछले 11 मैचेस में काफ़ी ज़्यादा मैचेस वो जीत चुके हैं. सो फ्रॉम व्हाट स्नेक सेड, GamerLegion उन्होंने सिलेक्ट की थी कि ये मैचअप जीत सकते हैं बिकॉज Overpass एब्सोल्युटली GamerLegion डोमिनेट करने की पूरी स्किल सेट रखती है. लेकिन Monte, they have their backs up against the wall, और वो सेमीफाइनल से क्वार्टर फाइनल से कैसे नहीं पहुंचे. उन्होंने काफी बड़ी टीम्स, काफी दिग्गज नामों को हराया है. मौका अभी भी उनको जरूर दूंगा, लेकिन GamerLegion are looking like the favorite right now. I second that thought and बताया भी एनालिस्ट डेस्क पे कि अगर Monte किसी हद पे इस मैप को ले सकती है, they need to take it from the get go. उस सांप को है ना जैसे पहले ही मारना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं Monte को ये मैप मिल सकता है, वरना GamerLegion are going to take this away from Monte and यही पे ये सीरीज खत्म हो सकता है. स्टार्ट हो चुका है. Monte will be on CT. अभी के लिए लोअर पे एक फाइट छिड़ता हुआ नजर आ रहा है. इट इज राइट नाउ Monte getting a couple of frags but डबल डाउन करते हुए Suya and Kios उनका ट्रेड निकल जाएंगे. Woro 2K पार्टी करने के लिए जरूर ईमा तैयार है, इंतजार कर रहे हैं अगर कनेक्टर से कोई खिलाड़ी बाहर आएगा. He might be able to pop 2. वो I don't think इसको predict करेंगे. He's trying to go for initial battle but he loses that. SDY quick on the flick. Accor actually make it double for him. What just happened? मैं सोच रहा था कि Monte के पास एक आसान सा राउंड आने वाला है, but that quick switch coming in from Accor to double and अभी 2v1 situation बन चुका है. बहुत तेजी से बीच की तरफ जाके प्लांट भी कर रहे हैं. Krasnal in a 1v2. हेवन से बाहर आएंगे या सीधा वो सीटी साइड से बाहर आएंगे, देखना पड़ेगा. इज लुकिंग फॉर टू एग्जिटिंग फ्रॉम हेवन. इनिशियल पिलर कांटेक्ट जरूर हो चुका है. दूसरे खिलाड़ी शॉट से आ रहा है. इट इज डूएबल बट उनको बहुत तेजी से करना पड़ेगा बिकॉज टाइम इज टिकिंग. एंड ही डजंट Accor विद अ 3. पहला राउंड वापस GamerLegion लेते हुए नजर आएंगे. GamerLegion Overpass पे हम कहते आए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है. जिस तरीके का क्रॉस फायर सेटअप किया था, एक और ने किल्स भी काफ़ी क्रूशियल निकाले. लेकिन ऑडियंस, मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ऑडियंस क्या कर रही है, किस तरीके से चीयर कर रही है.
I think ऑडियंस बहुत खुश है जिस हिसाब से गेमर लीजन खेल रहे हैं अभी के लिए. SDY comes into the scout even though he loses. एक जरूर पिक उन्होंने उठाया था. अभी के लिए वो Woro 2K को थमा देंगे. Playing a little bit default, not aggressing Mamba. लेकिन बोरस के पास डीगल है. हमने देखा डीगल कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये प्लेयर. तो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से अप्रोच करते हैं. अब लास्ट मैच में हमने देखा था काफी किल्स निकाला थे, लेकिन बोरस धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं. जी हाँ, इसी चीज के बारे में बात कर रहा था. पहला पिक जरूर निकाला, गलील उठा लेंगे, which I believe उनके टीममेट को दे सकते हैं बिकॉज बोरस काफी कॉन्फिडेंट है डीगल के ऊपर. Nonetheless, Woro 2K स्काउट ऑन ए साइड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. चूई उनको छोड़ने नहीं वाले. बैक स्टैप आ रहे हैं अब धीरे धीरे. SDY डीगल के साथ बैक स्टैप करने की कोशिश, लेकिन कनेक्टर से ऊपर आने वाला है. लेकिन एक और अवेयरनेस बेहतरीन थी उनकी. रोटेशन आना स्टार्ट हो चुका है. 3 वर्सेस 4 सिचुएशन. बोरस एक और किल निकालेंगे, लेकिन सुई ट्रेड नहीं छोड़ने वाले उसका. सुई हैज बीन फिनोमिनल अभी के लिए सेकंड राउंड पे. बॉम्ब प्लान कर चुका है. ईमा स्टिल हैजंट ओपनड अप हिज किलिंग स्प्री. क्या ये राउंड होने वाला है? इनिशियल कांटेक्ट बैंक की तरफ से, बट तुरंत ट्रेड करेंगे उस गलील का. ईमा हम बात कर रहे थे, गेट्स हिज फर्स्ट एंड नाउ इट शुड बी ट्रबलसम फॉर एवरीबॉडी. ईमा अप क्लोज, DemQ को डाउन करेंगे and that's going to be a second coming in. GamerLegion Monte को यहाँ पे पीछा छोड़ना चाहते हैं. अर्ली गेम पे कंट्रोल ले चुके हैं. जिनको पता नहीं, पाशा ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम हिज कंट्री टू फ्रांस बाइसिकल के ऊपर. बहुत पुराने प्लेयर, 2024 में कैटोविच से जीते थे. ई लीग मेजर भी जीत चुके हैं. बेहतरीन प्लेयर, लेजेंड इन हिज ओन राइट. अब रिटायर हो चुके हैं, बट उनके जो फैंस हैं, उनका जो फैंडम है, वो अभी भी बरकरार. They will never retire. पिछले राउंड में बाय करने की वजह से अभी पूरा सेव करना पड़ेगा मॉन्टे को. आई मीन सारे लोग नहीं, थोड़ा यहाँ पे बाय डीगल्स भी नजर आ रहा था. सो दे आर गोइंग टू गो इन फॉर अ फुल सेव. 3 ग्रेनेड नजर आ रहे हैं, बट अभी के लिए स्लोली एंड टैक्टिकली पुशअप कर रहे हैं. जंप पिक्स कर रहे थे, बट उनका पोजीशन पता चल जाएगा. दे आर ट्राइंग टू बैक ऑफ. कियोस एक फाइट लेंगे एंड कम्स ऑन टॉप ऑफ इट. बोरोस इस बार डजंट गेट अ किल. दूसरी ओर बातुम्स को भी पुश करते हुए नजर आ रहे हैं. GamerLegion they're pushing slowly and steadily from all directions, but I think read जो है अभी के लिए मॉन्टे का सही आ रहा है. they are coming towards A. I think कहीं ना कहीं अगर बैटल हो जाता है and they get positive trades, Monte can actually make their eco work. Good grenade. Spotted. Oh, DemQ. एक और जरूर ट्रेड निकालेंगे, बट DemQ is not stopping. He's looking for a third, but ट्रक को पकड़ते हुए बैठ गए थे खिलाड़ी. Woro 2K picks down his Zac. आखिरी दो खिलाड़ी Kios and Ema not looking that great. Make it only Ema. He has to go for a big 1v3 this time, and that is Monte with Eco, a save round जहाँ पे जीतते हुए नजर आ चुके हैं. That is going to be the first one they put up on board. फाइनली GamerLegion का तोड़ मिल चुका है उनको. किस तरीके से हराना ईगो राउंड में, जिसका जवाब नहीं है. लेकिन आप बात करें पिस्टल्स की जो प्रॉवेस है, DemQ ने वो 2 किल्स निकाले, बहुत ज्यादा क्रूशियल थे. एंड फिर ईमा ऑफ कोर्स अपने टीममेट को अगर मारेंगे तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते. ही वाज वेरी अनहैप्पी विद इट. ऑलमोस्ट इन टीयर्स. और ये छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी साबित हो सकती है. इतने बड़े स्टेज के ऊपर बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहते आप सामने वाली टीम को. एंड GamerLegion वेपन्स तो होंगे उनके पास, लेकिन शैबी बाय है, इतना बेहतरीन बाय नहीं है. अब थोड़ा ज्यादा एग्रेशन दिखाना चाहते हैं, लेकिन Woro 2K यहाँ पे B-Long की तरफ कंट्रोल ले चुके. मॉन्स्टर में Woro इज इन अ फिनोमिनल पोजीशन. यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज डिश आउट कर सकते हैं सामने वाली टीम के लिए. क्या Woro किल निकालेंगे? जी हाँ, पहला मिलेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन डील कर दी जाएगी. अब एक और वेट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिस करने वाले उस शॉट को. ईमा इज क्रीपिंग इन. उन्होंने शैडो देख लिया था सामने वाले प्लेयर का, अब किल निकाल लिया. तो Monte वंस अगेन ऑन द बैक फुट. किल निकाल पाएंगे? बोरोस हमेशा डिलीवर करते हैं अपनी टीम के लिए, जब भी जरूरत पड़ी है. डीगल के साथ, M4 के साथ, क्रूशियल किल्स के साथ. अनीमा थोड़ा ज्यादा एग्रेशन दिखाते हुए, जिस चीज की जरूरत नहीं थी उनको. P250 थी,
1 वर्सेस 3 पहला किल जरूर निकालेंगे, लेकिन पीछे देखने की कगार में अपने आप को वो ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां पे वो ट्रेड हो जाएंगे। ट्रेड अवॉइड करना चाहते थे, ट्रेड नहीं निकालने देना चाहते थे, लेकिन ए लॉन्ग पे जब अकेले खेल रहे हो, आपके प्लेयर के पास P250 हो, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आप। मॉन्टी का अभी के लिए जो प्ले स्टाइल है बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। क्विक टू टेक कंट्रोल इन द अदर डायरेक्शन एंड एक खिलाड़ी हर वक्त कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं नजर से GamerLegion के, जिसकी वजह से एटलीस्ट इज एबल टू फाइंड वन, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है रिले होता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर लाइन जरूर इक्वलाइज हो चुका है एंड GamerLegion को बैकफुट पे डाल दिया गया ऑन देयर इकोनॉमी एज वेल। स्मोक ऑफ किया जाएगा मॉन्स्टर को विदाउट गिविंग एनी क्विक पुश एक्सेस। शॉट को भी मॉली ऑफ कर देंगे, बट डेमक्यू क्विक पिक करेंगे, क्विक निकालेंगे, इज गोइंग फॉर द सेकंड वन। C4 ड्रॉप करवा देंगे, अभी भी खिलाड़ी आ रहे हैं, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी 2 पीपल पिकिंग टुगेदर। पुश आउट करते हुए नजर आ रहे थे लोअर से भी, एंड दैट्स गोइंग टू बी 2 प्लेयर्स बीइंग टेकन डाउन, मेकिंग द थर्ड 3v2 सिचुएशन बन चुका है। बट Boros 2K के हाथ में AWP है, वो इंतजार कर रहे थे कनेक्टर से आगे गए, ही फाइंड्स वन। नाउ ही इज पुशिंग इवन फर्दर। पिक जरूर निकाला, लेकिन तुरंत ट्रेड हो जाएंगे। 1 वर्सेस 1 होने वाला है। वोरो के पास ऑफ है यहाँ पे, लेकिन रोटेशन वो मॉन्स्टर की तरफ से करना चाहते हैं। नॉट श्योर अगर ये चीज रियलाइज कर रहे ईमा। क्लच करना पड़ेगा वापस एक और बार, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड, लेकिन मॉन्स्टर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा उनको, ठीक करने की कोशिश। व्हाट आधी एज में सर्वाइव कर रहे थे, एक स्ट्रेट बुलेट उनको लगती सिर के ऊपर, मौत हो सकती थी उनकी वहां पे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, शॉट नहीं मिस करने वाले वो। NM4A1S 2 हेडशॉट करने की जरूरत थी, किया उन्होंने। बेहतरीन तरीके से राउंड निकाला यहाँ पे GamerLegion ने। आई थिंक मॉन्टी, देखिए मैं अभी बात कर रहा था जिस हिसाब से वो कंट्रोल ले रहे थे एंड एक खिलाड़ी को छुपा रहे थे, अभी उन्होंने क्या किया, सारे खिलाड़ी को हर एक डायरेक्शन से पुश करवा दिया। दिस ओवर एग्रेशन सीम्स अननेसेसरी। मॉन्टे इसी के वजह से आई थिंक ऐसे गलती करने की वजह से राउंड हारते हुए नजर आया है। बट Boros 2K एंड हिज टीममेट्स आर पुशिंग अप क्लोज। इनिशियल बैटल बहुत जल्दी होता हुआ नजर आ सकता है, बट इमीडिएटली बैक ऑफ करते हुए नजर आएंगे खिलाड़ी एंड तुरंत लॉन्ग की तरफ कंट्रोल लेंगे। कनेक्टर का कंट्रोल रहने वाला है मॉन्टे के पास, बट ए साइड कब्जे में ले सकते हैं। आई थिंक बना विल बिकम अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट सिनेरियो। अभी के लिए खिलाड़ी वहां पे होल्ड आउट जरूर कर रहे हैं, हेडिंग टूवर्ड्स पार्टी, बट सीधा टी बेस के तरफ, लोअर की तरफ जाने का इरादा बना रही है टीम ऑन मॉन्टीज एंड। ऑल अबाउट टाइमिंग। फाउंटेन की तरफ आई थिंक उन्होंने एक खिलाड़ी को देख लिया था, एक को डाउन करेंगे। इज़ैक इज वेटिंग फॉर अनदर, बट दूसरी और GamerLegion कंट्रोल में ले चुके ए साइड को। इट्स ऑल दैट दे हैव टू प्लान। ईमा ओवर एक्सटेंडिंग इज़ैक के साथ क्रैशनल, बट फाइनली Boros 2K प्लेग्राउंड की तरफ से सर्कल करके खिलाड़ी को डाउन करेंगे, बट वो बाथरूम को चेक ही नहीं करेंगे। कियोस आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। Boros 2K he does have a AK in his hand and तुरंत भागते हुए इसको सेव करना चाहते हैं। टी-बेस की तरफ जा चुके हैं, बट दूसरे खिलाड़ी उनके हंट पे निकल चुके हैं, मेकिंग श्योर उनको सेव करने के लिए मौका ना देना है। एंड दैट्स गोइंग टू बी Kios, he might be looking for his second, but Boros 2K को वो आइडिया लग चुका है कि आ सकता है कोई ना कोई खिलाड़ी, and he's holding the proper angle, puts him down। जी हाँ, उनको वहां पे एलिमिनेट किया। वॉरो कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा, यहाँ पे समय तो है नहीं, बिल्कुल गन बचानी होगी। एंड अब अगले राउंड के ऊपर फोकस होगा मॉन्टे का, बिकॉज इनके पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है, इनका बाय थोड़ा सा शैबी होगा मेरे हिसाब से। अगर फोर्स करते हैं तो यूटिलिटी उतनी नहीं होने वाली है। बट GamerLegion एक बार गलती करी थी वो इको राउंड में, लेकिन उसके बाद वापस गेम अपनी तरफ स्विंग करते हुए, अपने फेवर में स्विंग करते हुए। एंड जो हमारे एनालिस्ट थे वो भी इसी वजह से इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, GamerLegion का कंट्रोल ओवर पास के ऊपर बेहतरीन है। जो उनकी रीड है, मिड राउंड कॉलिंग है, वो कंपेयर नहीं कर सकते आप मॉन्टे के साथ। मॉन्टे डिसाइड किया है ईगो करेंगे, पैसा है नहीं उनके पास एंड बिल्कुल भी फोर्स करने की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन सुई फ्लैश डालने के बाद पीक करेंगे। अब कंट्रोल ले रहे, डिफॉल्ट इश कंट्रोल ले रहे, लेकिन वॉरो देखे कहां पे पूछे के बैठे। वेरी चीकी, बहुत ज्यादा चीकी। Monte have been decent on overpass, nothing great. Cheeky angle जरूर है, but what a timing and positioning coming in from Kios.
नजर भी नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मौका ढूंढे देन थिंग्स कैन बी गेटिंग डिफिकल्ट, बट जैसे वो डोर ओपन होने वाला था तभी जाके वो पीछे हटेंगे एंड गोज इन फॉर अ डिफरेंट एंगल। ओह एक और जो कम्युनिकेशन था वो बेहतरीन था GamerLegion की तरफ से, बिकॉज उनके जो टीममेट थे बी शॉट पे उन्होंने इंफॉर्मेशन रिले करी थी कि शायद यहाँ पे बूस्ट करे, बिकॉज प्लेयर नीचे गिरने की आवाज आई थी। उसी वजह से जिस तरीके से पीक किया वो काम आया उनको। सुई इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, गोली भी चला चुके हैं, लेकिन फ्लैश के साथ पीक करने की कोशिश। क्या लेट होगा फ्लैश? जी नहीं, बिल्कुल सुई स्टिल सर्वाइव्स। फिर भी क्रैशनाल के ऊपर वो पिक निकाल पाएंगे। फ्लैश पीक करने की कोशिश, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइस रनिंग इन हिज वेन्स। इस तरीके से वो पिक्स निकाल रहे हैं बी साइड के ऊपर। दोनों तरफ एक साइड, दोनों साइड को एक साथ हिट किया, लेकिन GamerLegion इतनी ज्यादा डोमिनेंट शोइंग दिखा रहे हैं अभी कि आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं मॉन्टे के साथ उनको। आई थिंक GamerLegion बहुत खुश है जिस हिसाब से उनके ये मैप का परफॉर्मेंस भी नजर आ रहा है। उसके बाद पहले मैप का जो विक्ट्री भी मिल चुका है एंड दे जस्ट playing their game and not letting Monte get anything. वापस जरूर बड़ी नजर आ रहे हैं। They do have an AWP. यूटिल का अगर बात करेंगे don't have a lot about it. Quick execution करना चाहते हैं, बहुत तेजी से बी की तरफ बढ़ने के लिए मौका ढूंढे, but the smokes and all preventing. But Kios, what was that shot? Jumping करने के लिए ट्राई कर रहे थे Krasnal and he gets put down immediately. शॉट की तरफ एक और खिलाड़ी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। He does punish Boros as well. मॉन्स्टर की तरफ से पुश बहुत तेजी से आ सकता है। फ्लैश एंटी फ्लैश खेल रहे थे। ईमा नॉट गुड फॉर एनीथिंग बट डीप DemQ विद अ ट्रिपल। एक और थ्रू द स्मोक उनको पनिश करते हुए नजर आएंगे। कियोस पिक्स STY आखिरी खिलाड़ी बनते हुए नजर आएंगे। Woro 2K, what was this ripper showdown coming through from DemQ? Kios बहुत कम HP में बचे हैं। He can bring this to a 1v1 situation, but दोनों के हाथ में AK रहने वाला है and that is something that he has to find a way around. बहुत प्रेशर होने वाला है उनके ऊपर। नीचे कूदेंगे जरूर, पानी में डैमेज नहीं पड़ने वाला उनको। किट भी है अवेलेबल। फ्लैश पी की तैयारी, लेकिन क्या कमिट करेंगे ये डिफ्यूज के ऊपर? वक्त नहीं है उनके पास इतना ज्यादा। एक और फ्लैश पॉप करेंगे जरूर। जैसे ही डिफ्यूज करने की कोशिश करी, वॉरो को टेक डाउन कर दिया जाएगा। इमेजिन अगर वो ब्लाइंड फ्लिक हिट कर पाते तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती थी वहां पे। लेकिन अब देखना ये बंदे की मॉन्टे क्या जवाब देती, किस तरीके से जवाब देती। कियोस से जो पिक निकाला था, आप इमेजिन करें क्रैशनाल उनका रिएक्शन इमेजिन करेगी। भाई साहब मैं तो जंप पीक कर रहा था, कैसे मारा मुझे। With this coming in from DemQ was just insane. Anti flash खेला, उसके बाद सिर्फ स्प्रे डाउन। ईमा हॉप करते हुए नजर आए as he was exiting monster. I don't know क्या इंटेंशन था उसके वजह से DemQ just got that proper spray down. अगर उसको थोड़ा और संभाल के अपने टीममेट का साथ मिलता, that was SDY, I think Monte could have actually kept control of B. But on the other end, Kios pop off हो रहे थे and made sure GamerLegion को एक और मौका मिले। टाइम आउट जरूर देखने के लिए मौका मिलेगा। We just hope Monte figure out something better as of now. Forced to an eco. थोड़े यूटिल जरूर बाई कर रहे हैं। एक डीगल भी जरूर नजर आ रहा है। Let's hope they have something planned. क्योंकि माम्बा अभी के लिए तो जिस हिसाब से GamerLegion खेल रहे हैं, they're sitting flush with cash, they're sitting flush with map control and flush with number of rounds that they have in their favor. ईमा इतनी नजदीक से खेल रहा है कनेक्टर के अंदर। सीटी से पास डीगल जरूर है। हमने देखा है बोरोस कितना ज्यादा डैमेज दे सकते हैं डीगल लेके, लेकिन इस मैप में देखिए एक और ने काफी क्रूशियल किल्स निकाले हैं। 8 किल्स है उनके पास 8 राउंड में। ये पीछे नहीं है ज्यादा, लेकिन पूरी टीम स्टेप अप कर रही है GamerLegion की पूरी टीम जब भी जरूरत पड़ रही है। लेकिन बोरो यहाँ पे खेल रहा है वॉशरूम्स के अंदर। क्या किल निकाल पाएंगे सीओ के ऊपर? ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। क्रूशियल किल हो सकता है उनके लिए, लेकिन आइजैक अपने टीममेट को बैकअप देने के लिए आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर यहाँ पे वॉरो थोड़ा सा ओवर कमिट करते हैं। P250 क्लोज रेंज डेडली वेपन हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुई इतने नजदीक से तो शॉट नहीं मिस करने वाले, एक ही लेके वो भी।
Kios ने निकाला था, मतलब I mean I don't think another freebie might be given to Ima. चेक कर रहे थे कोई अगर जंप पिक कर रहा है पनिश करने के लिए, but it was nothing as such. अभी के लिए using stairs, looking forward to कि A जाना है, B जाना है. They're a little bit confused. Dude picks up a second for himself. Boros, here's the Deagles have been insane, but look at this again. Ima ऐसे बेट करवा के खिलाड़ी को उनकी तरफ बुला दिया गया from shot, and he just doubles down. Boros the last player, एक weapon जरूर वो recover कर चुके हैं. Can he recover the round? I don't think so. ये weapon को maybe save करते हुए नजर आएंगे. And he'll be looking forward to carrying this AK in the CT side and make some impact. Boros still जरूर निकाला Isaac के ऊपर, but it's not going to make a difference because Monte बहुत ज़्यादा struggle करी है यहाँ पे CT side पे. GamerLegion का जो support है पूरी अरीना में आपको नजर आ रहा है किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. 5 राउंड्स एक साथ जीत चुके हैं GamerLegion. उनको रोकना बहुत बहुत मुश्किल साबित हो रहा है मॉन्टे के लिए. नामुमकिन सी बात लग रही है, लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है. अभी भी स्कोर लाइन 7 अपने फेवर में कर सकते हैं. That's the beauty of Counter Strike. That is the beauty of the C-sport. देखना ये बंदा है क्या मॉन्टे के पास वो परसिवरेंस, वो पेशेंस, वो रेजिलियंस है कि GamerLegion को पीछे धकेल पाया. अब 5 राउंड के लीड अभी तक नजर आ रहा है. Monte can they cover up that gap? पिछले बार भी जब ऐसे एक लीड था तभी उन्होंने कवर अप करके 8-7 का स्कोर लाइन लेके आए थे in the first map, but it was their map. अभी ओपोनेंट का है, but Boros 2K he finds a Suis down. कनेक्टर से आगे पुश करने के लिए खिलाड़ी तैयार है. Can he find anything? जी हाँ, he actually picks up 2. STY through the blind अपने टीममेट के फ्लैश के थ्रू 2 पिक निकाल के वापसी कर चुके हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ बिग राउंड फॉर मॉन्टी. यही से पिछले गेम में भी कमबैक हुआ था, वापस वही दोबारा दोहराना चाहते हैं. Kios, he's hungry, he wants to punish the player. SDY को क्या वो निकाल पाएंगे? M4A1S स्मोक भी है उनके पास, अगर उनको वो चैलेंज नहीं करना है कैन स्मोक इट ऑफ एंड वॉक बैक, बट अभी के लिए वो इंटेंशन नहीं रख रहे. इट इज अ 5v2 सिचुएशन. GamerLegion जो उनके पास एक बढ़िया स्ट्रीक था, फाइनली ब्रोकन डाउन. माम्बा आई थिंक जंप पिक्स पता चल चुका है. Arsenal has given the call. एक खिलाड़ी वॉशरूम से आगे जरूर आ चुके हैं, दूसरे लॉन्ग से आ रहे हैं, बट did I call it a little bit too early? अगर यहाँ पे 2 किल निकाल लेंगे Kios and Isaac with having good health, and उसके बाद C4 प्लांट मिल जाएगा माम्बा, there still might be a chance. There still might be a chance. लेकिन Kios यहाँ पे पिक करने की कोशिश, यहाँ पिक निकालने का बेहतरीन पिक था वो, लेकिन Boros इतना एग्रेशन दिखा रहे, शॉट नहीं कर पा रहे. और Boros की हम बात कर रहे थे, एनालिस्ट भी STY फाइनली वो राउंड निकाला, और यही चीज की जरूरत थी मॉन्टे को. 2-3 राउंड और शायद उनको कॉन्फिडेंस मिल पाए कि वो गेम को धीरे धीरे करके अपनी ओर खींचते चले जाएं. लेकिन Boros, you can't be missing those shots, buddy. हमारे एनालिस्ट भी कह रहे थे कि Boros के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है, लेकिन एक और उनको आउट परफॉर्म कर रहे हैं. Yeah. But that round was very big. Monte के लिए especially and SDY के लिए. That will rain some confidence back into the team, क्योंकि अभी तक वो पीछे चल रहे थे. अभी के लिए जो भी वो ट्राई कर रहे थे काम नहीं आ रहा था. इस बार इट वाज जस्ट प्रॉपर टाइमिंग. अगर वो फ्लैश क्रैसनल की तरफ से थोड़ा पहले भी अगर जाता, मिली सेकेंड्स, SDY wouldn't have seen the players. वो फ्लैश आने से पहले ग्लिमर ऑफ दोस पिक्सेल्स प्लेयर्स का देख चुके थे. फ्लैश आया भी, ही न्यू वेयर टू स्प्रे डाउन, तुरंत उस स्प्रे डाउन की वजह से 2 खिलाड़ी को निकाल के वापस चले गए. Otherwise it wouldn't have happened. But अभी के लिए the audience is trying to rile up all these players, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से पीछे जा रही थी, it can get back in. But जी हाँ, वही सिचुएशन GamerLegion को भी बताना चाहते हैं. You don't have to worry about a lot. And वो cheer करके GamerLegion को यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहते हैं. मॉली को काउंटर करने के लिए स्मोक आएगा, जिसकी वजह से पुशअप कर लेंगे. एंड MQ, he is only good for 1. Kios with a quick trade. इससे आगे कुछ क्या मॉन्टे के पास प्ले स्ट्रैट है, ये जरूर देखना पड़ेगा. They're still trying to keep control of B. सैंडबैग्स की तरफ एक खिलाड़ी जरूर आगे जाने का इरादा बना रहे. टू कीप कंट्रोल ऑफ शॉट, दैट्स गोइंग टू बी Boros. Kios दोबारा सिमिलर पोजीशन पे रहने वाला है, एंड नोबडी हैज सीन हिम बीइंग टक्ड.
बूस्ट ट्राई जरूर कर रहे हैं। नहीं सुन लिया आवाज हो गई इसलिए नहीं करने वाले। जैसे ही उनको पता चला कि आवाज हो गई है, बेल आउट किया। कियोस बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन रिले कर, जितनी बार जरूरत पड़ी बी साइड की इन्फॉर्मेशन रिले करने की अच्छी तरीके से किया। यहाँ पे 2 लोग अभी भी ये साइड पे खेल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, रोटेशन मैनिपुलेट नहीं करने दे रहे सामने वाली टीम को, बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे जिस तरीके से यूटिलिटी का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन SDY फ्लैश जरूर किया है, एक फ्लैश बचाएंगे ई लॉन्ग पिक के लिए। एक और बार कोशिश होगी। वो सो क्लोज यहाँ गैप जरूर निकाला था वहां पे, लेकिन अब धीरे धीरे करके ए लॉन्ग पे पुश करने की कोशिश। क्रैश को जिंदा रहना होगा, लेकिन सुई क्या वो पिक निकाल पाएंगे? जी नहीं, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। 3 किल्स निकाल दिए एक फ्लैश के साथ। टाइमिंग ऑल द टाइम। Boros के इन highly impossible 1v3 clutch फ्लैश किया गया था, प्लेयर को देख लिया था, but the box came in front of his scope, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी को डाउन नहीं कर पाए। Shui, Accor and Kios, they're going to make sure they close this round in their favor, but look at this hunt coming in from Kios। या ये कोई राइफल जो है उनके तरफ से बचा के रखना नहीं चाह रहे। They want to make sure Monte as much as possible financial crunch face करे। Kios सीढ़ी से बाहर आते हैं, उनको पनिश करके दिखा देंगे। GamerLegion with their 8th। फुल पास में टेरेस साइड पे 8 राउंड निकाल चुके हैं ये। हमने देखा था मिराज पे भी सीटी साइड पे काफी एग्रेशन दिखाया था। एंड स्प्रे ट्रांसफर किया सुई ने, पहला किल नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो स्प्रे ट्रांसफर काफी ज्यादा डैमेज दिया था सामने वाले टीम को, सामने वाले प्लेयर्स को। बेहतरीन तरीके से देखिए कितनी ज्यादा खुश है। परफेक्ट फ्लैश है, उनको भी आइडिया है। कियोस वंडरफुल फ्लैश। अब मॉन्टे को प्रेशर होने वाला है। MP9, फमास, स्काउट, ऑप, 5 प्लेयर्स के पास 5 अलग अलग वेपन्स है। ओह ये देखिए, oh my goodness, actually gets one। Oh Boros puts another down, but क्या ही बेहतरीन डिसीजन बना गया था। अगर किल निकाल लेते वहां पे ईमा, it could have been another different scenario, but Kios देखिए he make sure उनके टीममेट का जो ये किल था उसको ट्रेड आउट कर देगा। ईमा ऑलरेडी dealt damage to DemQ जब वो जंप्स हो रहा था, एंड अभी के लिए डबल डाउन कर लेंगे। प्लान कर रहे थे, बट ही डिसाइडेड टू चेंज हिज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ कहां पे वो स्पेक्टेट कर रहे थे। प्लांटर को बचाना चाहते थे, बट यूइन व्हाट एन अनप्रेडिक्टेबल पोजीशन। वोरो के ऑफ को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे। इट्स अ 1v2 सिचुएशन फॉर SDY, एंड उनके हाथ में स्काउट रहने वाला है। CT को ही होल्ड करते हुए नजर आएंगे। ग्रेनेड फेंका जाएगा, रिडलिंग हिम विद यूटिल, बट फिर भी ही पिक्स अप 1। एक और doesn't have a lot of health। AWP को रिकवर जरूर कर लेंगे। Can he get this defuse? No hit, no time। He might just go down to it। और एक और punishes him। 9-3 का स्कोर लाइन यहाँ पे बनाते हुए GamerLegion running away with this map is at least first half में। वो एज पे चढ़ना चाहते थे बनी हॉप करके, लेकिन बनी हॉप मिस हो गया। लेकिन कियोस के जो 2 किल से बहुत क्रूशियल एग्रेशन दिखाया जब जरूरत थी उनकी टीम को पुश करने की। पुश किया वो 2 काफी क्रूशियल किल्स मैं कहूंगा। एंड मॉन्टे आई थिंक अब धीरे धीरे दे फॉलोइंग अपार्ट। प्रेशर उनके मुंह पे नजर आ रहा है, जिस तरीके की गलतियां हो रही है इट्स टेकिंग अ टोल ऑन देम। 9-3 मॉन्टे, एक चमत्कार की जरूरत है उनको। वॉर को बूस्ट दिया गया यहाँ पे। एक ग्रेनेड SDY मैक्स 7 के साथ, जिसे हम स्वैग 7 भी कहते हैं, लेकिन शायद ये बूस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। जी हाँ, आइजैक व्हाट इन द वर्ल्ड। आई थिंक फिलहाल ये डेथ मैच खेल रहे हैं यहाँ पे, सर्वर पे सिर्फ डेथ मैच चल रहा है। आई एग्री मम्बा। आखिरी 2 खिलाड़ी बचने वाले हैं। एक खिलाड़ी A की तरफ से पुश करते हुए आ रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी क्रासनल। दूसरी और DemQ वो फंसे हुए B की तरफ। Isaac is on the hunt. He's already gotten 3 of the round. आखिरी 2 खिलाड़ी है, अगर मिल जाता है he'll get the entirety of the team in a single round.
5 kills अपने नाम करते हुए नजर आएंगे. It'll be huge. And double digits in the first half. और भी 2 राउंड है हमारे पास इस फर्स्ट हाफ का, एंड आई थिंक अभी के लिए GamerLegion विल बी सुपर हैप्पी ऑफ हाउ एवरीथिंग इज फ्लोइंग इन देयर फेवर. ट्रांसनल बैकिंग ऑफ, एंड यहाँ पे GamerLegion उसी डायरेक्शन पे बढ़ती हुई लॉन्ग की तरफ से. दे लुकिंग फॉरवर्ड टू एन ए प्लांट. या 2 versus 5, लेकिन फिर भी कितनी ज्यादा डिसिप्लिन के साथ जा रहे. स्मोक किया बैंक को, एंड ईमा शॉट होल्ड करे. दिस मैन एक्चुअली बी अ फ्री किल फॉर हिम. 2 kills, एक जरूर निकाला. दूसरे प्लेयर उनको पता उनके पीछे है, लेकिन टेमक्यू को बहुत ज्यादा डैमेज दिया. यहाँ पे 11 HP पे सर्वाइव कर रहे हैं. इन्फॉर्मेशन रिले कर दी गई है. नाइजैक एंगल होल्ड करेंगे. आइडिया जरूर है, प्लेयर शॉट पे इंतजार कर रहे हैं उनका. क्या वो पुश करना चाहेंगे, क्या वॉल बैंक करना चाहेंगे. यहाँ पे पतली सी दीवार है. टेमक्यू अभी भी नहीं जाना चाहते, लेकिन सुई, ओ माय गुडनेस, ये काटना चाहते हैं इनको. नाइफ करना चाहते शायद. जी हाँ, नाइफ करना चाहते थे वहां पे, लेकिन इंतजार किया. अगर मौका मिलता उनको तो भाग के चले आते नजदीक, लेकिन कोशिश के 10 मार्क दूंगा मैं उनको. ज्यादा हेल्थ भी नहीं था. अगर वो भाग के चले जाते हैं, एंड इफ यू वुड हैव इवन कनेक्टेड वन फ्लैश, आई थिंक उनको वो आसान से मिल जाता था. पर इज़ैक, व्हाट अ प्ले. मतलब प्रेडिक्ट किया शॉट आया मैक्स 7 की तरफ से, बट फिर भी तुरंत उस खिलाड़ी को डाउन किया. देन ओपनिंग द डोर टू फाइंड बोरस. इनसेन इजी पिकिंग्स. एसपी भाई उनको भी पता है, ही जस्ट ट्राइड टू आउटस्मार्ट देम एंड ट्राई टू पुल ऑफ अ वियर्ड राउंड. काम नहीं आया. मॉन्टे विद अ ह्यूज डेफिसिट. 7 राउंड के डिसएडवांटेज के साथ रहने वाले हैं मॉन्टे. एक और ने जिस तरीके से खेला वो राउंड, खास तौर पे जो 180 फ्लिक मारा था, बेहतरीन था. और ये मॉल्टोव, आई थिंक एट दिस पॉइंट इट्स जस्ट टू बेट आउट द यूटिलिटी. यहाँ पे एक और मॉल्टोव मारेंगे ताकि नजदीक से जो भी एंगल वो क्लियर कर पाए. ईमा, आई डोंट इवन नो हाउ, बट हमेशा ये फ्रैग्स निकालते रहते हैं. पहले मैप में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था इन्होंने, दूसरे मैप में भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करे. यहाँ पे सुई, ये नहीं मिस कर सकते, बिल्कुल नहीं मिस करेंगे. किल निकालेंगे, एंड एक और बार GamerLegion 2 man एडवांटेज है उनके पास. पता था इकोनॉमी आएगा तो पुश जरूर करेंगे. क्रासनल एटलीस्ट टेक्स डाउन एक और. तो दूसरी ओर से बहुत तेजी से कनेक्टर की तरफ पुश करने का इरादा बनाता है. बहुत साउंड कर चुके थे. इज़ैक इज डाउन, बट नॉनदलेस दूसरे प्लेयर उनके पोजीशन में आ चुके हैं. सुई एंड ईमा, दे टेक डाउन एंड पनिश द प्लेयर्स जो पुश करके आए थे. आखिरी खिलाड़ी टेमक्यू उनके तरफ ही आ रहा है. C4 भी उनके तरफ आ रहा है. इट कैन बी आइसोलेटेड 1v1. वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे. ईमा वाज नॉट रेडी फॉर द ड्यूअल, बट अभी ईमा कॉल दे चुके हैं. उनके टीममेट्स तो देखिए बहुत तेजी से बी की तरफ बढ़ रहे हैं, विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम, विदाउट इवन थिंकिंग कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मौका ढूंढना चाहिए. दे जस्ट गोइंग टू सिक्योर अ राउंड इन देयर फेवर. बहुत तेजी से भागते हुए टेमक्यू भी जरूर आ रहा है, बट ही इज एक्सपेक्टिंग थोड़ा ओवर एग्रेशन, एंड ही इज राइट ऑन इट. सीटी पुश करते हुए नजर आ रहा है GamerLegion. फर्क नहीं पड़ने वाला है कोई भी पुश करे ना करे, क्योंकि जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है मॉन्टे को GamerLegion यहाँ पे, उसका तोड़ मॉन्टे के पास नहीं है. एक राउंड निकाला था इको पे, लेकिन उसके बाद वापस उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया. एंड GamerLegion इज टॉइंग विद हिम. माइस ने बोला था कि GamerLegion ऑन ओवरपास ये एक ऐसी टीम है जिसको बीट करना बहुत मुश्किल है. मुझे लगता है कि अगली बार अगर ये मैच जीते एंड दे गो इनटू सेमीफाइनल्स, ओवरपास इंस्टा बैन होने वाले हैं इनके सामने. I would rightly say so. जिस हिसाब से GamerLegion खेल रही है, irrespective that they're getting pressurized and forced and dumped with util, they're ready for a spray down and a gun down. अभी के लिए तो outclassed नजर आ रही है. There's nothing that Monte is able to do. 1-2 किल मिल रहा है, उसके बाद डबल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं. क्रंच फेस करते हुए नजर आ रहे हैं GamerLegion की तरफ से Monte. 11-3 fans, yes, they will be disappointed. जिस हिसाब से Monte का ये सफर रहा है. First map was at least some kind of a contest, but yes, second, no question, but एक और, what was that? एक और, my guy, एक और, He goes for another! एक और kill.
जितनी तारीफ करे उतनी कम है इनकी। रनिंग अ राइट राइट नाउ, पहला किल निकाला, दूसरा किल भी निकाला, एग्रेशन दिखा के यहाँ पे क्या थोड़ा स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन जितनी तारीफ हम वॉरो की कर रहे थे कंपैरिजन में एक और जिनको प्लेयर्स व्यूअर्स क्वेश्चन कर रहे थे उनकी पोजीशन को, माउस स्पोर्ट्स के अंदर भी इस टीम के अंदर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। Boros. Some kills to kind of feel good. That's all I can say. 2v1 situation. Monster की तरफ से push कर रहे हैं. She will try to check that. बक्से के पीछे से छुपे हुए. He might expect that, but it's all about timing. He's actually not at all peeking. Boros picks up one. He'll not expect CU in that position. First half का score 12-3 के साथ GamerLegion बहुत बड़ा डोमिनेटिंग हाफ सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। देखते रह गए Monte, nothing else. They were able to do nothing. जो भी हो रहा था, they had to accept it. कॉलेज एग्जाम की याद आ गई जिस तरीके से मिड राउंड पढ़ाई चल रही है इनकी। Maybe this one comes up upside down for the T's. This could be the time that the pistols end up working out. USPs find two. And Isaac now so busy that he lets his guard down. 20 seconds. And finally, they have it so close, but they don't overextend. There's nowhere for GamerLegion to go. Either cut your losses, or you're going to fall on the front of that A site. Monte! Bounce! Krasno hanging on to it. Flash is great. Oh my God. But Shuhei with Lady Luck on his side stops that second rifle from finding any impact. And now just USPs. Not meant for this one. It is a flawless round from GamerLegion. बेहतरीन परफॉर्मेंस था GamerLegion का पहले हाफ में, काफी डोमिनेटिंग प्रदर्शन, और एक और ने जिस तरीके से वो पिक निकाला पहला और ये दूसरा पिक भी, कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। और ये अनुभव सिखाते हैं आपको कि आपकी जो स्किल सीलिंग है उसको आप कितना पुश कर सकते हो, आपका जो इंडिविजुअल स्किल है उसको कितना पुश कर सकते हो। लेकिन ट्रेड निकाला यहाँ पे आइजैक ने, बहुत क्रूशियल ट्रेड था, अगर वो नहीं निकालते तो शायद राउंड वहां पे गवा देते। लेकिन वॉरो कोशिश जरूर करी उन्होंने, एक किल निकाला, दूसरा नहीं निकाल पाए, ट्रेड हो गए तुरंत। और यही खासियत होती है बेहतरीन टीम्स की, गलतियां नहीं करते, जगह नहीं देते सामने वाली टीम को। आप देखिए वहां पे रेडी थे जब वो लास्ट राउंड पे भी कि एक खिलाड़ी स्विंग करेंगे तो दूसरे खिलाड़ी तुरंत उसके ट्रेड निकालेंगे इफ दैट प्लेयर गोज डाउन। वही हुआ, सुई अगर चाहते तो वो जंप ही कर सकते थे बक्से से पीछे, बट ही डिडंट, जिसके वजह से वो वाज नॉट इवन प्रेडिक्टिंग दैट पोजीशन। बट एक और चीज है मांबा, एक और का कहीं ना कहीं ना मैं हिंदी अनुवाद करना चाहता हूँ, एक और ऐसे एक और करके किल्स कर रहे वो। आई थिंक पिछले मैप में हमने जैसे देखा, इट वाज एन इनसेन परफॉर्मेंस कमिंग इन फ्रॉम ईमा, इस बार एक और करते हुए नजर आ रहा है। एंड देयर इज नथिंग दैट कुड स्टॉप GamerLegion, वही नजर आ रहे अभी के लिए। तो आई फील लाइक Monte have very fewer chances, कोई भी लक यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, कोई भी जो स्टैट्स अभी तक उन्होंने ट्राई किया है इज नॉट वर्किंग आउट। अग्रेशन थोड़ा आया था, बट उस अग्रेशन को थोड़ा ज्यादा करते हुए नजर आ रहे थे Monte, जिसको हर वक्त पनिश करने के लिए तैयार थे। एंड इवन दैट इनसेन शॉट जो एक और पुल ऑफ कर रहे थे, जो खिलाड़ी हेवन से छलांग लगा के सीधा मॉन्स्टर की तरफ आ रहे थे, ही पिक्स अप दैट। अगर ऐसे इनसेन शॉट्स ना सिर्फ वो, कियोस, सब एक खिलाड़ी पिक कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाट Monte have. Well, एक और का हमने हिंदी में अनुवाद किया था, और वही मैं जब कास्ट कर तब भी मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि एक और एंड उन्होंने निकाला वो पिक। और आप हेवन के प्लेयर की बात कर रहे थे, लेकिन वो हेवन प्लेयर के लिए हैवान साबित हो रहे थे वो। थोड़ा बहुत वोट हम भी कर लेते हैं। यस, चांस मिल रहा है, क्यों ना करे मामा। Of course, but ladies and gentlemen, 12-3 का स्कोर लाइन GamerLegion CT साइड पे, और पास पे वो भी
लॉकडाउन कर सकते। 4 लोग खिला रहे बी साइड में, बहुत पुराना मेटा होता था ये 4 लोग खेलना। परफेक्ट रीड, एब्सोल्युटली परफेक्ट रीड। के पास 2 फ्लैशेस अवेलेबल है, जैसे ही पहला कॉन्टैक्ट आता है फ्लैशेस आएंगे। लेकिन क्या यहाँ पे डबल गेस कर रहे हैं अपने आप को। स्मोक आया, फ्लैश भी आएगा, फ्लैश का इंतजार, फ्लैश आएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइजैक फिर भी एक किल निकालेंगे। दूसरे फ्लैश की जरूरत, क्या वो खेलने वाले हैं? Zach is still playing, वहां पे 3 निकाल के चले जाएंगे। He brings it down to a 2v2 जहां पे वोरो is super low। पोजीशन देखिए सीटी की तरफ ऑलरेडी ईमा आ चुके थे, प्लांट करेंगे C4 को, बट कैन ही होल्ड दिस ऑफ? हेवन की तरफ एक खिलाड़ी है, सीटी की तरफ एक खिलाड़ी है। He needs to force this duel and bring it to a 1v1 और he needs to make sure कि यहाँ पे और टाइम वेस्ट करवाए। किट अभी भी SU के पास, so they can be okay with the time being wasted। दोनों साथ में पुश करेंगे। आई थिंक इसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल रहेगा। SDY is tucking tail and running away, trying to buy time, but वहां पे देखिए किट होने की वजह से बहुत तेजी से डिफ्यूज करके दिखा देंगे। एंड GamerLegion secure the pistol for themselves। 13-3, they're not letting Monte get anything। कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। Isaac to play this pillar for so long, too good। मतलब उनके फ्लैश आने से पहले GamerLegion के फ्लैशेस आ रहे थे, जिसकी वजह से आइजैक को मौका मिल रहा था। You can see why SDY is angry। They're just tad bit quicker, GamerLegion। नॉट जस्ट क्विकर, उनको रीड कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से रीड कर रहे हैं। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ईमा एग्रेशन दिखा तो ये ग्रेनेड ज्यादा डैमेज नहीं देने वाला, बट एक और उनको जिंदा रहना पड़ेगा। अगर वो वहां पे टेक डाउन होते तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन C4 प्लांट किया, तुरंत फोर्स किया इन्होंने। बाय द वे C4 प्लांट करने से जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा डॉलर्स मिलते हैं आपको, उसके साथ साथ यहाँ पे गन्स खरीदी है। एंड सीटीज ने भी एक्सपेक्ट किया था कि फोर्स बाय आ सकता है। Boros waiting for that flash। आया but he's still good। Oh, nice grenade connection। आधा से ज्यादा HP खो बैठेंगे। ट्रक की तरफ एक खिलाड़ी छुपे हुए। कैन ही फाइंड दैट प्लेयर? पोजीशन जरूर पता चल चुका है। बॉटम से पुश आया, एक और टेक्स डाउन क्रासनल। बैंक की तरफ खिलाड़ी थे कियोस एंड ईमा। नाउ दे जस्ट टेकिंग एंड सेंडिंग मॉन्टे बैक टू देयर टी बेस। कुछ करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। GamerLegion वाइप देम आउट साइड के नजदीक आने से पहले and get their 14 on board। 2 ही राउंड दूर रहने वाले GamerLegion। what a performance। मैंने इनकी पिछले गेम्स भी देखा था, इतना बेहतर नहीं नजर आ रहा। they were having troubles whenever they faced their opponents in the legend stage, challenge stage, but I think अभी के लिए जिस हिसाब से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, it is just too good। Another round, Sui starts off with the first। क्या दूसरा ले पाएंगे? Isaac का साथ मिलेगा। And जी हाँ, with the grenade they pick up one। Ema tried his best, but oh no, the flash no workout। He hasn't seen none other than that they're backing up and like dump करो, util throw करो, and that it brings GamerLegion to match map series point। जी हाँ, लेकिन जब भी क्राउड इस तरीके से रिएक्ट करता है, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, बिकॉज हर एक मोमेंट आप एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्राउड पूरी तरीके से चीयर करते हुए। मॉन्टे, उनको चमत्कार से भी ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे कमबैक करने के लिए, टू पुश दिस टू द थर्ड मैप। जिंदगी का सबसे बेहतरीन काउंटर स्ट्राइक खेलना होगा उनको अगर यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं तो। लेकिन उनके चेहरों पे दुख नजर आ रहा है, उनके चेहरों पे प्रेशर नजर आ रहा है, निराश, हताश। लेकिन इट्स नॉट ओवर येट, इट्स नेवर ओवर अंटिल द फैट लेडी सिंग्स। अभी भी एक मौका है उनके पास और ये एक मौका मिलते रहेगा जब तक ये एक एक राउंड जीतते रहेंगे। लेकिन क्या मॉन्टे को मौका मिलने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल। जैसे आपने बोला, मॉन्टे दे नीड टू बी फ्लॉलेस इन देयर एग्जीक्यूशंस। एक एक राउंड लेते हुए नजर आना पड़ेगा विदाउट इवन मेकिंग अ स्मॉल मिस्टेक। अर्ली फ्लैग नहीं खोना है, यूटिल वेस्ट नहीं करना है, एंड दे हैव टू गेट दिस ड्रीम कमबैक। बट जिस हिसाब से GamerLegion खेल रही है, शॉट की तरफ इंतजार, बोरोस को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। डेमक्यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड, बट
उस crossover पे देख लिया Kios ने, and he now wants to challenge a duel. Kios, he actually gets Voro, not DemQ. CU gets DemQ. आखिरी दो खिलाड़ी माम्बा. GamerLegion super happy. Fans का वहां पे देखिए वो चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं. गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट उनको पता है GamerLegion, they've got this. One round at a time. That is all they need. Krasnal के ऊपर बहुत प्रेशर होगा यहाँ पे. उनके पास राउंड्स है लेकिन वो क्लोज करना चाहते हैं. No doubt about that. और team damage. बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके पास. बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर. लेकिन क्लोज नहीं कर पाएंगे. And Monte, they should be happy. जिस तरीके का उनका रन रहा है, एक्सपेक्टेड नहीं था. लेकिन देखिए निराश जरूर है कि their run had to end over here, लेकिन at the same time गर्व नजर आ रहा है उनके मुंह पे. जिस तरीके का प्रदर्शन था उनका, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनको देख के, because ये टीम once again came in as underdogs but they were in red hot form. बहुत मेहनत करी, बहुत मशक्कत करी, मेजर के प्लेऑफ्स तक पहुंचे, क्वार्टर तक पहुंचे. गर्व जरूर होना चाहिए उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर. Yep. देखिए दोनों का जो सफर था, it was not that great, but again जैसे challenger stage as well as legend stage का अगर बात करेंगे, GamerLegion did not have a great time. They finished at 8, barely qualifying from challenger stage. उसके बाद legend stage पे they came in 5th, one position lesser than Monte themselves. But I think जो growth रहा है GamerLegion का throughout this last major, it has been insane. And अब जाके quarter finals में ऐसा प्रदर्शन करने का मतलब एक ही हो जाता है कि GamerLegion are looking forward to a trophy, looking forward to this major title. What a play! I mean, अभी भी मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि गेम बाकी है. GamerLegion made us feel like ये गेम थोड़ा incomplete रहेगा because it did not feel a challenge at all for them. जी हाँ, चैलेंज होने का एहसास तक नहीं होने दिया, लेकिन डोमिनेट किया है. एनालिस्ट भी कह रहे थे कि जिस तरीके का डोमिनेशन दिखाया यहाँ पे उन्होंने, शानदार था, बेहतरीन डोमिनेशन. लेकिन ये ट्रॉफी, इस ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं. जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे आते, जितने भी प्लेयर्स काउंटर स्ट्राइक प्रोफेशनली खेलते, एक सपना होता है मेजर की ट्रॉफी उठाने का. और चलिए देखते हैं स्टेज पे क्या बात हो रही है. SDY with me here, and I got to start by saying this: on the first map, you certainly looked good. It was looking competitive at the beginning, but on your CT side, things were quickly falling apart. What did you put that down to? To be honest, we need to rethink. Like after like 1 hour or 2, right now you can't properly think about it. But overall, we didn't have that fire moral to win this game. I feel like, and that was our problem. And we spoke about this before. I was saying when that Na'Vi game came in, you guys wanted it. We saw that passion. Did you feel like some of that energy was missing today? Yeah, we played differently for sure, like I can say. And props to GamerLegion. They play insanely well. Like they read us, they do everything correctly, perfect. So props to them as well. And in terms of going into the second map, overpass, you guys didn't seem in it at all. Would you put that down to more of the pressure of the stage, the pressure of feeling when you're going down so far? Maybe it's a mix of the pressure and overall how we individually play that game, because we did too many entries, too many mistakes that you can't forgive in this level of game. But overall, looking at your major experience you had here, how would you round it up? How would you sum it up? Because you guys beat the odds. You did better than what most thought. Overall, personally, I'm really happy. I'm proud of the boys, how we play this game, how we approach this tournament. And Viva la France, Slava Ukraini! Now we've got a big fan favorite here. Kios, you've got the arena on their feet right now, and that was one hell of a performance. But just for you personally, how nice is it to have these guys completely on your side? I honestly just fucking love it. And they love you as well, that's for sure. Now this game, okay, Mirage was close, but you guys came in swinging. You guys came with huge confidence. It didn't look like the stage changed anything for you guys.
No, not at all. We just played as it was another day, another game. But with this crowd, it's even more amazing. And mate, you said to me just a few days ago when we were at the Legend stage, oh yep, I've got plenty of energy, my voice is still there. Your voice seems to be doing better than mine. You're fully ready for this? Of course, I'm even more ready for tomorrow. Woo. And I think they're going to be ready for you as well. But on Overpass, you seem to have their number. Not even their heavy hitters could do anything against you. At what point did you know, okay, we've got this, this is easy? I don't know, I felt like we had a lot of more composure than them, and I don't know, I just felt like we got it. And do you think that you're going to have the crowd on your side going up against Heroic tomorrow? Of course. Do we agree, crowd? Anything you want to say to all the fans out there for you, Kios? Merci pour tout le soutien, c'est trop important pour nous, moi et mon équipe. Et à demain pour encore une meilleure game. That's what needs to be said. Kios, congratulations. Welcome to the semi-final, man. An utter massacre on their own map pick and full steam ahead to the semi-finals. GamerLegion painting the town red on Overpass and confidently doing so in just 2 maps. Maui, you promised us a Shuhei T-side masterclass. We damn well got one on that map. It's just beautiful stuff from Shuhei. I mean, I gave one stat of going into this one that I wanted people to pay attention to, the 4v5 percentage from GamerLegion, and they did even better. Over half the rounds in this series where they lost the opening pick, they still won the round. Shuhei's calling was exceptional. Every time he understands where his opponents are, he knows what he wants to do with his players in order to get the most out of them. The rounds that Monte won in this one. Which ones? There were barely any. That's why you can remember them so vividly. The fact that it was a USP stack on a bomb site and SDY pushing a smoke for a Miracle 2K. Through and through, GamerLegion by far the better team here. Imma doing God's work across both maps, but Shuhei this time around, he was in his bag as an individual. 19 kills, 8 deaths, over a 2.0 KD, and what's so unfortunate for Monte in this one is we kept saying Boros' name. He was nowhere to be found on this map, and that's what we've been painting, this picture that Monte is this singular spear that really relies on that singular point of Boros, and when he doesn't show up, this is what happens. There is no secondary plan, and Monte, they've been running off fumes for this event. They have been running with momentum, that Boros has a couple of cheeky plays here and there, and if that doesn't work, there's just nothing left in the tank, and that is unfortunately what we saw from them there. It has been a beautiful run for Monte overall to get this far, but this was always going to be inevitable, at least on Overpass. Yeah, I mean, you had to stay alive on Mirage. I think this is the story of that quarterfinal. Yeah. We know that there is discrepancy in how you can utilize that playstyle from Monte. You can utilize this fire and this raw skill that they were bringing to the table. I think Shuhei did a beautiful job at containing that on Overpass, and I agree with you comprehensively. Just GamerLegion understood the map much better, knowing what part of the map you can take, at what cost, at what speed. What do we do with that map control? What do we do with that space we've taken? Do we wait for the punish? Do we push our advantage? More often than not, they made the right decisions. How many times in this game did we see Monte with 3 passive players on the A side, just waiting for an execute to come their way, and just basically letting go of the mouse and the keyboard? Because that's it. The util is right, the pathing is right, the trading is correct, and you just see it happening as if you're watching a movie. There's no doubt to the issue. And Matthew, that's exactly what you were prefacing coming into this, right? You were saying if Monte have any hope at giving anything to GamerLegion on their map pick of Overpass, it would be, you know, throwing some random plays their way, right? Not playing super passive, maybe getting aggressive in that situation. They just were not able to do that. No, they were not able to. And I'll be honest, I understand when SDY says, you know, we didn't came into this game with the same, like, fire moral. He used these words. I can appreciate it, but I'm also kind of upset about it. Yeah. Part of me wishes that they actually had come in to this quarterfinal with the same rage, trying to put it all on the server and trying to fight back. You're outmatched tactically. I can respect that. That's the case on Overpass. No one is going to discuss it. GamerLegion is miles ahead of you. But go in and swinging. Like, go down fighting. Try something. Put it all on the table. Gamble. It felt like they were very patiently and kind of calmly waiting for this game to end on Overpass, and that worries me a little bit, that concerns me a little bit. Still, GamerLegion, very respectful victory. The way I would characterize these two team styles is that
GamerLegion is playing what we've seen so many tier 2 teams that have caused upsets do. They have a deep playbook, they have a lot of ideas out of spawn, and they've drilled themselves by coming up with reactions to different ways that a round is going to break down. Monte are playing like a tier 1 team, but they don't have tier 1 players. When we watch FaZe fall apart versus Heroic, it's because they're playing back a lot of the time. They're just waiting for the action to come to them, and when that happens, you bet Shuhei is just so excited. He's like, what? You're giving us all this map control? Wait, what? You're not going to contest us here? You're not going to re-aggress? Okay, I'm just going to exec into your bomb site. And Shuhei and his team had enough nades that other than the one slip up on against the USP stack, it was pretty much just clean. Anytime they wanted to get into a bomb site, they had the right mollies, the smokes, the flashes they needed to burst it open. Do you feel like we have gotten our answer to the most important question, which is there any contender for Heroic? Because that was one of the questions that this quarterfinal also entailed. Yeah. We are looking for a team to be or not to be able to squash the hopes of Heroic. And my problem is, I don't feel like Monte's gave up enough of a fight for me to stand here and say GamerLegion can do it. It looked a little too easy. They weren't really pushed. Do you think that GamerLegion here runs a Heroic for the money? This doesn't answer any questions I know, for me. I know what the semis final matchup is going to look like. I think that Heroic has a wider map pool than Monte. They're not going to look as shell-shocked when they get into an uncomfortable map because they don't have any uncomfortable maps. They can play all the 6-1s that they go for. So if GamerLegion want to go for a similar pick, go for a similar style, what I want to see and what I'm excited about is how Heroic are going to throw their own plays at GamerLegion because Monte looked flaccid on that map. But what we were weighing up coming into this matchup was, you know, on one side of the equation we had what we thought would be the deadly firepower of Monte, the deadly individuals, versus the team synergy, right? That is what we were praising for the side of GamerLegion. But the individuals also did shine as well, alongside some really great calling from Shuhei. The GamerLegion had both of the best of both worlds. We trying to put this stage as in, yeah, gameplay on one side, fire on the other, discipline and kind of protocols, skill on the other. It turns out GamerLegion had both. I mean, should we talk about Ima, who finishes with a 1.78 rating in a quarterfinal? 1.78. Like, how ridiculous is that number? And he truly had it all once again on Overpass. He might have been a step below what happened on Mirage. He wasn't exactly needed to have the heroic plays that he pulled on the first map, but still, he seemed to have this sweet spot between being aggressive and decisive, but also not making a whole lot of mistakes, being also resilient when they happen. He just literally squashed them. Resilient is a great word, right? Because I know it was short, but it was slightly shaky start for Ima on that first map of Mirage, right? We saw him just getting used to maybe some of the nerves that are going to present you on the most coveted stage in Counter-Strike. Oh yeah, those are in the rearview mirror though, Freya. There's no way that Ima's shaky start was going to persist when he gave himself opportunities. The reason we were almost critical of Ima, or we were ready to pounce on some of those mistakes, is if they kept up, because he was putting himself consistently in advantageous positions, catching opponents looking the wrong way. Even in that highlight package we saw from Ima, I think like 3 of those kills, the guy's just looking the other way. So it's not the same as like Boros, where Boros is taking head-on-head duel and just has to keep up this perfect mechanics to actually give himself and his team a chance. Ima was going to thrive because he played smart CS and he had great aim on top of it. Speaking of thriving, I'm loving getting to see a bit more of Kios as well, because he was a name we were somewhat sprinkling in back in that Legend stage. Overpass was a map that we were really praising him for in a couple of those series as well. But the fact that he gets to flourish and shine in front of what he dubs as his home crowd, Matthew, that's a beautiful moment. That's a beautiful moment for him as well. And what a tale of vindication for Kios. Once again, a player that really struggled to find his place in the French Counter-Strike when long years ago, when we were flourishing, he was trying to make his way, couldn't really do it, and then he had to go through the CIS scene as well, playing in Simon Gaming, had an RMR or a minor at the time with them, and now he's being celebrated on the stage in Bercy, in the Accor Arena, in the semi-final. That's a great tale, and he's kind of the soldier you want to have in your team if you're Shuhei, right? You give him a couple of roles, might not be the most romantic ones or the most under the sun ones, but he'll do the job. He'll do it quietly. He'll have a couple of entries when he needs to. He'll be aggressive when he has to, and he provided quite a lot for GamerLegion. Yeah, I mean, his B lurks there, honestly, were just, I mean, we saw the tap that he got onto Krasnal, going for that jump spot. Kios has been a guy that has also kind of been a slow starter for GamerLegion. So for him to be performing now, it's the perfect time for him to be peaking. Pimp and I were looking at just his ratings on Overpass in the last handful of months, and it's actually not that good. But at this event, he's looking very strong, and that has kind of become this weird X factor that he's powered up right in time for the major. You usually think that's going to be veteran players, but really anybody can do it if they put the time and the work into it. We've really been hyping up this GamerLegion T side, so why don't we put a round under the microscope? We picked up round 11, obviously coming from that first half. Monte win a round, and then GamerLegion are
answer right on back, don't they? Yeah, we're going to see this one play out right here. Early utility being thrown, and Demq right here, he's actually holding a smoke that GamerLegion just pushed through. This was mentioned on the cast by Launders that GamerLegion oftentimes will go for kind of shortcuts across the map. But look at this, when Monte gave them space even in a 4v4, it was the perfect execute. It was that opening kill, and then Shuhei just knew what to do. And the thing is, that showed they were just turtled in the site. Yep. Monte, they never took anything back. Yeah, I like that you mentioned it, because you can look at this two ways, right? One way is just appreciating the execute, and it is true for GamerLegion. Protocol is right, the smokes and the Molotovs being used, the flashes as well. But you have a defense that is basically just very timidly just shrinking in their boots, just waiting for the execute to happen. It's like, that's not, you're never going to win. You are never going to win. And this might just be a meme right now on a desk, but it represents an attitude when you are on the server, right? If you are Monte at that moment, you have to ask for a flash. It's 30 seconds left. You know the execute is coming. You're turtled up in the position. Ask for a flash. Peek. Do something. Your third rotation is coming from CT spawn. Create like a flick-flap movement where we fight from both left and right. They didn't do any of it. They basically waited, prayed to Gaben, and hoped that it would work. And this is straight to hell. You cannot work. Well, straight to heaven, because they will be going to the semi-finals. Man, I imagine what GamerLegion must be feeling right about now. You are in the top 4 of the final ever CSGO major against all the odds. Despite all of the doubters, they managed to make it. Sure, against Heroic, that is going to be a tough challenge. I'm sure we'll be talking about a lot. But the fact that they make it there, that is such a momentous achievement. That is so convincing, too, to pick Overpass, a map that is so consistently, so heavily CT-sided, the most CT-sided in professional play, and your in-game leader and your star players carried you to the promised land. If I am Isaac on GamerLegion right now, if I didn't have the best series, I'm going to believe it's my time to shine in that next series, because you know that Shuhei is going to be calling an A+ game against Heroic no matter what. He dominated Monte with that calling in that map there on Overpass, and against Heroic, sure, it's a different kettle of fish, but you know that Shuhei's going to put up a damn good fight. And a good fight individually as well, right? Like, he can not only can cool great, but he can frag hard too. I like the optimism, I really do, but I believe that the test is going to be How many times are we seeing underdogs, though? Like, how many times at this major are we going to see underdogs actually just upset us? Like, it keeps happening. It's true. If there's one thing we learned from this Legend stage and Challenger stage, it's that nothing is going according to plan. Where's Na'Vi? Where's G2? They all face these kinds of teams. I like the enthusiasm. It can happen. I like the enthusiasm, but I'm thinking under Heroic's pressure. Like, you've seen what they did to FaZe. You've seen what they did to FaZe, and this could happen to GamerLegion. And look, if you're a GamerLegion and you are embarking on this incredible journey that would end up in a final or, Lord knows, a trophy in Paris, it's a series of tests, and these tests are increasingly complicated. You've just survived Monte, and I think you've done it with flying colors. No one is going to hold against you any of that best of 3, but you're going up against Heroic now. The most polished Counter-Strike, most talent distributed from coast to coast on the server, and you'll be put under a new type of pressure that Monte weren't able to apply to you. I think that is the key factor, right? If it was any other Tier 1 opposition, other than Heroic, are you telling me Vitality would be fine? I mean, I don't know. I'm not totally believing in this consistent Vitality force just yet, but Heroic have showed us time and time again that they almost have no issue making it to the Grand Finals. Grand Finals is where they're going to be struggling. It's no secret that Heroic are the most consistent team in Tier 1 CS. It is still, in some ways, a fairy tale to even believe that GamerLegion will defeat them, but the calling that GamerLegion has shown me at this event so far says that it's ready to go toe-to-toe. Personnel-wise, obviously, Stown will be the best player joining that server. Yabby will probably be a better rifler, then Ima, then Kios, then Shuhei. And Cadian versus Accor, Danish versus Danish, but also Cadian just has more big stage experience. But if GamerLegion start to apply that pressure, if they start to show that they can play with the rotations of Heroic, because in some ways also, Heroic haven't been tested. FaZe with one of the more passive teams in Tier 1 CS. They haven't actually felt the amount of plans and stagings that GamerLegion are going to throw at them. I've heard that Don't Stop Believing is Shuhei's favorite song, so make of that what you will. Let's wrap up the conversation about Monte, though, because obviously, you know, they were also an incredible underdog coming into this playoff stage. The fact that SDY manages to, you know, bid the demons of Na'Vi goodbye to just make it here. The fact that we see Boros having some star-studded moments. I'm excited for the future of this team, but it does make sense
sense when we're kind of seeing both these teams collide that they wouldn't be the ones to progress any further? Oh, definitely. It's a very logical result. Now, I do wonder the long-term, or the longevity, rather, of this project. SDY is pretty new in these shoes of an IGL. We'll give him a little bit of time to see where he can take that lineup. There's been, again, discrepancies between maps where they felt really confident and their playstyle has worked, map where it's been a bit more complicated, so we want to see improvement. We want to see them being able to tackle new challenges. I think teams like that have such a clear identity, usually struggle with longevity, because in high-level Counter-Strike, you kind of need to be able to do both. You need to have a couple of different ways you can approach the game, otherwise you're going to be stopped. Individually, Boros, definitely a name we'll remember. We're hoping that he's going to keep establishing himself as one of the very best out there, because that was quite a campaign from him. Boros was easily the show stealer for Monte, but I do have to agree with the sentiment that there's just not any tactical depth that I really saw from Monte. The fact that they played really Mirage, that's just kind of like a map anybody can play at this point, if we're being honest. And then also just Anubis, one that's so easy for T-side map control. That to me is kind of reading as a one-trick team that kind of got here because they just worked vetoes in a particular way. And so for Monte, I will say this. I think that it's incredibly impressive, the run that they put on. The show, the fact that they were able to represent Ukraine and make a lot of people very proud because they took the other Ukrainian team down in Na'Vi. And so that, to me, speaks volumes about the talent that is coming out of that nation. Well, GamerLegion do prevail to net their spot in the semi-final tomorrow, but one more quarterfinal is coming your way. It's Apeks versus Team Liquid after this. A ship that almost sunk during the Challenger stage, Liquid now completely turned the tides to make it all the way to the playoffs.
From 0-2 down to their first major playoff since 2019, it is truly now or never for Team Liquid if they want to etch their name in major history. We see some arrival footage from Liquid this morning. KD also having a cheeky walk around the arena. We've also got another Dane joining us up here. Pimp joins us for Apeks versus Team Liquid, our last quarterfinal, and this one is a tasty one indeed, Jacob. It is a spicy one on a lot of different levels, I would argue. But one thing is the two teams have actually met each other before in this tournament, where Apeks got their first big surprise win against Team Liquid. Another one is what we talked about when it comes to Team Liquid. It seems like it's a complete new team. What we saw in the first couple of days at the major was very roaring. We weren't really sure whether or not Liquid would even make it out of the group stage, but coming into this quarterfinal, for the first time in a very long time, Maui, I actually believe in an NA team. Did I just hear you right, Pimp? Yes, I said it. I said it, and I probably won't say it again. You know, so. Are you just saying that because you played for Liquid? Or do you actually believe this? I actually believe it. Hey? Yes! Okay, we got him, boys. We got him. Pimp believes in Liquid, as do I, of course. I think that it needs no introduction to the fact that Liquid have been the best North American roster for some time now, despite the fact that it has been quite some time since they've actually made it to a major playoffs. It has been since 2019 Berlin, a different look on Liquid at that point. You had a couple different players, but you still have a few of the core members, and they're still contributing quite well. Elige, Naf, Nitro, but there's been a huge facelift. They brought in the young, rising talent in OC, who has powered up throughout this event, and obviously injected themselves with a little bit of Latvian blood, a little bit of aggression, and a little bit of fire in Yakindar. You say they've been, you know, the best North American team by far. I would agree with that sentiment entirely, but it has been turbulent times, right? We talk about a Liquid that you don't know what the hell you are going to get when they enter an event. Sometimes a really slow start, sometimes hot out the gates. We just don't know what type of tide we're going to get. That's true, and like you're saying, right, the best North American team for quite some time doesn't take a lot. There's no one to contest over there. Okay, come on. No, but let's be honest, right? It's still been a rough year for Team Liquid. You look at the players, you are aware of how much these players are getting paid. You're aware of the budgets. You're aware of what Liquid have in terms of ambition. They've not been close winning a trophy yet this year. They haven't really been up there where you expect them to be. So yes, fact of the matter is that they put the bar so low that I now can say I'm starting to believe again, because they're not shit anymore. And that's sort of like how I feel about Team Liquid right now. It's a team that is definitely becoming better and better and better, but I still want to see them beat Apeks, go into that semifinal before I'm really ready to say that it's a team that I have any expectations towards in terms of maybe putting up a fight in a semifinal against Vitality. I have trust issues when it comes to Liquid, to say the least. I don't feel like we can totally rely on them, but I feel like we've seen rather a shift in the tides, and that comes off the back of Yakinda saying, you know, I'm going to take some more control. We've seen that actually shifting up during the duration of this event. Yeah, I think it was kind of a little bit more of a hodgepodge calling between Nitro and Yakindar, because Yakindar at times, I know this team better, I know how to call against them, I'm going to call this game. And now it seems like, just based off of interviews and everything, seems like it's like 80% Yakindar is the in-game leader of this team. Nitro's still contributing. They've said that if anybody has a good idea, they can call it. But the fact is that Yakindar's calling has made Liquid actually, in some ways, look more consistent to me from what I've seen at this event after the opening stage woes. Those were a little bit scary, but after that, it's a completely different team. If we ignore the Challenger stage, Liquid have looked great. Taking Heroic to 3 maps, winning their other maps and series convincingly in my eyes. This is a Liquid that we want to see, and that's why when they see Apeks in the server against them, a huge underdog, one that many would have counted out from even making it to the playoffs. Liquid have to have just blood coursing through their veins right now. They got to rage into this server because they are coming in as a huge favorite. I 100% agree. Liquid is looking much better, and as you said, the only loss they've had in the past 7 games is against Heroic, a team that, let's be honest, they're one of the heavy favorites to win the entire thing, and even that game was very competitive, very close, and one could argue Liquid should have won Ancient, 3rd deciding map. There's one player I want to put a spotlight on towards, though, because I spoke about it during the group stages, and that's Nitro. You said it yourself. We are discussing whether or not he's the in-game leader anymore, how much he's helping, but in terms of individual output on the server, the man on your screen right here is having the best, statistically speaking, event he's had in 3 years and 6 months. More than 1,200 days it is since that Nitro last time had a rating of this size on a LAN event. So yes, whether or not that's because he's individually just hotter right now, he's in a better shape, or he's been freed from some of that in-game leading stuff, I don't know, but it's great to see Nitro play well. And to touch on Nitro's story too, the fact that he took a 16th
month leave from Counter-Strike professionally to play Valorant and come back. Nobody else has done that. Nobody else has had that long away and made a comeback this strong. There's just a couple people out there that have tried it, but no one's come close to the level of success and performing consistently, at least on big stages in terms of achievements and results, as Nitro. When we're talking about, the history, the depth within Team Liquid as well, we have to throw Elijah's name into the ring because we're talking about the best not to have ever lifted a major trophy. Elijah is one of the names we immediately throw into the ring for that. He is, and unfortunately for Elijah and unfortunately for Team Liquid so far in this tournament, he's been struggling a little bit. It hasn't been the same Elijah that we used to see. I would argue even Elijah in some of the rough periods in Team Liquid, he was the one you could count on. We talk about, never knowing what to get with Team Liquid. I feel like Elijah was always a constant. He would always deliver some sort of a level and have a flaw. He hasn't really been playing that well so far in this tournament. That's an issue for Team Liquid, and I think for me, that's what I need to see unleashed as well. If you have Elijah, you have Yakinda, and you have Nafly playing at the absolute best, Liquid can beat anyone. Yeah, and with Elijah's legacy right now, it's up for grabs who is the North American GOAT player. So? I think it is still up for grabs. Okay. I think right now public sentiment has shifted over, and mine as well, that it is Twist right now. But if they actually go on this run, a miracle run for Liquid to power up for this event, if Elijah actually captures that Majors MVP, say he goes unbelievable, ballistic in these playoffs, there's a world where that conversation opens right back up because Twist, he has so many trophies, he has a lot of hardware, doesn't have a major MVP though. He has a major trophy though, and he has not one but 2 Intel Grand Slams. So you think this relies on Elijah actually winning it here to have that conversation open up? Yes, that would open up the conversation, a win. That's why Apeks needs to be a stepping stone for Elijah if he wants to achieve greatness in the eyes of all North Americans. I think there's a bigger chance I'll get a major MVP than Elijah will at this major, to be completely honest. He hasn't been playing well whatsoever so far. I agree with you. Winning this major for Team Liquid, winning this major for Elijah, it would be nice for him. As you can see, he's been at a lot of majors, and there's still a big round 0 next to him. Been in a couple of finals as well, losing to Astralis. We all remember that period where Liquid just couldn't beat them. So it would be nice for Elijah, but I would still argue that Twist for me is the NA GOAT. Well, speak of the man, let's get him on the mic. We've got Elijah, courtesy of Dinko. Well, Elijah, it's the first time you guys have been here at the major playoffs since 2019. I'm sure there's a lot of excitement level knowing that you're going to be walking back out there for the last ever CSGO major playoffs. Talk to me about some of the thoughts and emotions that have run through your head since you qualified for that Legend stage now into the Champions. I think overall we're super happy with how things have been going this tournament as a team. I think that for us to be clawing back from how we did in the Challenger stage, playing well in the Legend stage, I think that everyone's feeling like we're peaking at the right time, and we're here to take the last major. Now you're one of our game's greatest players over a very long period of time. Do you feel that sense of occasion in terms of this is that last CSGO major? Do you feel that sort of emotional level? Yeah, I mean, I definitely do. This is like the one tournament that we don't have, that I don't have, that I really want to be able to get before, the CSGO is completely done. Because when we look back at our careers in CSGO, it's going to be like, were we able to get the last big one, the last big major? And that's what we want to get, and that's what I really want. Now, you're speaking as a team right now, but as an individual, I want to ask you about how that would feel personally, because you've been to the final in 2016 of Cologne. You've been to the playoffs many, many times before in majors, but you've never picked it up. To leave CSGO without a major trophy, how do you think that would make you feel? It would definitely make me feel a lot worse because, I think that the last couple of years have been a lot harder, and not being able to get something out of it at the end would definitely feel devastating. And I feel like there's been good points in time for some of the majors where we were the favorites, or people expected us to win or do better, and it never ended up happening. And then this tournament's a little bit on the complete opposite end of the spectrum, where we're kind of more a dark horse type of team, and it would just feel really good to be able to make it through in that way. And if we didn't get it, it would be a really disappointment. That's an interesting talking point in terms of you're coming into this major slightly different expectations than in the past, right? You're coming in as that dark horse, as you were saying. How does that affect the mentality and the pressure that you feel going onto the stage today? I think that it helps. I mean, it's just an individual mentality. It's less pressure for us. I think that there's other teams that we feel have more pressure, and I think that does give us a little bit of a mental edge, but it's also just however our team specifically is perceiving it. You can feel more pressure if you perceive the games in a different way, and we're just making sure that we're staying grounded with how we're feeling as soon as we go through each match, and trying to do our best to stay in it in that way.
bans rolling in. We've got Ancient, Overpass, and Anubis if we do so need it. Obviously, we saw Apeks and Liquid playing in a best of one to be starting off their Challenger stage run here in Paris. What are you making of this, Vito? I think it's interesting. I think it's fun. I love the fact that Apeks dare to do it again. They know they're facing a different opponent or a different team per se compared to the first time around. But you are Apeks, you are the underdog. You want to go with somewhere you feel comfortable. So the Ancient pick makes sense. And it's not like Liquid have looked like a great team on Ancient ever since. They did lose to Heroic, so it makes sense. What did you then glean from that initial Apeks victory over the side of Liquid? And what did you learn from Apeks throughout the duration of this this major? Because it's another team that we're throwing into the ring that we didn't necessarily expect to be making it to the top 8. In my eyes, I think that Apeks were baited pretty hard by that first victory over Liquid. They played against a NAF that barely even joined the server. That was NAF's worst map by far from what I have seen. I think he had a 0.55 rating in that one. Just terrible stuff. And that's not what they're going to face today. NAF's going to be a different beast today. If Apeks want to win this one, they got to hope, they got to pray that NAF doesn't join the server once again, but that's not going to happen. And so for Apeks right now, I think that they feel confident because they actually do play a good Ancient. They played it against NIP to qualify here for the playoffs, and they just simply threw better nades. They had better lurk timings, they had better individuals, and so they're going to feel comfortable in this one, but Liquid, they're going to play a little bit better, and that was already a close game with NAF not playing. Well, we've got Ancient, we've got Overpass, and then we do have Anubis if we do so get to that third and final decider. So, Danny, what should we be looking out for if we make it to this ground? Something that Apeks has done very well at this event is have these explosive takes on T side. So Anubis is one of the maps in the pool, so I want to break down this round here against G2. So first, let's look at it from HooXi's point of view here to just see how explosive and how the flashes can be so effective, because with these flashes, it just allows them to flood into the site, catch Hunter, and then HooXi gets taken down out of position. But I want to break down the flashes here because they're really the most important part and something that you should pay attention to whenever you see Apeks play. So the first thing we're going to pay attention to is Kixin's flash right here. This is a typical initiation flash. It pops right about here towards the window side. Now it blinds most of this back area here, anyone close towards pillar, anyone here towards that left side. And the timing of this flash allows the first player to come out while this first player who's taking contact gets blinded. This gives them space to come in. Now the next set of flashes to pay attention to is from Knock. Now these flashes are layered in such a way where they pop up high. They pop right about here. The first one's there, second one up here, up high. And what that does is as they come in, the flashes supplement the push, because if any CTs peek from this left side or from this back corner or anyone up close, they're going to get blinded. But the key thing here is that they trust their flashes and they know the limitations. This spot that Hunter's in at dark, the flashes may not get them, but pay attention. Look at all three of these people. They're all looking at him because they know what the capabilities of their flashes are. So when they come in, you can see this from HooXi's point of view. The first initiation flash takes them off the angle. Then the second layered flashes allow the push to come in. And then with all three of these players understanding where the flashes are going to hit, they can all focus in and tunnel in on Hunter. As well, JL's on the side here, even if Hunter manages to get more than one kill. It's all this space from these flashes that allow them to pour into the site and catch these 2 kills. So this is something to pay attention to. It's their explosive nature, and it's all thanks to their flashes. So something that Apeks are going to be very good at, and something that Liquid are going to have to look out for. Excellent breakdown from the Mahone zone, as always. Has that explosivity then, Jacob, for your money, kind of captured your attention about Apeks? Do you feel like that's a reason why they have made it so far in this tournament? Yeah, it's part of it, you know. I feel like all teams are getting explosive. I think we had the conversation as well, one of the desks, that I feel like everyone is looking towards Heroic and try to imitate the way they approach, the way they play Counter-Strike. So, yes, you gotta have a certain aggressive element. To me, it's more so the well-roundedness of this lineup. I think they can do both. I think they have the ability to be aggressive, to be a little bit in your face, but also sometimes to play out the time, feel out the map, and make some good mid-round decision. I think Kixin has been one of the best signings of the year so far. The fact that they remain competitive, got into a quarterfinal here as well, is amazing. Said it a couple of times already, but I assume there's some new viewers out there. Just 8 months ago, 128th in the world, Apeks. 128th in the world, and now they find themselves in a quarterfinal at a major. That speaks volumes to how they've been able to restructure this lineup and become a competitive team. Talk about a glow up. That's pretty epic. I'm just thinking about that fact that you said he's the best signing of the
the year. And it's hard to disagree, because look at where some of these other teams have fell, and where some of the teams that have maybe even made bigger or better signings, how they're not even in these playoffs. And so for Apeks right now, they have a chance. They have a puncher's chance in it. And what Danny was showing so well with the utility usage there on Anubis, they got the same thing on Ancient. It's why they looked like the better team against NIP. It was a miraculous game that they were able to come back in, but it's one that was based off of the fact that they believe in the strategies that Kixan has devised, Cuban has devised with them, and everybody is bringing to the table. So many names that can pop off as well for Apeks. We haven't really talked too much yet about Jacom or about JL, but these guys are such a sick entry duo. When they're in with those flashes, with that utility, with that setup, then that's when Liquid is going to have their work cut out for them, because there is seriously sometimes not a lot you can do when your screen is completely white. We're talking about, you know, such a motley crew, an interesting mix of players uniting once again to be fighting for this major title. You mentioned JChem, obviously Stiko as well. A player that has had such tenure in majors gone by. It's kind of crazy to see them coming up once again with this type of squad. Does feel like he's been around for forever, Stiko, and he's been out of the spotlight for quite some time. We remember him joining Cloud9 as well, which eventually ended up being a failed project. Then he was playing on these tier 2, tier 3 teams, couldn't really find his footing. He's been in Apeks in quite some time now, and as you said, Freya, it's nice to see that if you are persistent, if you continue to work hard, which I know Stiko for a fact is doing, there's still a place for you in top tier Counter-Strike. Individually speaking, he's not at his best right now. He's one of the weak links. I'd even argue for Apeks. I think he's one of those players you single out and you think, if you're Liquid, let's test wherever he's at on the CT side. So that's his weaknesses, but the fact of the matter is he's in a quarterfinal, and that in itself, way above what you could expect. Well, Maui, you threw JL's name into the ring, so let's throw him on the mic, courtesy of Dinko. Well, GamerLegion, you've seen the stage setup, you've seen the crowd. What were some of the thoughts going through your head today when you woke up and you knew you were coming out to play here today? It's crazy. I mean, we witnessed the walkouts yesterday live, and it was crazy. Of course, it was Vitality and Into the Breach. But the energy here is unreal. The French fans love their French teams, and it's crazy. Yeah, they absolutely do, and they've been bringing the energy for a lot of different teams. And I think you guys are a story everyone's going to get behind, a team coming through and maybe not having the most expectations. But I want to talk about being an underdog side, coming onto a stage, maybe with some players with inexperience playing on an environment like this. You've got Cuban standing behind you, a lot of experience, but I want to know about the conversation that you had and the mentality approaching playing on the big stage today, so that your mentality is in check and you don't let the pressure of the moment get to you. You just focus on your game. I mean, you do have your job to do, and my job is to kill, communicate, and just play the game, and just focus on that. It doesn't matter. The crowd, you're going to feel the pressure, for sure, and you're going to be afraid maybe to make a play, but you have to trust yourself, trust your instinct, and let the pressure fuel you, and not to kind of let you down. And absorb the energy and put it into CS. Now, on a personal note, you're going out there onto a major stage. There's going to be a very viewed tournament in terms of being the last CSGO major. A lot of eyeballs on this. Right at the end of CSGO, you've got a chance here to be one of the best players at the last event. Does that fill you with a lot of hype excitement that you can prove yourself to the world? No. I mean, I didn't have the best tournament myself, but we as a team played really well during the RMR, Challenger, Legends. For me, it's not about that. For me, it's just getting as far as we can and just proving that we're worth it, because we play really good CS, in my opinion, and the mental part is what gets to us sometimes. Well, the mental part didn't get to you in that NIP game. That comeback was huge. What did that comeback prove to you about your own team? If we just believe in ourselves, believe in the protocols we have, and we trust that what we've made with this team is right, we're going to do it. And I'm not kidding you, 3-14, I don't think a single was doubted that we're going to lose this Ancient. Well, it's an incredible comeback coming through from you guys to get to this point, but you mentioned that mentality, and I want to touch a little bit more on that, because you're going out into a big environment. In terms of that mentality issues, can you talk to me a little bit about what some of those are? I mean, I think the main issue would be to not focus on the crowd and the arena, because you have to focus on in front of you, and CS is in front of you, and you still have to deliver. And I mean, it's a huge opportunity for me to be on the stage and showcase what we've made throughout all these months that we've been together. And I'm just super happy that we're here. And yeah, I'm just super happy. Well, we can see the words from JL coming in there, and he mentions the fact that Apeks, you know, they came to the arena yesterday. We saw it on a couple of shots as well. So what does that mean, Maui? That was
That was a point where actually I caught Apeks after their big match versus NIP, and we were hanging out with Kerrigan, and they were asking Kerrigan for advice in arenas, and Kerrigan told JL and the rest of Apeks, go to the arena the day before, because you're playing that second day. So if you get to feel some of that energy, then you'll know what it is. You'll actually recognize when you go out for your match what it is to be standing there. And so in some ways, Kerrigan was a bit of a mental coach for them in trying to help them out. So that nerve problem, that crowd problem that JL and Dinko were talking about there, in some ways you would have think that it's a little bit alleviated because they've at least gotten to feel it already, having been here yesterday. Yeah, that's pretty sage advice, rather than, you know, it slapping you around the face when you're doing those walkouts for the first time to probably the loudest crowd you have ever been in front of. Yeah, take some time to soak it up the day before. Why not? It's a great idea. Figure out how you order food, figure out where the toilet is, make yourself comfortable. You know, the essentials. No, but like, yeah, make sure that the essentials are covered in that regard, because you are prone to go to the toilet at some point. So it does make sense, you know, for Apeks to come in here, experience the arena the day before and that. And also, I guess the way and the atmosphere inside the arena yesterday was at peak level, right? So they can also stay at peak level, and then they can walk into the stage today and feel maybe it's a little less, and then by then not be intimidated by it. So yeah, I think that's a great advice for Kerrigan. Cool that he's doing it. Yeah, no, that's pretty awesome. Dinko also asked about that game versus NIP. Obviously, that was to cement their spot in the playoffs, and we've talked about Revenge Arcs in the match just gone by between Monte and GamerLegion. The fact that Nork put his former team to bed in that one, he was very happy about that. Oh yeah, you could see the pop off there at the very end. It was a 1v2 for him to seal the whole game right there. I will say though that in this tournament, Nock hasn't really been the standout that a lot of other oppers are. He still has some of those same habits that he had when he played on NIP actually, where he's kind of just a more passive opper. He's usually in the back lines, and it's usually still, at least with this roster, some of his riflers that are doing the heavy lifting early on in rounds. We've said JL's name, talking about Jacob too, and Nock, you know, he's just that safe pair of hands that more or less is, I would consider him a little bit of a relic from the past, where he's kind of a system opper, at least in my eyes. That's how I feel as well. He's a good player, but he's not that explosive. He's not a player that takes over the game and dictates the game. Neither is OC, for that matter. So I think that matchup in this game is going to be just fine for Nock and OC. It could be cool to see them go toe-to-toe. Without taking away anything from Apeks as well, I do just want to highlight for the viewers at home that what we saw in the group stage in that game against NIP was the fact that NIP were up 9-2 on the first map, ended up losing, and 14-3 on the second map, ended up losing. Yes, Apeks are here in the playoff in the quarterfinal because they deserve to be here. Fantastic resilience, fantastic comeback, but there's a world where they would have lost 2-0, 16-5, 16-5, and we wouldn't even discuss them as a team. So it's remarkable that they were able to do it, but we have also seen Apeks sometimes fall a little bit flat in the beginning of the games, and I'm going to mark my words right here, because if you go behind 14-3 against Team Liquid tonight, you're not coming back. No way. No way. Simple as that. Yeah, we talk about the sustainability, I guess, with a squad that's able to do that. JL saying, you know, all you've got to do is focus on what is in front of you. But in front of them here, it is going to be that crowd, right? Obviously, you know, you have some tenured, experienced names in the mix. You've got Cuban right behind them as well, who I'm sure will be offering some word of wisdom. But who do you think they're going to root for, right? I'm not even sure. I'm not sure. Liquid. I don't know. I think the fans will like Who has the French ties, you know? I don't even... Got to find something there. I think they just like big teams, like how they like FaZe, you know? True. Sometimes they just get fan favorites out there. Or they just hated Heroic more because they can put it up to Vitality. I don't know. These fans are a little bit hard to read, but my money's that they're going to be rooting for Liquid harder. Yeah. Well, let's you throw the AWPers names into the spotlight. We kind of touched upon OC earlier, but I'm really happy that we're finally seeing the kind of, you know, surge in power coming out from him, because he was a name that, you know, fairly, maybe unfairly, we were throwing into the ring a lot and saying we need to see more from this guy when it gets to these high pressure situations. This is his stage to be shining on. I think he's been consistent throughout the tournament. I think the meme surrounding OC has always been the fact that in group stages he's not performing as well as in playoff. We got the playoff OC, and now he's finally entering the stage. Now, if we run by that logic, he's only going to become better, and so far in this tournament he's been very stable, he's been consistent, and he hasn't been a weak link, and that's honestly all I'm asking for OC. Liquid is not a team that is setting up their AWP players that much. It's still about Yakinda, it's still about Nef, still about Elish. So if OC can just be consistent and reliable, that's enough. I think that actually they've changed a little bit, Pimp. I think that they've actually, in that big boot camp they were talking about, we saw a couple things change for Liquid. They changed a couple of spots, mostly just with riflers, but I think that they've given OC a bit more in terms of opportunities, just giving him a few more chances per half to get himself involved. I remember a couple times after timeouts, he's the one that's talking the most, then he goes for an aggressive pick. It hasn't always resulted in the biggest round, but this is OC's best event, if you stopped it right here, since last year. This
This is basically OC coming out to play at the major, a big tournament performance for him thus far, and I expect that he's going to keep it up against Apeks. Perhaps we should ask them, right? Because I've seen the same thing. Question is it OC demanding more space? Is it OC taking more initiative? Or is it Liquid who's actually fostering into him and allowing him to do it? We don't know, but maybe we should ask. Well, it's going to be the last quarterfinal here in Paris. This Team Liquid going up against Apeks. We're going to be welcoming them onto Counter-Strike's most coveted stage after this. The pinnacle of competition. The gateway for legends. Its trophy, a maker of kings. Counter-Strike in my life for 15 years. I've been playing this game for 2/3 of my life. I grew up with Counter-Strike. I got into Counter-Strike because of my brother. My life is Counter-Strike. I live and breathe it. CS will be my life forever.
I didn't really know what I wanted in my life. CSGO was that answer for me. It's what I've always done. It's my whole life. And I wouldn't have most of the things that I have in my life right now if I didn't have CSGO. Years of Counter-Strike majors, 10 years of legendary plays. Paris, the last chance, the last moment, the last time to crown a major winner in our beloved game. Counter-Strike has been part of these players, coaches, the talent, and you guys' lives for so long. An emotional send-off, but on to something that's going to be even better, even bigger. We continue to break viewership records. We continue to show the game in the best way that it can be shown. All of you enjoying this last CSGO major, this is special for these players taking to this stage each and every time. To hear your cheers, to feel the emotions, to see it all go down. Now we've got one more team to make it through to the semi-final. One more team that'll be heartbroken before they can even get there. We've got Apeks going up against Team Liquid. Now I see a good group of different shirts in here. We've got a packed out crowd and it's looking nice. So guys, are you with me? Are you ready? Now, have we got some Liquid fans in the house? And what about Apeks? That's not bad at all. One more time. Liquid! Apeks! All right, as always, guys, I want you to bring the hype for me. Our final quarterfinal matchup. It's Team Liquid taking on Apeks. It's time to bring the hype! This is Apeks. Jacob, he grinded his way to this stage once before. The Norwegian with some Aussie flair, he managed to do it again, and right now, he is the star for Apeks. Nork, karma does exist. He proved it versus his former teammates to secure this playoff spot. Now with the AWP in his hand, can he dig deeper than ever before to get the victory? Kiksan, bringing honor to North Macedonia and leading his team under the watchful eye of Cuban. He's been handling the pressures of his first ever major
beating expectations and focused on his dream. JL, he crowned himself a legend after the Challenger stage. He's full of confidence and positive energy in each and every game. But now, he must showcase his ultimate level and show us everything he's got. Stiko, one of the most experienced players on the roster. His Counter-Strike career has been full of ups and downs, but you never see him frown. He's been here before, and now he's looking to go further than ever. It's time to deliver. Make some noise for Apeks! This is Liquid. Naf, flying high at the major. He never looks stressed, never looks pressured, and holds his nerve. Even with a slow start to the major, it hasn't held him back, and now he's on fire. Yakinda, the Ram Raider, bulldozing through his opposition, still bringing his A-game while taking over the leadership duties that's leveled up Liquid as they've powered through each and every game. Nitro, Liquid and North America's captain, having his best LAN performance since 2019. If he can keep this up, it could be the extra push they need to finish strong at the final CSGO major. Elige, one of the pillars of North American Counter-Strike and Liquid's success. 8 years of competing under their banner, he has one final chance to bring the major trophy home. OC, his development during his time with Liquid has shown that he can weather any storm. And now he's harnessed that power, taking it into his first major stage. Give it up for Team Liquid! Now, going into this matchup, there could be one clear favorite. Yes, Liquid, they have the experience on their side with everything they've done, but Apeks already took them down when it came to a best of one. Anything can happen on this stage. Anything can happen at this major. And we got Kixan and Nitro, the two leaders for the team, up on the stage. Now, Nitro, I'm going to start with you because things have changed a little bit for you, right? The change in IGLing and not being able to do it, but your performances look so much better. How's it feeling for you right now? How's the balance in the team? It's really good. Obviously, I've been IGLing pretty much like my whole career, so it's definitely a difference. This feels a lot different, so I feel like I have more ability to play my own game. Okay. And it's definitely working out so far. For you, Kickstand, you come into this major experience for you. The pressure's certainly high, but you guys have delivered. I want to just talk about your relationship with Cuban and how you guys work together, because he obviously has a huge wealth of experience in the game.
The relationship is, of course, good. He helps me a lot. We have some experienced players like Stico and JCam who are helping us, the younger players, and it's nice to have them in the team. And how much does it help you mentally right now, knowing that you've beat him in a best-of-1 already? Can you repeat, sorry? How much does it help you mentally that you've beaten them before in a best-of-1? I think it will help us. We have some experience playing against some tier 1 teams, and as you said, we already beat them once, so it feels good to play them again. Any worries about when you faced them before, though, Nitro? No worries. We're just going to play our own game just like we've been playing since we're down 0-2. Yes. We've been playing a lot better every single day, and we've had some really good prep the last 2 days since we had 2 days off. We're trying to be as productive as possible. So I think we're going to see a new team today. And it feels like a different Liquid right now. We saw it. We saw you guys kind of ascend throughout the games. Do you feel like you're ready to go all the way this time? Yeah, I'm super confident. So we're just going to wait and see what happens. All right, we'll wait and see what happens on the server. Guys, shake hands. Take your seat. Thank you very much. It's time for us to see how it's going to go. A little rematch, but in a very different environment and a very different way. Liquid taking on Apeks. Let's get it! Let's get it indeed. Welcome back ladies and gentlemen. हम वापस आ चुके हैं ब्लास्ट पैरिस मेजर लेके. बहुत ही बेहतरीन टीम्स जो अभी compete करने वाले हैं. This is going to be a neck and neck competition जो हम अभी देखने वाले हैं. पर इससे पहले मेरा नाम है लूसिफर. मेरे साथ वापस जुड़ते हुए नजर आएंगे माम्बा. How are you feeling for this second showdown? I'm feeling wonderful. Honestly, जितनी एनर्जी पहले मैच में थी, पहले मैच में थी, उतनी एनर्जी लेके यहाँ पे आ रहे हैं सेकंड मैच में. लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है. ये दोनों टीमें, उसमें एक ऑफ कोर्स हॉट फेवरेट्स है, लेकिन दूसरी टीम उनको ग्रुप स्टेज में हरा चुकी है. तो देखना ये बनता है क्या वापस वो रिपीट कर पाएंगे. फर्क कितना है, वो बेस्ट ऑफ 1 था, ये बेस्ट ऑफ 3 है. तो जो वन ऑफ परफॉर्मेंसेज आपको देखने मिलती है वो शायद यहाँ पे देखने ना मिले, बिकॉज यू नीड मोर कंसिस्टेंसी. ज्यादा प्रेशर होने वाला. लिक्विड के पास इतना ज्यादा अनुभव है स्टेज पे खेलने का. हम बात कर रहे थे नैफ के बारे में, बात करते हैं एलीज के बारे में, बात करते हैं एक प्लेयर जो 8 साल से एक ऑर्ग में खेल रहा है, एक ही टीम के साथ खेल रहा है. सबसे बड़ा रन, एंड टू गिव यू मोर कॉन्टेक्स्ट, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव 11 साल से एग्जिस्ट करती है. उसमें से 8 साल एलीज ने एक टीम में निकाले. Huge. I mean, अभी के लिए वही एक चर्चा रहेगा कि क्या देखने के लिए मौका मिलेगा. I've had a chance क्लोजली ये जब पैरिस मेजर ये चल रहा था एपेक्स को देखने के लिए. they've had their ups and downs. मैचेस बहुत क्लोज गए. इट्स नॉट बीन लाइक they've had flawless victories. बहुत आसानी से उनके तरफ आया. they've made comebacks and got their way through, and उसकी वजह से यहाँ पे उनका देखने के लिए मौका मिल रहा है इन दिस क्वार्टर फाइनल्स. एंड अगेन दर्शकों को बताना चाहूँगा दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वार्टर फाइनल, एंड कल से हमें देखने के लिए मौका मिलेगा सेमीफाइनल्स. 3 टीम्स ऑलरेडी वहाँ पे जुड़ चुकी है. आज के दिन में हमें एक और टीम मिलता हुआ नजर आएगा. आई थिंक अभी के लिए जिस हिसाब से ये स्टोरी लाइन बनता हुआ नजर आया है माम्बा, इट हैज बीन फैंटास्टिक. देयर हैव बीन अपसेट्स, देयर हैव बीन गेम चेंजिंग मूवमेंट्स, जिसकी वजह से जो टीम्स हम सोच रहे थे वो टीम्स आगे नहीं बढ़ी, दूसरी कोई और टीम बनते हुए नजर आए. बट देयर आल्सो बीन टीम्स जिनका हमने सोचा था कि यही आगे बढ़ेंगे, एंड दे हैड चैलेंज, बट वही टीम अंत में क्लोज आउट करते हुए नजर आए. बट टुडे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये आखिरी क्वार्टर फाइनल, द 4th वन कमिंग थ्रू. इज इट गोइंग टू बी लिक्विड, इज इट गोइंग टू बी एपेक्स? देखना जरूर पड़ेगा. I'm not sure which team is going to come out on top. Hot favorites, लेकिन Apeks देखिए जिस तरीके से खेलते आ रहे हैं उनको क्रेडिट देना पड़ेगा. You can't count them out. और ऊपर से जिस तरीके का वीटो रहा है, हम बात करें एंशिएंट ओवरपास अनुबिस. एंशिएंट पे पिछले 3 महीने में Apeks 23 मैप्स खेली है जिसमें 70% विन रेट है. लिक्विड 5 मैप खेली जिसमें 20% विन रेट है. एंड अगर एंशिएंट की बात करें तो लास्ट टाइम भी यही मैप पे ये दोनों टीमें मिली थी जब 12-16 की स्कोर लाइन से हारी थी लिक्विड. Apeks बेहतरीन तरीके से खेली थी. सो things like these, right? These are very important. And मेरे हिसाब से ये 3 मैपर होने वाले. Ancient going Apex's way, of course. उसके बाद Overpass जहाँ पे Liquid का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार है, and Anubis probably being the closest of them all. I think so too. But एक बार जैसे मुकाबला हो चुका है ना माम्बा, I feel like maybe Team Liquid is ready. Ancient की शुरुआत होगा and they might bring something new. क्योंकि अभी हम देख पा रहे थे like the previous match that just happened. I mean, pretty sure GamerLegion का first map victory किसी ने सोचा नहीं होगा. But they pull off that upset. उसके बाद वो dominate करके second map भी जीतते हुए नजर आएंगे, and Monte they had nothing to go for. अभी similar reputation हो सकता है. Even though Apeks had a chance, Ancient में they might now fall apart
fall flat. I don't know. वो तैयारी सिर्फ टीम लिक्विड एंड उनके कोच उनके तरफ से पता चलेगा कि क्या तैयारी करके आया है. Are they ready? Because if they're not, it's going to be a tough run. जैसे आपने बोला 3 mapper तो जरूर होना चाहिए. But who knows? Apeks, if they've prepared even better, we might just see a 2 mapper as well. If that happens, I think कोई भी दुनिया में काउंटर स्ट्राइक का प्लेयर नहीं होगा जिसको डायमंड कॉइन मिलेगा पिक एंड चैलेंज में. Well, ladies and gentlemen, let's move in to map number 1 in the last quarter final. Ancient से शुरुआत होने वाली है. ये दोनों टीमें जी जान लगा देंगे यहाँ पे सेमीफाइनल्स में जाने के लिए, मेजर ट्रॉफी उठाने के लिए. Apeks starting on the terrace side, Liquid starting on the CD side. देखना ये बनता है Apeks किस तरीके से इसको अप्रोच करती है. शुरुआत में कंट्रोल जरूर लिया इन्होंने बी की तरफ, लेकिन अब मिड की तरफ जाना चाहते हैं. Aggression बी की तरफ से कैन दे स्पॉट एनी द सॉर्टेड प्लेयर्स. लाइज गेस वन नॉक तुरंत ट्रेड करेंगे. स्मोक ऑफ कर दिया बैक जो है, बट लुक एट द केव पोजीशन. 2 खिलाड़ी पुशअप कर चुके हैं. दे ट्राइंग टू फाइट फॉर कंट्रोल एंड यस दे गेटिंग इट. आखिरी खिलाड़ी सिर्फ बचे होंगे. नैफ ही इज कमिंग ऑल द वे थ्रू मिड एंड यहाँ पे क्या उनको कोई मौका मिलेगा लैंटर्न की तरफ? जी हाँ, एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे. दैट्स JL गोइंग डाउन, बट देयर स्टिल 3 more players he needs to deal with. C4 unfortunately आया नहीं था, but doesn't matter. Snappy shots coming in from Apeks. पहला राउंड लेते हुए नजर आएंगे. एक राउंड हुआ नहीं, ऑडियंस डाइसेक्ट कर रही है उस प्ले को. अभी पैशन देख सकते हैं आप जो फैंस है उनकी. बट जेके ने जिस तरीके से वो पहला पिक निकाला काफी ज्यादा शानदार था, काफी क्रिस्प. बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिस्प शॉट्स. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आई थिंक ये बेयर मिनिमम होता है जितनी क्रिस्पली ये शॉट्स हिट कर रहे हैं, बिकॉज मेजर चल रहा है, आखिरी मेजर चल रहा है काउंटर स्ट्राइक का. जो बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर्स है दुनिया के काउंटर स्ट्राइक के, वो खेल रहे हैं इस स्टेज के ऊपर. एंड जब इतने ऊंचे स्तर की काउंटर स्ट्राइक की अगर आप चर्चा कर रहे हो तो मैकेनिकली तो हर एक प्लेयर बेहतरीन होता है. या इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. अभी के लिए भाई का एडवांटेज उठाते हुए एपेक्स फुल ऑन ग्लिल्स. लिक्विड एक स्काउट जरूर नजर आ रहा है उनकी तरफ से. कैन दे फाइंड वैल्यू आउट ऑफ इट? मिड की तरफ ट्राई किया था दोनों से बाहर आके, बट नो वैल्यू. हाई मिड से ये किंडर, दूसरी ओर नॉक. आई थिंक ही सॉ ग्लिम्स ऑफ इट, बट फोर्स नहीं कर रहे उस ड्यूल को. एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू वापस आ जाते हैं डोर से एंड ही इज ट्राइंग टू पुश अप. barely check him. Spots. OC डाउन हो चुका है. Another challenge coming in, but इस बार नाफ के तरफ से picks up the scout. JKM 29 HP पे बैक ऑफ करना पड़ेगा उनको. He should not overextend. उनके वजह से देखिए ये रोटेशन वो बेट आउट कर चुके हैं. All the players are falling towards A and mid. B is empty. जी हाँ, टनल्स क्लियर कर जरूर चुके हैं लिक्विड, लेकिन अब उनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है. बी की तरफ रोटेट करना चालू कर दिया इन्होंने लेन की तरफ से. एंड लिक्विड डुएबल डाउन है, लेकिन उनको किल की जरूरत है. यकीन वहां पे टेक डाउन हो जाएंगे, जो बिल्कुल मदद नहीं करने वाला है. एंड ओसी की बात करें, रुकी मिस्टेक, जिस तरीके से एंगल होल्ड कर रहे थे, बहुत नजदीक खड़े थे वो, एंड उस चीज का फायदा उठाया था जेकम ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. बट अब 3 वर्सेस 4 रीटेक जाना चाहेंगे. आई बिलीव एग्जिट फैक्ट्स तो जरूर निकालना चाहेंगे, बिकॉज अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता. कलील एलीज के पास जो बचा सकते हैं, नैफ स्काउट बचाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत डेडली साबित हो सकते अगर कॉम्पिटेंट हाथों में हो तो. जिनके पास पिस्टल है, दोनों लुक फॉर अ वेपन. रिकवर्स गलील एंड सीधा बैक ऑफ करते हुए नजर आएंगे. Would say it's decent. Apeks ने जरूर जीता है, but Liquid on the other end also made up some weapons for themselves. जी हाँ, लेकिन फैंस लिक्विड देखिए ये मैप पे दे नॉट द हॉट फेवरेट्स. एपेक्स का जो प्रदर्शन रहा है इस मैप के ऊपर, एंशिएंट के ऊपर, काफी ज्यादा सराहनीय है. रिकॉर्ड ये बताता है कि एपेक्स के पास ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपर्टीज है इस मैप में. लिक्विड की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी. अब कोशिश ये करेंगे ये राउंड में कुछ अपने लिए कर पाए, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे एपेक्स. तुरंत बी को हिट करना चाहते हैं. There are 3 players here. OC
पिछले बार उन्होंने स्पॉट गिराया था, क्या इस बार भी वही होगा? प्लेयर स्पॉट हो चुके हैं, ड्यूल लेने के लिए जाएंगे बट इट बिकम्स अ 2. नाइट्रो जरूर उसको ट्रेड करेंगे बट प्लेयर ऑलरेडी केव से बाहर निकल रहे थे. नॉक्स स्टिल मेकिंग हैवक एट बी. सारे खिलाड़ी को निकाल देंगे एंड इट्स ओनली नाफ सर्वाइविंग इन. अगेन इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ पिस्टल इन हिज हैंड. आई थिंक एक और राउंड यहाँ पे एपेक्स लेते हुए नजर आएंगे. देयर इज नथिंग आई थिंक ही कैन डू. वेपन में भी रिकवर कर सकते हैं, बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए हैं डोर की तरफ. ही इज एक्चुअली हाइडिंग एज ऑफ नाउ. एग्जिट फ्लैग निकालना चाहते हैं जो भी हंट के लिए आएंगे. सबसे बड़ी चीज जो काउंटर स्ट्राइक 2 में आने वाली है सबसे बड़ा जो गेम प्ले चेंज होने वाले काउंटर स्ट्राइक 2 में कंपेयर टू एनी अदर काउंटर स्ट्राइक दैट हैज एवर एग्जिस्टेड. जब काउंटर स्ट्राइक 2 में आप जमीन की तरफ देखते हैं तो आप अपने पैर देख पाते हैं. काउंटर स्ट्राइक 23 साल से एग्जिस्ट करती है अलग अलग फॉर्म्स में. 1.5, 1.6, कंडीशन 0, सोर्स, ग्लोबल ऑफेंसिव. 23 साल में आज तक एक भी काउंटर स्ट्राइक में आप अपने पैर नहीं देख पाए. तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज है ये. आई थिंक बहुत लोग चरण स्पर्श करने के लिए ट्राई करेंगे. नॉट टू श्योर इफ दैट्स पॉसिबल. While we are seeing it. But अभी के लिए मिड में ऑलरेडी एक फाइट होता हुआ नजर आएगा. नैप फॉर द फर्स्ट, लुक्स फॉर द सेकंड. जेल ओनली गुड फॉर 1 क्योंकि ओसी वहां पे उनके हाथ में अभी AWP आ चुका था. A great fight coming through. Lige Jekem को डाउन करते हुए नजर आएंगे. C4 अभी भी रिकवर करना पड़ेगा. The fight all happened all the way at A. Yakinder Kixin को डाउन करेंगे and right as now it becomes a round जहाँ पे लिक्विड अपनी तरफ लेके हुए नजर आएंगे because Tico he's stuck in the site. C4 उनके हाथ में नहीं है and लिक्विड फोर्स नहीं कर रहे फाइट्स को. This is backing off OC. ऑप को हटाना चाहते हैं Tico. Can he make it happen? But उनके पीछे 3 खिलाड़ी रहने वाले हैं. He might be good for 1 but that's all. Swing करेंगे and that's going to be an instant death. कोशिश करी थी स्विंग करने की वहां पे, लेकिन देखिए ऐसी टीम है जिसको आप आसानी से रैटल नहीं कर सकते. इतना ज्यादा डरा धमका नहीं सकते. अगर आप थोड़े बहुत राउंड निकाल भी देते शुरुआत में, वो गिव अप नहीं करती. दिस इज वन ऑफ दोस टीम्स जो इतना ज्यादा प्रेशर झेल चुकी है, ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है. फॉर देम इट्स जस्ट एनी अदर फ्राइडे. बट ऑफ कोर्स आखिरी मेजर है काउंटर स्ट्राइक का. हर एक टीम यही कोशिश करी कि वो ट्रॉफी जीते. मेजर ट्रॉफी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको उठाने का अंदर से उतनी उत्सुकता नहीं होती है, लेकिन आखिरी मेजर इज वन ऑफ दोस मोमेंट्स जहां पे आप अपने आप को इमॉर्टलाइज कर सकते हैं एज अ लास्ट एवर मेजर चैंपियन. या आई मीन हर वक्त जब भी हम बात करते हैं इट्स टाइम टू राइट हिस्ट्री. दिस इज व्हाट इज गोना हैपन. यहाँ पे जो भी टीम वो ट्रॉफी उठाएंगे. विद चैलेंज उसी ही डज बट नो पिक एज ऑफ नाउ. Yakinder reposition करके चेक करना चाहेंगे. Ooh, it becomes a free pick. JKM बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे and Yakinder with his jump he backs off but बहुत ज़्यादा डैमेज खा जाएंगे उस रिटर्न जाने के लिए. 7 HP पे बचते हुए नजर आ रहे हैं. बट दूसरी ओर JL भी अगर बात करेंगे he's at 52 right now. थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा. Apeks already on a man disadvantage. अगर और भी ज़्यादा प्लेयर खो बैठेंगे then Liquid will start getting their rounds. जी हाँ, लिक्विड एक ऐसी टीम है, थोड़ी सी जगह देंगे, थोड़ी भी गलती करेंगे तो उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकती है टीम एंड आपको बहुत ज्यादा पनिश करेगी. तो नो डाउट एपेक्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही होगी कि उतनी गलतियां ना करे. स्टाइको नीड्स टू गेट दिस पिक, लेकिन मेरा तो माउस टूट जाता अगर मैं नैफ की जगह पे होता तो, बिकॉज M4A1S का जो वन टैप हेडशॉट नहीं पड़ता है. यहाँ पे ऑफ है उनके सामने, जिंदा रहने की कोशिश, लेकिन स्टाइको पीछे से आएंगे. Yakinder 7 HP पे 1 versus 2 कोशिश जरूर कर सकते हैं. पैसा उनकी टीम के पास है नहीं. क्या वेपन सेव करने की कोशिश करेंगे और डज ही वांट टू गो फॉर इट? फिलहाल धीरे धीरे डिस्टेंस क्लोज इन कर रहे हैं बट नहीं, डिसाइड कर लिया कि नहीं जाना चाहते. आराम से वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर एग्जिट निकाल पाते हैं कि नहीं. बट पैसा उनके पास इतना ज्यादा है नहीं. एपेक्स वंस अगेन काफी क्रूशियल राउंड निकालते हैं. नॉक इज जस्ट फिनोमिनल. जिस हिसाब से डेस्क पे भी बात किया गया था दैट ऑफ इज गोइंग टू बी समथिंग दैट दे हैव टू बी वेरी अबाउट. अभी के लिए सीटी साइड पे इतना चालू नहीं हुआ है. आपने देखा उसी के हाथ में लगा था एक पिक पिछले राउंड में निकाला था. दैट वाज द 4th राउंड बट ये 5th राउंड में इट डिड नॉट वर्क आउट.
Apeks स्लो स्टडी, इतना भी पूरा कंट्रोल्ड या डोमिनेटेड नहीं नजर आ रहे एपेक्स की तरफ से. देयर आर चैलेंजेस, दे काउंटरिंग इट, ट्राइंग टू गेट मैन एडवांटेज, उसके बाद जाके राउंड जीतते हुए नजर आ रहे हैं. बट एन अर्ली टाइम आउट कमिंग इन फ्रॉम लिक्विड, क्योंकि उनके जो चैलेंजेस है ना दैट आर वर्किंग आउट. बट उसके बाद कहीं ना कहीं राउंड के मिड पॉइंट की तरफ जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन का मौका आता है कमिंग इन फ्रॉम एपेक्स, तब लिक्विड थोड़ा बिखर जाती है एंड देन स्टार्ट लूजिंग नंबर्स. आई थिंक उसी की वजह से ये टाइम आउट कॉल किया गया. And their coaches will be very crucial in terms of how they make the next round play. थॉमस मैच देखने आए यहाँ पे, क्राउड रिकॉग्नाइज करता हुआ, प्यार देता हुआ, दिल खोल के खेले थे कल वाइटैलिटी के खिलाफ. अनफॉर्चुनेटली दे couldn't close it out, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होंगे जो ब्रिटिश प्लेयर्स थे पहली बार इतना आगे आते हुए. साइफर भी बहुत शानदार तरीके से खेले थे. Coming back to this one, Liquid. फमास है उनके पास, स्नैप के पास, इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट देखना ही पड़ेगा. ओह चिल, व्हाट इन द वर्ल्ड. बेहतरीन शॉट, लेकिन उससे भी बेहतर फ्लैश नाइट्रो ने यहाँ पे पिक निकाला है. डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा उनको नीड की वजह से, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा. जेकेम जिंदा लाश बन के घूम रहे फिलहाल 17 HP पे, लेकिन नैफ होल्ड करना पड़ेगा पूरा का पूरा. ए साइड पे इनका एग्जीक्यूट आ रहा था, लेकिन मॉलोटॉव की वजह से जा नहीं पाएंगे. अब दिक्कतें बढ़ती जा रही है टेरेस साइड के लिए, क्योंकि मैप कंट्रोल डिनाई किया जा रहा है. सामने प्लेयर्स और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं. नाइट्रो पीछे हटते हुए, उन्हें पता है कमिट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन स्काइको, व्हाट इन द वर्ल्ड वाज दैट. ओसी एंड नैफ लाइक ऊपर 2 क्विक शॉट्स. तीसरा किल भी शायद निकाल पाएंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रिस्ट्रेन दिखाते हुए. 2 किल्स निकाले, टीम को कंट्रोल दिलाया साइड का, और यहाँ पे आराम से एंगल होल्ड कर नाइट्रो. क्या उनके ऊपर किल निकाल पाएंगे? जी नहीं. स्टाइको विल कम आउट ऑन टॉप एंड दैट वन. किंडर को वापस पीछे जाके सेव करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं था, बट यहाँ पे किंडर वापस अगर जाएंगे, ही इज गोइंग टू बी मीटिंग नन अदर देन स्टीको. अ ब्रिलियंट राउंड कमिंग इन फ्रॉम स्टीको, ह्यूमंगस. जिस टाइमिंग पे उन्होंने क्रॉस किया साइड को एंड टेंपल पुश करते हुए नजर आए, नोबडी इवन गॉट अ प्रॉपर रीड आउट ऑफ इट. जब तेजी से बाकी सारे खिलाड़ी C4 के साथ भाग रहे थे, दैट वाज व्हेन दे इंटेंडेड. बट ये JL का रीप्ले वी जस्ट सॉ, इट वाज वॉल बैंग चैलेंज एंड वो JL जीतते हुए नजर आए. रियली गुड राउंड कमिंग इन. वो जो 2 किल्स मिले थे वो बहुत क्रूशियल थे. ये शायद लिक्विड का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए काफी होगा, बट अगेन मैं कहता हूं लिक्विड वैसी टीम नहीं है जो इतना ज्यादा मेंटली अफेक्ट होगी. मुझे अभी भी याद है जो 2016-17 का वक्त हुआ करता था, लिक्विड को चोकर कहते थे, चोक करते थे कई बार, ही को भी खेलते थे. बट हाल जेकम बहुत ज्यादा विफ करते हुए नाइट्रो 19 HP पे सर्वाइव कर रहे हैं. ये पहला पिक जरूर मिला है उनको. एक और खिलाड़ी रहने वाला है, राइट चेक करना पड़ेगा, नहीं करेंगे. यकिंदर पनिशेस, फ्लैश जरूर आया था बट इट जस्ट हेल्प यकिंदर. वेपन रिकवर कर लेंगे. नाउ दिस इज डूएबल, इट्स अ 4v3 सिचुएशन. फ्लैंक आ रहा है, स्टीको डील्स विद वन, दैट इज यकिंदर जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे सिटी साइड. अभी के लिए इस बैक स्टैप से डील करना पड़ेगा. दे डोंट हैव द प्रॉपर रीड, चेक करने के लिए अभी जा रहे हैं किक्सन. ही स्पॉट्स वन, ही मेक्स 2 पे. आखिरी खिलाड़ी नाइट्रो, he's the one who had the initial contact and I'll be barely surviving. सिर्फ पिस्टल रहने वाला है, that's a fling and that's a 3 for Kixon. Zeus करने की कोशिश करी. Apeks जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं फिलहाल, हमें पता था एंशिएंट इज देयर पिक. सॉरी, Zeus नहीं करने की कोशिश करी. मैं वो ब्लू 5-7 देके मैं एक सिंगल लगा के हाथ में थी तो नहीं Zeus उनके. I love the audience. अभी के लिए I'm just waiting कि हम जैसे आगे जाएंगे ना, like semi-finals, grand finals. What more can we expect? Oh what? Nitro was caught with his back. कुछ ऐसे ही खड़े थे Nitro. इनिशियल पिक्स तो निकाल रहे, लेकिन अभी भी एक मैन डिसएडवांटेज है लिक्विड के पास, और एक ग्रेनेड गोदी में गिरी लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं हुआ.
ये किंडर बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं फिलहाल। क्या वो अपनी पोजीशन दिए बैठेंगे? ये जे क्यों उनको बैक स्टैप करेंगे, लेकिन C4 जो है वो प्लांट हो जाएगा बी साइड के ऊपर। बहुत ज्यादा मैप कंट्रोल था, लेकिन ये किंडर स्पॉट हो चुके हैं। ये जो दरवाजा उसके थ्रू गोली पड़ी, पीछे हटना पड़ेगा। ग्रेनेड डालेंगे, डिसाइड कर चुके हैं लिक्विड, दे डोंट वांट टू कमिट टू दिस, बिकॉज यहाँ पे अगर कमिट करते तो अगले राउंड के लिए भी पैसा नहीं होने वाला उनके पास। बहुत जरूरी इस ऑप को सेव करना। लिक्विड हर राउंड पे जो यूटिल है, दे फेसिंग प्रॉब्लम ऑन दैट, बहुत कम नजर आया। लुक एट दिस, आई थिंक नाइट्रो लाइनअप के लिए इंतजार कर रहे थे, मे बी स्मोक और समथिंग, मैंने देखा नहीं, बट ही वाज जस्ट कॉट ऑफ गार्ड। दैट वाज जस्ट अ लिटरल स्पीड रन इन फ्रंट ऑफ हिम। और से फाइनली इनके AWP चलता हुआ जेकिम को डाउन करेंगे, बट दूसरी ओर दे आर स्टिल ट्राइंग टू पुश अप। As just trying to deny a couple of weapons. OC का जरूर AWP गिरा दिया जाएगा. That is Apeks with 7 rounds on their side. एक ही राउंड है टीम लिक्विड की तरफ से, एंड Apeks are having a fun time. आप देखिए बहुत खुश है वो लोग, और क्यों ना हो खुश, जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। 7-1 never forget ladies and gentlemen. जो भी हमारे दर्शक उम्र में छोटे हैं, शायद उनको याद ना हो 2010 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ब्राजील वर्सेस जर्मनी। ये काउंटर स्ट्राइक का लेजेंड बन चुका है बाय द वे। जब भी 7-1 होता है, इट्स ऑलमोस्ट एन अनस्पोकन लॉ कि आपको बोलना पड़ता है नेवर फॉरगेट। आई थिंक पिछले गेम्स में भी हमने वही देखा। आई मीन वहां पे 7-2 स्कोर्स बनता हुआ नजर आया था, 7-3, एंड दे ब्रॉट इट बैक, बट आई थिंक 7 इज द नंबर टू वॉच आउट। अगेन देखिए यूटिल्स में थोड़ा पीछे नजर आ रहा है, बिट स्मोक्ड ऑफ, ही स्टिल ट्राइंग टू पुश अप। ओह ये ग्रेट चैलेंज। पूज करते हैं यहाँ स्मोक के ऊपर, कोशिश निकाल पाए ये किक्सन स्पॉट होंगे, थोड़ा बहुत मार भी पड़ेगा उनको, लेकिन ये किंडर ने जो पहला किल निकाला, शानदार किल था वो। ड्यूल फोर्स किया गया। अभी के लिए स्टीको अकेले आगे बढ़ रहे हैं। नैफ इज गोना ग्रीट हिम, बट ही इज नॉट गुड फॉर द ड्यूल। हेडशॉट कनेक्ट करते हुए नैफ को गिरा देंगे, एंड नाउ द नंबर्स हैव बीन इक्वलाइज्ड। किंडर जो इनिशियल चैलेंज किए थे उसकी वजह से बहुत हेल्थ खो चुके हैं। ऑलमोस्ट वो इनिशियल ड्यूल हो सकता था। Still Kickson is kicking, but finally उनको गिरा दिया जाएगा, but knock with a quick trade coming through. वो पहले ही निकाल सकते थे। He went for a flash, but उसके वजह से कहीं ना कहीं अपने टीममेट्स को खो बैठने का मौका आया। It's still a 2v2 situation. Initial contact and Stiko takes down a C. Yakinder barely जो बचे हुए initial time, अब हम बात किए ड्यूल लेने की वजह से, he still stuck here with 22. पिछले बार भी यही हुआ था। Stiko as well. Similar 21 and 22. Oh, Yakinder! Oh my God, Yakinder! Unbelievable stuff! Oh my goodness! The reason why he was doing that, एक ही कारण से कर रहे थे वो, कोशिश कर रहे रिएक्शन बेट आउट करने के लिए कि ऑडियंस ऐसे रिएक्ट करेगी, गोली चलाएंगे वो। Yakinder! God tier stuff! इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं कंपोजर। ये चीज आप खरीद नहीं सकते। फर्स्ट पिक, उसके बाद 22, he hit himself, ड्यूल नहीं ले रहे थे with this, एंड उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस, उनको पता था, सीधा स्विंग किया एंड he saw the player right out. स्कोप नहीं थे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन को चेक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, एंड तभी उनको जाके पकड़ा। एंड सच अ ब्रिलियंट टाइम प्ले कमिंग थ्रू, एंड जैसे आपने बोला, when you need someone to clutch and the person having worst experience, वो हर वक्त ऐसे कमाल करके दिखा देते हैं। That's what happened. Liquid, they got their second, and दोबारा देखिए ये चैलेंज करने के लिए बाहर निकल चुके हैं। Can they get more? But इस बार फ्लैश काम करता हुआ, but look at them, a couple. JKM still good. इस बार एकेंडर को बहुत पहले पनिश करके दिखा देंगे, एंड वहां से रुक नहीं रहा है, he's pushing up. JKM is looking for taking more control away from Liquid. I'm still not over the fact कि किंडर ने इतनी कूल तरीके से वो राउंड निकाला, लेकिन
एक दिक्कत की बात है कि इंडिविजुअल फ्लैशेस और ब्रिलियंस में जब आप राउंड निकालते कंसिस्टेंटली वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एलीज जेकिंग के ऊपर वो पिक निकालते हुए आरोन ने रन बूस्ट की कोशिश की, लेकिन स्टीक को वहाँ पे दो किल निकाला, वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन नाफ्लाई शट डाउन करेंगे उनको। लिक्विड मैन एडवांटेज था, लेकिन किक्सन वापस ले लेंगे। C4 गिरा हुआ है जो उठाने की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन धीरे धीरे करके लीज रोटेट कर रहे हैं, फाइट हो सकती है उनके सामने, लेकिन इंतजार अभी भी। ओसी हाथ में ऑप, द बिग ये ग्रीन गन, क्या कमाल दिखाएंगे इसके साथ ये देखना जरूर बनता है। लेकिन लीज ये देखिए, पेशेंस देखिए, अब लीज को पता है कि प्लेयर्स कहाँ पे है। C4 प्लांट होगा, जी हाँ। ओह नो एलीज, नो एलीज could have killed। नहीं जी नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पे, बहुत बड़ा ब्लंडर। उन्होंने सोचा कि जो C4 प्लांट कर रहे हैं दैट्स नॉट अ थ्रेट, उनसे लड़के मतलब नहीं है। पीछे वाले प्लेयर को मारने की कोशिश करी, लेकिन उनको नहीं पता था जो C4 प्लांट करूंगी HP कम है। बट इस राउंड में लेफ्ट एंड राइट लड़ाई हो रही थी, अलग अलग डायरेक्शंस में फाइट हो रहे थे, बट इट वाज एपेक्स हु वर क्विक टू रेस्पॉन्ड टू इट। Oh my God, the energy at Apex's end. दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, अगेन बाई करके, अगेन वियर्ड बाइज कमिंग थ्रू। AWP ना वापस नजर आया ओसी की तरफ से, बट ही इज नॉट फाउंड अ लॉट ऑफ वैल्यू। क्रॉसिंग देख लेंगे, नॉक, ही इज ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड टू वन। जेल वापस चैलेंज करते हुए नजर आएंगे, ट्राइंग टू गेट सम वॉल बैक। अगर खिलाड़ी है भी उनको बैक ऑफ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। C4 रिट्रीटिंग एंड रोटेटिंग, मिड बहुत डीप पुश करके बैठे हैं यकिंदर। Something they have to watch out for as they're rotating. अगर मिड की तरफ आएंगे, यकिंदर is waiting to greet them with open arms. It's all on the timing. कैच से एक पुश आएगा, उसके बाद मिड की तरफ से towards B and oh, knock is good. Takes down यकिंदर। मिड भी यहाँ पे पूरा कंट्रोल में आ चुके हैं, केव की तरफ जाने का इरादा बना रहा है। किक्सन is only good for one. Elijah on the trade. C4 A की तरफ ही जा रहा है, टेम्पल की तरफ से एक खिलाड़ी जरूर आ रहा है। नैफ, कैन ही ट्राई टू डू समथिंग? क्या सीको को डाउन कर पाएंगे? जी हाँ, जैसे मॉली फेंक रहे थे, बट नॉक इमीडिएटली पनिशेस हिम। मिड में एक चैलेंज होने वाला है, व्हिच एलाइज स्टैंड्स गुड फॉर। लुक एट द इमीडिएट ट्रेड्स कमिंग इन फ्रॉम एपेक्स, दे सो क्विक। और सी आखिरी खिलाड़ी रहने वाले, ये AWP हर वक्त अपने शॉट्स मिस करता हुआ नजर आ रहे हैं, और सी जस्ट नीड्स टू रन एंड सेव दिस वेपन। पैसे नहीं रहने वाले इनके पास, बट ऑन द अदर एंड जितना ये सेव करेंगे, जितना ये वापस जाएंगे, जितना ये राउंड हारते हुए नजर आएंगे, उतनी जल्दी एपेक्स डबल डिजिट्स पे आएंगे। मामा, दे आर गेटिंग देयर 9th राउंड ऑन बोर्ड। एपेक्स डोमिनेट करते हुए यहाँ पे क्विक ट्रेड, फंडामेंटली बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे, लेकिन एलीज की जो निराशा है वो उनके चेहरे पे नजर आ रही है। बात करें ओसी के बारे में, स्ट्रगल जरूर किया उन्होंने ऑप लेके, सारी शॉट्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे, इससे बुरा जरूर लगेगा। लेकिन ये देखिए, ये जो लाइटिंग इफेक्ट और जो आपको फ्लेम देखने मिलते हैं, वेरी कूल, वेरी कूल। It's called pyro technique, if I'm not mistaken. Yeah, the flames are. Yeah. But Liquid यहाँ पे बहुत मुश्किल सिचुएशन, 3 टाइम आउट यूज कर चुके हैं, लेकिन कोई तोड़ नहीं है उनके पास। रीसेट करने के लिए शायद इस टाइम आउट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, पीछे कोच उनको कुछ चीजें बताते हुए, सारे प्लेयर्स सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बात करने के लिए है प्लेयर्स के पास। Not looking that great. तीसरा टाइम आउट यहाँ पे मजबूर करवाया गया टीम लिक्विड को लेने के लिए। एपेक्स आर गोना बी सुपर हैप्पी। डैप्स खुद चिंता में रहेंगे उनके कोच। व्हाट कैन वी डू डिफरेंट? पिछले बार भी हारे थे, इस बार और बुरा हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्यूबिन ऑन द अदर एंड वो बोलेंगे कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, अभी के लिए जो आप कर रहे हो सही जा रहे हो। 3 more rounds in the half, but अभी के लिए पूरा कंट्रोल एपेक्स ही रखते हुए नजर आ रहे हैं। नॉट क्विक टू टेक कंट्रोल, ओह इट वाज ऑल अबाउट द टाइमिंग। लाइज ब्रिलियंट मॉली, पूरा फायदा मिलेगा
दो लोगों को डाउन करेंगे एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्लंडर। अभी तक तो वो सिर्फ वॉल बैंक के साथ चैलेंज कर रहे थे एपेक्स, इस बार थोड़ा ग्रीडी बन गए एंड दे गॉट पनिश्ड। जी हाँ, ग्रीडी बने थे, पनिश हुए वहां पे, लेकिन लिक्विड यहाँ पे वो कंसिस्टेंटली राउंड निकाल पाएंगे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से राउंड जीते अभी तक दोनों राउंड्स। लीज यहाँ पे जो डबल किल निकाला बहुत ब्रूटल था, लेकिन जेक वो शॉट नहीं मिस करने वाले। ओसी नीड्स टू हिट दैट शॉट। ओसी नो, ये शॉट्स नहीं मिस कर सकते आप एज एन ऑपर। बहुत क्रूशियल शॉट था। अभी भी एपेक्स ये राउंड वापस खींच सकता है। 3v4. I would really want to see Jacob shot on Yakinder. Back off कर रहे थे and immediately snaps onto his head. B के तरफ वापस इशारा करते हुए Apeks. मेन की तरफ से एक खिलाड़ी आ रहा है। Oh, barely sees his boots and C finally takes down Kixin, but तुरंत Stee को ट्रेड करेंगे। There's still another player towards long, clear करना पड़ेगा। Stee is holding with the AWP. Farmers के साथ ड्यूल नहीं लेना चाहते, but दूसरी ओर से पुश अप करने के लिए लाए जाएंगे and he takes down both at the same time. Finally Liquid gets something. कितने ही रहेगा, but बहुत टाइम रहेगा डिफ्यूज करने के लिए, denying Apeks of getting double digits very early. ये जो मोलोटॉव था बहुत ज्यादा डैमेज डिश आउट कर रहे थे। एपेक्स ने कोशिश करी थी कि रिएक्ट ना करे वो मोलोटॉव पे, आराम से पीक करे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट देख सकते हैं आप। वहां पे स्मोक आना चाहिए था। आई डोंट नो इफ अवेलेबल था कि नहीं, बट लीज 4 की निकाला उन्होंने इस राउंड में। Great show coming in from his end. I think Elige हर वक्त कोई ना कोई पिक्स निकाल के अपने टीममेट्स को एडवांटेज में लेके आना चाहते हैं, बट इट्स अपने टीममेट जो है वो कहीं और मरते हुए नजर आ जाता है, एंड देन Elige is kind of left vulnerable. Two more rounds in the half. Finally, बेहतरीन यूटिल हमें लिक्विड की तरफ से देखने के लिए मौका मिल रहा है, and Apeks are the ones right now lagging behind. Oh, nice spray down and gun down coming through. Yakinder अभी भी एक और पिक निकालते हुए. I mean, JL looks for that every round. Oh my God. बट अभी भी उसी डायरेक्शन जाने का इरादा नहीं बन रहा है। नाफ, he was ready. कैच से जैसे खिलाड़ी बाहर आ रहे थे, स्टीको को डाउन करेंगे। स्टीको was crucial, he picked up crucial frags. Knock, नाफ के ऊपर ट्रेड निकालेंगे, जो all of a sudden becomes a 2v2 situation. Look at the health. Oh, another challenge coming in. Knock was ready for that. Yakinder को डाउन करेंगे। OC, he did get an AWP connection. जेल को जरूर उन्होंने निकाला था, बट अभी बैक टू बैक 2 निकालना पड़ेगा, एंड हिज रीड इज राइट. ही इज गेटिंग इनटू द राइट डायरेक्शन. C4 भी वहीं पे आ रहा है. इफ ही गोज इन चेक्स रैम्स, ही माइट बी एबल टू पिक वन प्लेयर ऑफ. दूसरी ओर केव को भी चेक करना पड़ेगा. खिलाड़ी ऑलरेडी पॉप अप कर चुके हैं. इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. किक्सन, ही क्रॉसेस माम्बा. अब अगर किक्सन लॉन्ग को चेक करेंगे, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट नॉक खुद ही ओसी को चेक करके पुट्स हिम डाउन. Apeks finally get the double digits. Apeks Rose feels like bully कर रहे हो सामने वाली टीम को, परेशान करते हैं. जो बचपन में स्कूल में जो लंच मनी होता है आपका चोरी करते डब्बा खा जाते हैं ना, ऐसे बुली कर रहे हैं यहाँ पे Apeks सामने वाली टीम को. लिक्विड फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं उनके चेहरे पे, निराशा देख सकते हैं उनके चेहरे पे, लेकिन Apeks की खुशी उसका कोई ठिकाना नहीं. क्विक फास्ट चैलेंज, बहुत तेजी से पुशअप करना चाहते हैं, बूस्ट करके सीधा वो लॉन्ग को चेक करने के लिए आएंगे, बट देयर इज अ पुश कमिंग आउट फ्रॉम केव्स, बट दे आर ओनली गुड फॉर वन. अभी भी एक और चैलेंज करने के लिए Yakinder तैयार है. 2 खिलाड़ी उनकी तरफ पुश आउट कर रहे हैं. किक्सन फाइंड्स अ फ्री वन फॉर हिम. दूसरे डायरेक्शन पे देख रहे थे Yakinder, खुद ही लिक्विड का स्टैट बैकफॉल करता हुआ नजर आया. स्टीको पिक्स अप वन एट नाफ, एंड अभी के लिए एक ही खिलाड़ी रहने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी ओसी होल्डिंग डाउन रैंप. Kickson looking in the other direction.
Oh, OC and Kixin look at each other and ऐसे glimpse करते कि आप यहाँ पे कैसा है, OC भी आप यहाँ पे कैसा है, and उसके बाद the bullets start firing out from their rifles. That will be 11 on board for Apeks. एग्रेशन दिखाने की कोशिश करी थी लिक्विड ने वहां पे, लेकिन इट वोंट वर्क आउट। एपेक्स रेडी था, तैयार था, ट्रेड्स निकाले, जो इनिशियल पिक था उसका मुंह तोड़, जड़बा तोड़ जवाब दिया। एक और राउंड अपने लिए निकाल के 11-3 का स्कोर लाइन है। लिक्विड के पास ना पैसा है, ना कॉन्फिडेंस है, ना मोमेंटम है, लेकिन ना फ्लाइको से फर्क नहीं पड़ेगा। स्लाइको के ऊपर किल जरूर निकाला, डिफॉल्ट करने की कोशिश, लेकिन पहला किल निकालते हुए यहाँ पे एक और किल निकालने की कोशिश। लीज अभी भी चीता के पास खेलना चाहते हैं, वहां से किल निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या वो मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। सिमिलर पोजीशन वॉल बैंक करने के लिए ट्राई किया, लाइज नॉट चैलेंजिंग इट, बैक ऑफ कर जाएंगे। एपेक्स फ्रॉम देयर पुशिंग अप मिड, बट डोनट की तरफ 2 खिलाड़ी रहने वाले हैं। Seas1 थोड़ा डैमेज जरूर करेंगे। ग्रेट मॉली कमिंग थ्रू, पर वो स्मोक क्लियर्स इट आउट। बट अभी देखिए यकिंदर अप क्लोज एंड पर्सनल नॉक, अगर इस एंगल को नहीं चेक करेंगे मुश्किल हो सकता है। मिड को पुश करके दे वांटेड टू गेट सीटी कंट्रोल, यकिंदर एंड एलाज गेट 1 ईच। इट्स अ 2v5 सिचुएशन, बहुत मुश्किल होने वाला है। किक्सन उनके तरफ एक खिलाड़ी पुश आउट कर रहे हैं, पिक्सल ऑलरेडी देख चुके थे, शोल्डर दिख चुका था। जेकेम ट्राइंग हिज बेस्ट विद जस्ट 18, रेड की तरफ रहने वाला है, बट आई डोंट थिंक ही विल हैव एनीथिंग। 3 खिलाड़ी आ चुके हैं उनके सामने पोजीशन पता चलने के बाद। ओसी विद द फार्मर्स पुट्स हिम डाउन, एंड फाइनली इस फर्स्ट हाफ में 4th पॉइंट उठाते हुए लिक्विड। Not a great score, 11-4. पर Apeks आप देख सकते हैं 4 ही राउंड में इनको मिला है, that's okay, nothing to be worried about. लिक्विड बहुत कोशिश करी, बहुत राउंड से जहां पे उन्होंने पुशअप करने की कोशिश करी, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। हर एक चीज का जवाब था। जब पैसिव खेल रहे थे एपेक्स, मेथोडिकली मैप कंट्रोल उनसे छीनते जा रहे थे, जब एग्रेशन दिखाया, किल्स निकालने की पूरी तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। मुझे लगता है अगर वो स्पॉट नहीं करते शायद नाइफ करने की कोशिश करते उनको, लेकिन मौका नहीं मिला। अगर नाइफ करते तो बहुत ज्यादा मजा आता। जैसे आपने बोला बहुत मेथोडिकली खेला गया एपेक्स की तरफ से, एंड कभी भी ऐसे नहीं लगा कि उन्होंने कोई भी एंगल को मिस किया है। दे वर ऑलवेज शार्प ऑन क्लियरिंग एवरीथिंग। टाइमिंग ऊपर नीचे हुआ होगा, बट स्टिल दे हैव ऑलवेज बीन बेटर ऑन ट्रेड्स एज वेल। देखिए नॉक पहले अपनी टीममेट्स के लिए फ्लैश तैयार कर रहे थे, उसी वक्त पे एक पुश आ जाता है, बट ही स्टिल गुड, ही टेक्स द ट्रेड। चैलेंजेस के लिए हर वक्त तैयार थे, बट दिस वाज एन अनबिलीवेबल क्लच कमिंग इन फ्रॉम यकिंदर। थोड़ा कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वापस आ गया। नॉक स्कोप इन करके आई थिंक स्कोप आउट कर रहे थे एंड क्रॉस करना चाहते थे, तभी जाके यकिंदर ने पकड़ा है। बट आई फील लाइक लिक्विड अभी के लिए जितना भी करना चाहती थी, इट ऑल डिड नॉट वर्क आउट। जितने राउंड्स उन्होंने खेला है उसमें कहीं ना कहीं पहले यूटिल की कमी महसूस हुआ, उसके बाद वेपन्स की कमजोरी महसूस हुआ, एंड जब भी उनको AWP मिल रहा था आई फेल्ट OC maybe was getting overwhelmed। वो हर वक्त अपना जो शॉट्स थे मिस करते हुए नजर आ रहे थे। पर राउंड एट मैक्स उन्होंने सिर्फ एक ही पिक निकाला है, एंड कभी कभी 1-2 राउंड में नथिंग। सो आई थिंक जब AWP CT साइड पे आता है, they want that player to feel himself and find a lot more. अभी के लिए it has been Skyesports who's been played phenomenally alongside him. It's been Knock with that AWP. Kixin was just kicking players out. ये मैं तो जरूर बता सकता हूँ, उनके सामने अगर कोई खिलाड़ी नजर आए, back to the next round. लॉक्ड इन है प्लेयर्स यहाँ पे सारे के सारे, बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहते। टैप्स जमीन पे कुछ देख रहे हैं, केबल ठीक कर रहे थे आई बिलीव, बट वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। Yep. नाफ अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए
Trying to channel his bowling. Tycho का आप score देखिए 16-9. 16 kills in the first half. काफी बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं. And प्यार, काफी ज़्यादा प्यार दोनों टीमों के लिए. Audience के अंदर जो express कर रहे हैं, जो जता रहे हैं. और Liquid के लिए fans chant करते हैं. Let's go Liquid. We start the second half. Liquid on the T side right now. देखेंगे क्या कुछ कमाल कर पाएंगे. देखिए जेकम T side पे ज्यादा पॉप ऑफ नहीं हुआ because उनकी टीममेट्स ज्यादा हेवी लिफ्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे. He got a couple of few chances जहाँ पे उन्होंने फ्रैग आउट किया, टीममेट्स को एडवांटेज दिलाया and they did eventually win the round. अब देखेंगे कि CT side पे how much more he can pull up because right now he's just sitting with 6 kills. दूसरी ओर OC ने भी 8 किल जरूर निकाला है, but right now डोनट की तरफ एक चैलेंज आता है. अभी मैं जेकिंग के बारे में बात कर रहा था. एक चैलेंज को उन्होंने फेस किया, डील किया, एक हिटर को डाउन किया, but then there was another challenge जहाँ पे he fell apart. But दूसरी ओर मिड पुश करके आएंगे. GL gets one, but Elijah is good for a quick trade. But look at that oppression. Quickly वो control वापस छीनना चाहते, but OC was keeping an eye out, and oh, he takes two. Elijah, he picks up another as he was getting towards A and clear करना चाहते थे CT. Great round coming in. बहुत methodical, urgency नहीं दिखाया उन्होंने, और aggressive नहीं बने. जहाँ पे भी challenges नजर आ, जहाँ पे भी उनको लग रहा था कि players might try to catch them off guard, उस angles को hold करते हुए नजर आ रहे थे. And Liquid looks like they're going to start off, and especially OC started looking snappy in this T side. जरूरत थी, जितने शॉट्स मिस किए उन्होंने ऑफ के साथ, उसके बाद तो बिल्कुल जरूरत होने वाली है. लेकिन बात करना चाहूंगा एपेक्स के बारे में. डीगल्स उठा ली उन्होंने. डीगल्स डेजर्ट ईगल बहुत पोटेंट हथियार, सही हाथों में, लेकिन एग्जीक्यूट किया है, एक्सप्लोड किया है लिक्विड ने यहाँ पे बी साइड के ऊपर. देखिए नाइट्रो ने कितना ज्यादा कंट्रोल ले लिया मैक 10. इसलिए मैं मानता हूँ इज वन ऑफ द बेस्ट SMGs इन द गेम. अगर आप एग्रेशन दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल लेना चाहते हैं, रन एंड गन कर सकते हैं. बहुत कम इसका वजन होता है जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी भाग भी सकते हैं. ये देखिए हिलते हिलते गोलियां चला सकते हैं. रिकॉल कंट्रोल करना भी इतना मुश्किल नहीं है. Okay. खिलाड़ी बैकस्टैप करना चाहते हैं. फर्स्ट कॉन्टैक्ट इज गोना बी नैफ पुट्स वन प्लेयर डाउन. कैट की तरफ से जो खिलाड़ी बैक ऑफ कर रहे थे उनको भी देख लेंगे. उसी नैफ कम्स बैक, बट नैफ एंगल को अगर वापस चेक करने के लिए जाएंगे, देयर इज 2 more players. एक बैक ऑफ कर रहे हैं. इट्स गोना बी जेकिम. Again JL gets spotted out. अभी भी वो डबल डोज को होल्ड आउट किया जा रहा है. Ekinder on the chase with his Mac 10. Naf coming in through as well. Knock को डाउन करेंगे. मिड की तरफ एक चैलेंज आएगा. Look at this with the Eagles trying to make another rifle down. And जी हाँ, JKM puts 2 down. 2 weapons यहाँ पे रिकवर करने के लिए मौका मिल जाएगा. Apeks yes did not get these pistols and then the next round. but अभी के लिए इंतजार रहेगा. Ooh. MIBR still undefeated in this major. And because MIBR isn't in the major. Oh god. Counter-Strike fans और इनकी क्रिकेटिविटी, ये चीज को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. बेहतरीन से बेहतरीन मीम्स आपको देखने मिलेगी. Let me give you a nice tidbit of information. एक fun fact बताता हूँ. Zaiwu, जिसे the child of Counter-Strike कहा जाता है, उसका कारण आपको मालूम है? उसे क्यों कहा जाता है? No. Counter-Strike जब सबसे पहली बार रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2000 में रिलीज हुई थी. Okay. और Zaiwu का जन्मदिन भी 9 सितंबर 2000 है. Ooh. Wow. The literal prodigal son of Counter-Strike. And कल खेलने वाले सेमीफाइनल में. Playing in last major. Yes sir. Super interesting. And आप हम जब जैसे बात कर रहे हैं, like this is going to be one for the history books. अगर वो जीत जाता है, it's going to be sensational. अभी के लिए ये राउंड लिक्विड जीतती हुई नजर आएगी. It was an eco coming in from another than Apeks. They went for a complete save. ज़्यादा investment नहीं करना था उनको because they want a proper challenge that they want to dish down to none other than Liquid. क्योंकि Liquid का जो T side है अभी चालू हो चुका है and they are regaining rounds in their favor. Yeah, they are regaining rounds in the favor, but
अब होगा प्रॉपर बाय दोनों टीम के लिए। एपेक्स के पास पैसा होने वाला है, लिक्विड के पास भी पैसा होगा। ये बहुत क्रूशियल राउंड होने वाला है समझने के लिए कि किस तरीके का मोमेंटम लिक्विड के पास है। यहाँ पे 11-7 का स्कोर लाइन हो चुका है। अगर ये राउंड जीते तो फिर मुझे लगता है कि इट्स एनीवन्स मैच फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। लेकिन एपेक्स के लिए बहुत क्रूशियल राउंड होने वाला। लेकिन एग्रेशन देखिए आप, एग्रेशन देखिए, कितना ज्यादा एग्रेशन, कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। मैप कंट्रोल डिनाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर पिक ऑफ होते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। लीज वापस चीता के पास हमेशा यहाँ पे लड़ते रहते हैं। जेल एंड लीज, आई थिंक उनको केव लैंटन के रीजन बहुत पसंद है। पर अभी के लिए एपेक्स, दे हैव नॉट लॉस्ट एनीबॉडी, सेम गोस फॉर लिक्विड। यूटिल दोनों साइड्स पे नजर आ रहा है, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। ओसी तो लिटरल एंटायर यूटिल अभी भी बचा के रख रहे हैं। आई थिंक इट माइट बी अ बर्स्ट राइट ऑन ए। दोनों की तरफ खिलाड़ी है एंड आई थिंक जैसे ये यूटिल डंप आएगा वो बैक ऑफ करते हुए नजर आएंगे। टेम्पल की तरफ से खिलाड़ी, ही कैन ट्राई टू डू समथिंग। इनिशियल कनेक्शन आया जेकम की तरफ, ही गिव्स द कॉल, नॉक, ब्रिलियंट पोजीशनिंग कमिंग इन, पिक्स अप वन बट गेट्स पनिश्ड फ्रॉम ओसी। एंड वहां पे तुरंत डोनट की तरफ भाग जाएंगे जेकम के साथ जिसे हम बात कर रहे थे, एंड दिस विल गिव एपेक्स द साइड। जी हाँ, C4 प्लान करें वहां पे। नाइट्रो विल गेट टेकन डाउन। 3v4 रीटेक होने वाला है पॉसिबल एपेक्स के लिए। यूटिलिटी के नाम पे सिर्फ एक स्मोक और एक फ्लैश बैंग जिसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं, लेकिन ये किंडर विल गेट टेकन डाउन। किक्स ने एक और किल निकाल दो, एक और नास बचे हो यहाँ पे, क्या किल निकाल पाएंगे? जी नहीं, साइको टीम के साथ पीक करेंगे एंड इजी डिफ्यूज एपेक्स के लिए। मैंने कहा था ये राउंड बहुत क्रूशियल होने वाला है समझने के लिए कितना मोमेंटम है कौन सी टीम के पास। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ एपेक्स ने पिक किया था शुरुआत में और जिस तरीके का एग्रेशन दिखा था वो बेहतरीन था। एपेक्स उनको पता है, देखिए इतना बड़ा लीड लेने के बाद अगर यहाँ पे वो मोमेंटम थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, they do not want that scenario. Already Liquid एक बार हार चुकी है and if Liquid start getting momentum anyway on Ancient, Liquid I think वो इस बार जैसे बोलते हैं ना रिवेंज जब वो उनको पता चल जाएगा ना, कवर करना पड़ेगा। पैसे बहुत गवाए इन्होंने दो राउंड्स में। Even if this is not the last map, they will play like this is the last map. वो एक पहला पॉइंट लेने के लिए, because this is the quarterfinals. यहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो सेमीफाइनल्स, वरना सीधा घर जाना पड़ेगा। लीज वापस चीता की तरफ डिफॉल्ट करने की कोशिश। स्टाइक को ए साइड होल्ड करे अपने टीममेट के साथ। नॉक जिन्होंने अच्छा खासा पहला पिक निकाला था, किंडर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, लेकिन यहां पे एक फाइट हमेशा देखने मिल सकती है। नैफ क्या लड़ेंगे यार? जी हाँ, स्टाइको के साथ फाइट होने वाली है। नैफ पिछले बार इट वाज द अदर वे अराउंड, स्टीको नैफ को डाउन करते हुए नजर आए थे, इस बार नैफ स्टीको को डाउन करते हुए नजर आएंगे। सेम चैलेंज था, 4v5 सिचुएशन। ये किंडर लिटिल लो बट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बर्स्टिंग डाउन एट ए। सीडी को कवर करने के लिए स्मोक आएगा बट जेकेम साथ देंगे अपने टीममेट नॉक का। जेकेम एक्चुअली डबल्स डाउन एट मेन, डोनर का कंट्रोल अभी भी रख के लेना चाहते हैं। Knock looking forward to that positioning, but ये play Knock and Jakim की जुगलबंदी entry deny करता हुआ नजर आएगा, C4 गिराते हुए नजर आएगा, and all the last two players can do is try to find another opening, but time बहुत कम है, 20 seconds में they have to recover, go for a quick hit, and also in the meantime look forward to taking players down, वरना ये round जा चुका है and they decide they have to retreat. पैसा ज़्यादा नहीं रहने वाला है and I think maybe they will not be able to buy up. देखेंगे अभी के लिए सैम इनक्रेडिबल स्टफ हो गया, लेकिन लिक्विड जो हताशा होगी, निराशा होगी उनको, उनके फैंस को जो चीयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल वहां पे सपोर्ट करते रहना। लेकिन एपेक्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एंशिएंट के ऊपर हम सभी को मालूम है, लेकिन लिक्विड का ओ पास के ऊपर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इससे भी ज्यादा शानदार है। और देखना ये बनता है कौन सी टीम होगी जो ये जीतेगी क्वार्टर फाइनल। और ये देखिए ऑडियंस एक और बार चीयर करते हुए। Team Liquid used their last time out and इतनी देर से मामा
हमें बहुत ज़्यादा टीम लिक्विड के चांस नजर आ रहे हैं. सो द ऑडियंस हैव बीन कंटिन्यूसली चीयरिंग फॉर टीम लिक्विड. एपेक्स के लिए भी सपोर्ट है, बट आई थिंक वो जनता देख के जब भी वो राउंड्स जीत रहे, दे आर शाउटिंग विद देयर हाईएस्ट पिचेस. जी हाँ, पूरी कोशिश होगी यहाँ पर, लेकिन एपेक्स डोमिनेटिंग तरीके से सेकंड हाफ में भी प्रेजेंस दिखाते हुए बाय राउंड आया. मोलोटोव ग्रेनेड से मैप कंट्रोल डिनाई करने की कोशिश, जितनी यूटिलिटी का इस्तेमाल किया उतना ज्यादा डैमेज क्या डिश आउट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. नाइट्रो ऑलमोस्ट गेटिंग टेकन डाउन हो देयर. बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा कॉकी यहाँ पे एपेक्स ललकार रहे सामने वाली टीम को कि आओ लड़ो हमसे, लेकिन लिक्विड somehow managing to make it work. अब कितनी यूटिलिटी बचती है उनके पास, ये देखना जरूर बनता है. Still going to be a 5v5. Nitro थोड़ा beaten up रहेंगे, but Yakinder he finds a free one at A and तुरंत टूट पड़ रहे. There will be a molly to deny any kind of temple control. Angle ढूंढ रहे थे, but अभी के लिए Jakim doesn't find anything. Plant कर दिया जाएगा and now it is time to defend. 4v5 रीटेक के लिए क्या करके दिखा सकती है एपेक्स. दे स्लोली ट्राइंग टू पुश अप, ट्रेड करने के लिए मौका ढूंढेंगे. बक्से के पीछे छुपे है नैफ. दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल. शोल्डर दिख जाएगा, सीधा स्विंग करेंगे. नैफ गेट्स वन. देयर इज नो वे टू ट्रेड दैट. ही वाज सुपर क्विक. ओह, किक्स इन. ही हियर्स द फुटस्टेप. पनिश करेंगे, बट आई थिंक ऑलरेडी रिट्रीट को कॉल कर चुके हैं. यकिंदर बैक ऑफ के टाइम पे नॉक को पकड़ लिया जाएगा. एंड नाउ इट बिकम्स अ राउंड जहां पे लिक्विड जीतते हुए नजर आएंगे. लिक्विड एक और राउंड जीते हुए अपने आप के लिए फैंस होंगे काफी ज्यादा खुश होंगे. टैक्टिकल टाइम आउट लिया था, अब इनके पास कोई भी टाइम आउट अवेलेबल नहीं है बाय द वे. तो अगर अब दिक्कतें आती है तो फिर बात करने का मौका नहीं मिलेगा उनको. लेकिन एपेक्स अच्छा कॉल, सेव करने का, पैसा बचाने की जरूरत थी, वेपनरी बचाने की जरूरत थी, और वही किया है इन्होंने बेहतरीन तरीके से. एपेक्स ज्यादा गवा नहीं सकती है in terms of economy as well as rounds. जितना ज़्यादा गवाएगी लिक्विड उतना ज़्यादा कमाएगी एंड ज़्यादा यूटिल्स रहेगा उनके पास. अभी के लिए बहुत अग्रेसिव मिड कंट्रोल लिया गया है कमिंग इन फ्रॉम एपेक्स. कैट का कंट्रोल भी ले चुके हैं, मिड बॉटम का भी कंट्रोल ले चुके हैं. दे आर नॉट लेटिंग लिक्विड गेन एनी एडवांटेज, जिसकी वजह से बहुत तेजी से लिक्विड आर ट्राइंग टू पुश अप बी. एक पिक जरूर निकालेंगे नाइट्रो, देन ही गेट्स फ्लैश. नो विजन, केव की तरफ स्मोक आएगा एंड नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू. जेकिम को एक पिक मिला था, बट तुरंत उसी ने ट्रेड किया. स्टी को कमिंग इन. बैक एंड फोर्थ जा रहा है यहाँ पे, बट नंबर्स बात करेंगे. इट इज एन एडवांटेज ऑन नन अदर देन साइड ऑफ लिक्विड, बट हेल्थ अगर बात करेंगे इट स्टिल लुक्स लाइक अ 2v2, क्योंकि एलाइज एज वेल एज नाइट्रो barely surviving 23 and 19, but looks like they might not go for a retake. सिर्फ एग्जिट फ्रैग्स में भी ले सकते हैं यहाँ पे माम्बा. जी हाँ, ओवर कमेंट नहीं करना चाहते, इंपॉर्टेंस जानते हैं यहाँ पे पैसा बचाने का. इकोनॉमी मुश्किल होता है सीटी साइड पे मैनेज करना, लेकिन यार नाइट्रो ही विल गेट टेकन डाउन. आई थिंक नॉक एक्सपेक्ट कर रहे एक और प्लेयर को, लेकिन अब पीछे भागना पड़ेगा उनको. क्या बच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. जी हाँ, भाग तो बिल्कुल दुम दबा के भाग रहे, लेकिन ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही मुझे ऐसा लग रहा है अब लिक्विड को. एपेक्स जितने राउंड सामने वाली टीम को देगी, जितने राउंड वहां पे वो प्लान करके एक्सप्लोर करने देगी बॉम्ब, उतना ज्यादा पैसा मिल रहा है लिक्विड को. तो दबा नहीं पाएंगे सामने वाली टीम को. तो एपेक्स दे नीड टू विन दिस राउंड. इट्स एन एक्सट्रीमली क्रूशियल राउंड. अगर ये राउंड जीतते हैं तो फिर शायद ये मैप क्लोज कर पाएंगे. किंडर चॉकलेट. आई थिंक जब भी जो हमारे दर्शक है ना, दिस शुड बी अनरिटन और अनस्पोकन व्रत. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन हिंदी. समथिंग दैट यू डू जब आप लैंड पे आते हैं, ये सब आपको करके प्रिपेयर करके आना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट वॉक इन टू लैंड एंड जस्ट सिट डाउन. I guess we'll find out.
कि वो हमें लैंस पे देखने मिलेगा कि नहीं, लेकिन इस बार भी देखिए चिकन कितना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, कोशिश करे कि उनको एक पिक मिले, लेकिन अब रीलोड करेंगे। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, वो नहीं करना चाहते। स्मोक एलीज, ओह नो, एलीज खुद का स्मोक यूज कर चुके थे। जेकब परफेक्ट तरीके से, उन्हें आइडिया था ये स्मोक लाइनअप कहाँ से होता है। जैसे ही स्मोक निकला, मॉर्स डाली वहाँ पे, इंसेंडियरी डाली सॉरी, एंड वो किल निकाला। 200 IQ मूव, वंडरफुल। 5v4 किंडर क्लियर करेंगे अगर कोई कॉर्नर में छुपा हुआ है तो विद मॉली। दूसरी ओर केव की तरफ जाने के लिए पहले मॉली की तरफ से क्लियर किया जाएगा, कीपिंग द कंट्रोल, बट केव को गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं एपेक्स के खिलाड़ी। आगे बढ़ने के लिए अगर इरादा बनाएंगे मुश्किल हो सकता है, बट नाइट्रो इज स्टिल ट्राइंग फॉर इट, स्लोली बट स्टेडीली ट्राई कर रहे हैं। एक फ्लैश आएगा, क्विकली स्विंग्स विद द प्री फायर, बट कोई वैल्यू नहीं मिलता है उनको। दूसरी ओर बी रैम्स की तरफ से पुशअप करने के लिए खिलाड़ी तैयार है विद द C4, बट इट्स स्मोक्ड ऑफ। एंड लुक एट यकिंदर अकेले ए की तरफ जा रहे हैं, वहां पे मुलाकात होगा विद द AW पीक फ्रॉम नॉक, पुट्स हिम डाउन, एंड अभी तुरंत दे आर रैटल्ड। वो सोच रहे थे थोड़ा स्प्लिट अप्रोच लेंगे एंड दे लुक फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ एन ओपनिंग, but ये जाते with 13 seconds on the clock they decide to go for a save. There's nothing that they can do. Apeks जो कंट्रोल दिखा रही है एंशिएंट पे अभी अपने सिटी साइड पे। Initial second half was not that great, but अभी के लिए they have made their way back in and that's going to be 14. 2 और round and Ancient will be again Apeks. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो 2 राउंड निकाले बहुत ज़रूरी है। लेकिन जेकेएम ने जिस तरीके से ये खेला राउंड, मैं तो दाद देना चाहूँगा, बिकॉज पता था स्मोक कहाँ से लाइन अप करते हैं प्लेयर्स, टेंडेंसीज, जो होमवर्क की बात करता हूँ मैं, यही करके आए हैं। एंड ईजी किल, आउट स्मार्ट किया सामने वाले प्लेयर को एंड बुली करके उनको एलिमिनेट किया। और जेकेएम अगेन विद हिज पुश, 2 मिल जाएगा, उसके बाद एक हिंडर उनको गिरा देंगे, बट रैम से भी पुश आ रहा था। किक्सन पुट्स वन डाउन एंड ईज इज डाउन। और स्टीको एक हिंडर को थ्रू द स्मोक स्प्रे डाउन करेंगे। एपेक्स इज हंग्री फॉर द 15th। नैफ आखिरी खिलाड़ी रहने वाला है, C4 गिर चुका है। नैफ द ओनली थिंग दैट ही कैन डू इज राइट नाउ आइदर लुक फॉरवर्ड टू एन ओपनिंग या टाइम वेस्ट करवाया, बिकॉज देयर डजंट सीम टू बी अ चांस इस राउंड को वो अपने नाम के तरफ लेते हुए नजर आ सकते हैं, अपनी टीम के तरफ मोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। व्हाट अ पुश कमिंग फ्रॉम जेकेएम, एंड उसके तुरंत किक्सन का भी जो पुश आया, इनसेन, मतलब दैट वाज पिक्चर परफेक्ट टाइम्ड फ्रॉम बोथ दोस प्लेयर्स। जी हाँ, पिक्चर परफेक्ट टाइमिंग था। एंड एपेक्स, दाद देना चाहूंगा मैं उनके कॉन्फिडेंस की, जिस तरीके से उन्होंने एग्रेशन दिखाया ऐसे क्रूशल राउंड में, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन भरोसा जताया अपने आप के ऊपर यहाँ पे। लेकिन नैफ 38 सेकंड्स ऑन द क्लॉक, सोच रहे थे कि अगर पिक मिले तो वो निकाले, लेकिन नहीं, नैफ उनको इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो किल्स है, जेकेएम ने जिस तरीके से यहाँ पे किल निकाला, 2 किल्स निकाले एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो बहुत जरूरी था। पिंसर किया है इन्होंने, शानदार प्रदर्शन यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग गेम की जो नॉलेज है वो दर्शाई उन्होंने। नैफ अभी के लिए तो जरूर राइफल अपने तरफ बचा लेंगे सीटी पे हाइड करते हुए, but that just brings Apeks to map point. Super happy Apeks and Apeks के फैंस। पहले मैप जैसे उन्होंने चुना था, जैसे पिछली बार लिक्विड को हराया था, दोबारा हराती हुई नजर आ रही है। अभी तक हुआ नहीं है, but that's how it looks. स्ट्राइकर के ऊपर किल जरूर निकालेंगे, फर्स्ट पिक मिला था, लेकिन जेल को भी डैमेज पड़ रहा है। नॉक इज नॉट गोना मिस दैट इनक्रेडिबल शॉट, फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पे वो जिंदा रह पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला। पीछे हटेंगे
टीममेट के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जेकेएम धीरे धीरे क्रीप अप कर रहे हैं. ओसी ऑलमोस्ट बीइंग टेकन डाउन, लेकिन नो यू कांट बी मिसिंग दोस सन. ऐसे शॉट्स आप मिस नहीं कर सकते, लेकिन ओसी और लेकिन दोनों की एचपी बहुत ज्यादा कम है. जिया लिसन क्या रीटेक करना चाहेंगे यहाँ पे? मुझे नहीं लगता रीटेक करने की कोशिश करेंगे, अप्रोच भी करेंगे. ये ऐसा एक्चुअली है इनके पास, आई डोंट सी व्हाई दे वुड नॉट वांट टू गो फॉर द रीटेक. Dixon and Jakim थोड़ा कम नजर आ रहा है, so I think they would want to look forward to dropping. But I think free flag मिल सकता है यहाँ पे. Dixon free one on OC, यकिंदर के ऊपर भी crouch peek करते हुए आ रहा है. Oh! What a shot! I mean बहुत कम HP पे थे, but जैसे we love those one tap headshots coming in from the AK, यहाँ पे वो वैसे ही करते हुए नजर आ रहे थे. Oh, nice throw! Nice one with the tech nine. अच्छे खासे पिक्स निकाले थे सीटी साइड ने, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाया उसके ऊपर. एपेक्स सो क्लोज बट येट सो फार. जो उनको पहले मैप की जीत की बू है, सुगंध है, सॉरी, वो उनको आ रही है. बू तो लिक्विड को लग रही होगी अब. AWP वापस नॉक के हाथ में लग चुका है. प्रीवियसली एक पिक निकाला था, बट उसके बाद ही couldn't keep control. He was getting pressurized. अभी के लिए लिक्विड स्लो खेलती हुई नजर आ रही है. They're not getting a lot of space. स्मोक ऑफ किया जा रहा है एंगल्स को. मिड के तरफ भी कंट्रोल लेने के लिए मौका नहीं मिला, बट स्टिल यकिंदर फोर्स दैट एंड इज टेकन टॉप मिड कंट्रोल. नॉक पिक्स अप ओसी. डोनेट की तरफ नजर बढ़ा रहे थे एंड वहीं पे उनको गिरा देंगे. टॉप मिड कंट्रोल ले चुके हैं. ही इज ओनली गुड फॉर वन. जेकेएम विद अ ब्रिलियंट ट्रेड. ओह, पुश अप कर रहे हैं. रैंप पोजीशन देख चुका है. नाइस फ्लैश. हिल बैक ऑफ. विद दूसरी ओर केव की तरफ एक प्रेशर आ रहा है एलिज की तरफ से. इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग. स्मोक डिसअपीयर होगा. जेएल माइट बी अ फ्री फ्रैग हियर. एलिज इज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. दूसरी ओर एक बैकस्टैब भी आ रहा है. कैन समबडी चेक दैट? जेकेएम नाइट्रो को डाउन करेंगे रैंप की तरफ से. स्टीको पिक्स अप वन. एलिज को भी देख लेंगे. दैट इज 16 फॉर एपेक्स. क्या ही शानदार प्ले, क्या ही शानदार मैप एंशिएंट पे एपेक्स ने निकाला है. स्मार्ट, टैक्टिकल, ऑन पॉइंट, ग्रेट डिसीजन मेकिंग, ग्रेट कॉल्स कमिंग थ्रू. नो ओवर एक्सटेंशन. एक राउंड में किया था थोड़ा ओवर एग्रेसिव एंड ग्रीडी बनते हुए, बट दे इमीडिएटली गॉट दैट रेन इन कंट्रोल. %70 विन रेट. 23 बार खेल चुके थे, ये 24 बार हो जाएगा. एंशिएंट एक और बार जीत के जाते हुए, लेकिन ओवर पास. ये लिक्विड का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैप है. 80% विन रेट है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ओवर पास लिक्विड 5 बार खेला पिछले 3 महीने में, और एपेक्स 17 बार खेल चुका है. सो ओवरऑल जो ग्रैंड की बात कर रहे हैं वो एपेक्स के पास काफी ज्यादा है. सैंपल साइज बहुत बड़ा है, बट इट रिमेन्स बी सीन. क्या 2-0 होगी लिक्विड यहाँ पे? ग्रैंड स्लैम विनर टीम. Are they going to get knocked out 2-0 या फिर ये जाएगा तीसरे मैप तक? Not too sure अभी के लिए मामा, because it was an interesting first game. अभी जैसे आपने बोला, there are some very nearby stats coming in from both the teams and overpass की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे. There can be anything that can happen. हमने अभी पिछले गेम में देखा overpass was so dominating from one end and वहाँ पे वो सेमीफाइनल्स बनते हुए नजर आए. So I think I would want to expect something coming in. Team Liquid ने पिक किया. Similar performance अगर दर्शा पाए, we sure have the third map on our hands. But वरना Apeks, if they're ready for it, they might just close it right here. जिस हिसाब से अभी खेल के दिखाई है, they had that discipline and control. Discipline, control and confidence. ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी. उनको पता था एग्जैक्टली किस तरीके से रिएक्ट करना है. अगर सीटी साइड पे भी एग्रेशन दिखाना है तो कहाँ पुश कर सकते हैं. अच्छी तरीके से पिंसर किया था बी साइड के पास जब जेकन ने मिड की तरफ पुश किया था. आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. लेकिन 7-1 स्कोर लाइन पे किंडर का वो राउंड, वो मैं कभी नहीं भूलने वाला. आई थिंक वो एक राउंड मुझे जिंदगी भर याद रहेगा. जिस तरीके से उन्होंने ऑडियंस का फायदा उठाया, अपने माउस गोल घुमा के. आई थिंक उसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है. And he was barely surviving. 22 HP था उनके पास. I think उनके ऊपर भी अगर एक भी गोली चलती तो it could have been a round जहाँ पे जीतती हुई नजर आ सकती थी आसानी से Apeks. Brilliant show right as of now, but अभी के लिए जाएंगे एक छोटे से ब्रेक. उसके बाद आएंगे with the second map. We'll see if Liquid has something to say.
Let's take this break. Apeks dictate the pace on the offense, leaving Liquid almost no room to be breathing on theirs. The scoreline settles at 16-10 and even more dominant than the last time these two teams faced. And Jacob, that comes off the back of a lightning fast first half for Apeks, where they were just able to dictate Liquid every single step of the way. They owned Liquid in that first half. They completely controlled the pace of the game, completely controlled Team Liquid as well, and had them exactly where they wanted them. Again, a great showing coming out of Kixen. We highlighted him coming into the game. Perhaps the best signing of all of 2023. The way he's conducting himself together with the rest of the Apeks boys right now has been nothing but stellar in this game so far. They were prepared, they were good. There was a lot of fast strats, there was some more set strats from the beginning of the spawn. So overall, just a complete package, and I felt like the game was already over after the first half. Apeks have shown that they are, in fact, a good Ancient team. I was painting the picture, obviously, that I think Liquid are going to take the series. I still have some faith in that, but I would say that what Apeks is doing on a couple maps right now is showing signs of what we're seeing in the Tier 2 space, where some of the efficiencies in terms of nades and protocols are just a little bit more efficient than they are in Tier 1 Counter-Strike. They are being just bred to actually become as good as possible, as quick as possible, because if you need to find every single edge you can in online matches, and Apeks, they just have more nades that they can use than Liquid. You mentioned his name. Let's put Kixen under the spotlight. We're talking about an in-game leader who's some stellar calls on that T side, and also putting up the numbers big time as well. Yeah, individually speaking, he had a great showing here in the first game. Great to see he can frag out as well. We talked about it. The T side looked very well structured. You talk about the utility usage. We talk about some of the reach coming in from Kixen and some of the individual players as well. It just looked like they knew exactly what they wanted to do, and that's a nice thing. All these teams, they're preparing a game plan. They're coming into a game with a certain vision of how do we want to win this game? How do we want to approach it? How do we want to make it play out? And I have a feeling that if you ask the Apeks players, it played out exactly as they imagined. They were prepared coming against Liquid. They knew exactly where to hit them, and a couple of times it felt like Liquid didn't know what was hitting them whatsoever. I remember around where Nitro was standing with a nade in his hand over on the A bomb side, getting caught off guard. We saw Stuku sneak out on the B bomb side, so it just felt like Apeks were always one step ahead. Well, let's roll it on back to that first half and take a look at a particular example from the T side of Apeks, where they're looking proactive with the Mahone zone. That's correct. So what I actually want to talk about is this round from Stiko, the one where he actually sneaks into A. So first, let's take a look, because what I want to actually tell you guys is that it's actually very calculated and off the back of some homework. So first thing we're going to see here, I'm going to show the round. Initially starts out with Stiko. He sneaks all the way towards Temple, and he finds these two kills like we remember. One towards OC in the back here, as well as a player towards that donut side, and then lastly finishing off the round onto Nitro here. Now, what's interesting about this round is that a very similar round happened in the last time they played against each other. If you look at this moment right here, last time they played against each other, 13-12, it was a BO1 on Ancient. Same situation, because if you look at the radar right here, Liquid have gone for their standard 3-2 push towards mid and B, meaning that the A side is open. Now, obviously for this first time, Stiko isn't quite sure whether or not A is open. So you can see that the very first time he goes for this, it's very hesitant. He isn't quite sure whether or not he wants to go in. But it does pay off this time when he does it in the last BO1 against Liquid on Ancient. But you see that today, in this exact same situation, look at the radar again. 3 people pushing towards this B side, 2 people towards mid. Look at the reaction from Stiko this time. As soon as kills start happening towards that B side, he immediately runs towards A.
he knows right away there's a very good chance that the A bomb site is clear, so he runs. And this is why he's able to get that advanced timing, is because he understood from last time what this round was from Liquid. And on top of that, Apeks, they further sell it. They throw nades as if they're all just behind this choke point here. They throw Molotovs, and all that does is just buy time for Stiko to wrap all the way around, because Liquid, they're focused on A main right now, and that allows Stiko to then find these 2 kills in the back. So although a very calculated risk, it was really off the back of some homework from last time, and that's really the value where you have to make sure that if you're going to play an opponent from the last time, make sure to learn from your mistakes and make sure to learn from what actually worked last time. Stiko did this here. Brilliant job from him. Brilliant job from you, Danny, as well, because you literally took the words right out of these 2 gentlemen's mouth that they said in the green room. It was very clear that Apeks had done their homework coming into that particular round, and so many in that round. There's 2 sides to that coin, because as much as we want to praise Apeks, which we already done, great play by Stuko, great preparation, come on, Team Liquid. You're playing in a major quarterfinal. You already played them once, and we speak about it all the time. When 2 teams are facing each other in the same tournament, when you're on the losing side, you're going in, you're diving into that demo, you're diving into that game, figuring out everything that went wrong. It doesn't seem like Liquid prepared themselves for Ancient, at least not as good as they should have. And the thing is that also, when we talk about rematches, especially on the same map, we usually give it to the underdogs or the team that lost the last time, because we say that they're going to learn from all their mistakes. But what Apeks did is they also learned from a win. Learning from a win takes such composure. The coaching has to be there. Everyone has to be on board, because usually when you just win a map, you just walk on it off and you just say, yeah, that was us, all us. We don't need to learn from that. Let's just move on to the next match we're going to play. So for Apeks, this is something that I've been consistently finding to be a theme for them. They've shown this also in their vlogs, that they anti-strat heavy. We could see how the fruits of their labor were able to find them that round right there. And for Apeks moving into the next map too, I'm starting to get a little bit worried for Liquid, because it simply feels like Apeks were more ready for this map than Liquid were. The nades on top of that on other rounds, they're just using less utility. Liquid's dumping so much in the beginning. Apeks has so much more for mid and late rounds, and it's allowing them to go for retakes. It's allowing them to find map control later. They're splitting up bomb sites better, because they're just holding onto their nades better, because they know what Liquid's doing and how they can play off of it. And in that round as well, Jacob, we get to see one of just a plethora of highlights coming out of Stiko. We talked about him to be, you know, one of the more experienced players on this lineup. So he knows exactly what it means to be playing on a major stage. Well, that's the thing. He's also the weak link in the lineup in terms of firepower, but you couldn't see that whatsoever in this game. Individually speaking, he came in well prepared. He won the duels that he was supposed to win, and he even won a couple of duels that he wasn't supposed to win. I'm sure this highlight reel is going to do Stiko justice, and that's a good thing. We speak about him. We highlight him saying that individually speaking, he can't be targeted. He can be a weak link within Apeks lineup, but when he has a game like this, then everything is just coming together. Everything is working. I even said it in the green room to you, Maui. I saw Nok at 16 kills, 9 deaths, and I said to you, I haven't even remember a single Nok kill in that game. And that's because it wasn't really needed. It was Stuko, it was Kixen, it was the team just coming together, gelling together, and it just looked like it was too easy for Apeks. And then we come into the later stages of that game, and I want to reflect back onto something that Mahone was talking about as a danger of Apeks coming into this particular ground. The explosivity that they are able to deploy as a squad. Round 24 really showed that, because they really upped the tempo, Jacob. Yeah, look at it. Look at it. We have the round for you in front of you right here. It takes roughly 10 to 15 seconds. Round done and dusted. It's full-on aggression. You see it right here for Jacob getting a nice multi-kill. You have another player rushing down here in Kixen, going for the duel, winning the duel, and just continuing all the way down in T-spawn. And you have JL peeking out as well. This is a team that is not afraid to play Counter-Strike whatsoever. Kixen inside T-spawn in a 4v2. 15 seconds into the round. You're Apeks. You're supposed to play like an underdog. You're supposed to respect your opponent, but they didn't in this game whatsoever. You're up 14-9. You're playing with confidence, and you basically was just punching Liquid in the face time and time again. There's one thing I want to show in that clip once again. Take a look at the very beginning of this round as it's commencing. Jacob is flying down. He gets that kill all the way towards Tetris. But then I want to talk about the second kill, the one that Kixen finds as he's pushing down the B ramp. Right here. This kill right here, you could just pause it right here. He's not supposed to be here. Kixan is not supposed to be there. Just rewind it 1 second, and what he is doing is he's playing off of the fact that Liquid aren't conditioning him to play back. What Apeks did in that first half is they mollied that top B ramp every single time. They always do it, so you couldn't run this same play against Apeks. But Apeks, because they know Liquid aren't throwing that extra Molotov, then that allows the CTs to enact plans like this. Just an incredibly prepared map for Apeks coming into things. But just to contextualize this whole quarterfinal
final series, we were saying coming into this, Jacob, Apeks needed to win Ancient if they had any hope in this series, right? Yeah, because we're moving into Overpass now, and it is a map we've seen Team Liquid play at a very high level. It's a map they often win, but also a map they have shown, I'd say, weaknesses on a little bit in the tournament. They had a game against Into the Breach where it went into overtime, where they really had to fight for it. Again, you're looking at the win percentages as well for Apeks. Yes, they have 59% win streak or win rate on the map, but the last 4 games coming into this tournament, they won on Overpass, and they win against some pretty decent teams. They've lost at this tournament to GamerLegion 16-9, but as we've seen today, GamerLegion is no joke whatsoever on a map like Overpass. So as much as I want to say Liquid are the favorites, I'm starting to get a feeling that Apeks perhaps have what it takes to win this 2-0. I will say the one thing that we've been talking about as a theme for Apeks is knock, and just kind of that he's not necessarily explosive. And when you don't have an opper that's always taking charge on a map like Overpass, that's when your defense can feel a little bit flimsy. If you play too far back to the site, which Knock likes doing, Knock likes playing all the way back, then Liquid, they're going to find so much more space. We saw that the Riflers can be very forward in terms of their play for Apeks, but on Overpass, you actually just need it to be your opper. You can't always rely on the rifles, even if you're throwing good utility to disrupt your opponents. And so for me, that's why I actually give this as a huge advantage to Liquid, just because I haven't seen Knock take the same liberties as many of the other world-class oppers do on this map. The stakes still incredibly high for Liquid coming into this one, but you guys get involved at the action at home. Head on over to Blast.tv because you can have a say in what map we're going to be playing in the show match ahead of the grand final on Sunday. I'm just taking a look around the camera. Mirage was banned out. Man, I hate that. No, I like that. But maybe we're going to get Anubis. I don't know. What would you be banning, Jacob? This is your time. I've already banned Vertigon, so I'm happy. Yeah? That's all you don't want to see. I just hate Maui, what do you want to see them play? I want to see Anubis. I want to see Anubis. Hell yeah. Give me the new map. Make me and Maui happy at home. Make us happy. Go ahead and vote for that. Maui, are you worried? Are you sweating? Are the nerves getting to you? Do you feel like this would be Liquid losing 2-0 in a quarterfinal? No. Not 2-0. Not 2-0. Anubis will be another story. We'll get to there when it comes, as it will. When it comes. When yeah? it comes, okay. as it will. I have confidence that Liquid are going to be bouncing back here on Overpass. Honestly, when Liquid are shaping their map pool, I think this is one that has actually done them very well in terms of just the calling. Yakinder has surprisingly just impressed me as an in-game leader on this map. I think that has to do with calling your own number, getting into the zone, and we'll see actually if this roll. Oh, what the? I was going to make a bet on that one, but never mind. You know, get your you win some, you lose. There we go. You can do it again. If you get to blue, if this is blue, Liquid wins. If it's purple, Liquid wins. Oceans all around. If it's blue or purple, Liquid wins. Together. No. Yeah, Liquid win. That's it. Liquid are winning it. Yeah, I'll buy that. I think Team Liquid. I think Team Liquid is going to win as well. One thing I do want to point out though is that we saw Team Liquid play against Into the Breach, and they got 5 T rounds. 5 T rounds in that game, but they were up 4-0 on the T side. They won the pistol, they converted, and from that point onwards, they only won 1 buy round on the T side. Apeks is starting on the CT side right now, so unless Liquid is coming out and playing much better T side play, they need to step it up. Liquid could lose this one too. Liquid tournament life truly on the line, but their map pick of Overpass on the horizon. Let's see if they can turn the tides. The Vitality fans are watching, and they want to find out who they'll be facing in that semi-final. Apeks 1-0 up, Chad. This is getting spicy. Yeah, this could be over in 2. I agree with the Des. One of the two teams have come to play today, and one of them still needs to wake up. Liquid with a slow start. Suddenly becomes synonymous with the name right now, but this is their map choice. This is their time to turn things around and take us to that 3rd. And so, ladies and gentlemen, put your hands together. Second map, Overpass Liquid. It's do or die. It's sink or swim. चलिए शुरू करते हैं. एक और उम्मीद रहेगा लिक्विड के लिए. क्या यहाँ पे जीत पाएगी? अपना पिक रहेगा. शुरू हो चुका है फाइट. दे विल बी स्टार्टिंग ऑन द टी साइड. अगर यहाँ पे नहीं कर पाए तो यही से घर जाना पड़ेगा. डेस्ट ने भी बात की है कि दिस इज देयर, डू इट और गो हियर. सिंक और स्विम. Liquid, stakes are all the more high. बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी. They're fighting for survival. They're not just fighting for a map win. अगर यहाँ पे वो हारते हैं तो फिर सीधा रवाना होना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए. एंड Jakinder यहाँ पे शायद स्पॉट हो चुके हैं. Jakim, actually no, Jakim ने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, मैप कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन Jakinder बेहतरीन पोजीशन में वहाँ पे बैकस्टैप करने के लिए. लेकिन Jakim वापस देखिए, और नेवर माइंड, Jakinder किल निकाल लेंगे उनके ऊपर.
अब दिक्कत होने वाली है एसटी को, क्या दरवाजा खोलेंगे? जी नहीं, बूस्ट करके उनकी टीम में, ओह आई लाइक दिस, रियली लाइक दिस, बूस्ट कर सकते हैं वहां पर, लेकिन ओसी एक और किल निकाले। अगर नहीं, एपेक्स अगर बार बार पिक होते रहेंगे तो फिर कोई मौका नहीं मिलने वाला है एपेक्स को ये राउंड निकालने का। किक्सन कैन गेट वन मोर, हैव टू गेट वन मोर, लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाएगा। यकीन गेट्स 2 मोर, जो लीड्स उठाई थी उन्होंने चिकन के पास से, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बात करते ओवर पास। लिक्विड स्पंज कह रहे थे अभी कि ये झाग ही नहीं है, लगता है झाग गई है अब। आई थिंक उन्होंने बोला कि पहले मैप इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स ओके, जितना हो सकता है करेंगे, विल नॉट ट्राई टू फोर्स आवरसेल्फ, पर हमें पता है हमारा मैप कौन सा है, वो पास एंड दे आर स्टार्टिंग ऑफ। आई मीन ऑल्सो उनके जो ड्यूल्स लुक इजी ब्रीजी फॉर देम। किक्सन ने जरूर थोड़ा तकलीफ पहुंचाया गया था जैसे वो बनाने से आगे आ रहे थे, बट अभी के लिए गुड नेड, ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया लेकिन फिर भी इनफ। ये डिफरेंशिएटर हो सकता है, एक गोली सॉरी 2 गोली लगे, 3 गोली लगेगी सामने वाले प्लेयर को बस्ट करने में, लेकिन नॉक। स्काउट लेके एग्रेसिव एंगल खेल रहे हैं यहाँ पे, एलॉन्ग की तरफ 3 प्लेयर्स मूव करने की कोशिश, ट्रिपल स्टैक किया ये साइड पे एपेक्स ने। क्या ये काम करेगा उनके लिए, सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। ये किंडर की बात करें तो वो इस बार कनेक्टर में नहीं है, कनेक्टर में इस बार आपको नाइट्रो देखने मिल रहे हैं। किंडर ये लॉन्ग पर लर्क कर रहे हैं। 5v5 आई थिंक थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल चुका, नहीं मिला है। He's still going in for jump peaks. JL might just be gunned down. बहुत नजदीक आ रहा है, and I think finally वो थोड़ा पिक्सल स्पॉट कर चुके थे। नाइट्रो आ गए, brilliant flash, but he still gets one, and वहीं पे रोक दिया। Oh wow, Skyesports pushes from start, उनको एक मिल जाएगा। He's ready for another one. ये किंडर जेकिन को डाउन करेंगे। There's still the battle going on at short. No way. Finally reposition करना पड़ेगा। They're just backing off right now from lower. इनका तो क्रॉसर ही नहीं दिखाई दे रहा हमें, बट देखेंगे जरूर क्या बिना क्रॉसर गोली चलाई है। नहीं चलता। ओह बरोसी, ओसी ज्यादा डैमेज दे चुके हैं, लेकिन सीको उसका भरपूर फायदा उठा दे। क्या मार पाएंगे? जी हाँ मार पाएंगे उनको, लेकिन तुरंत ट्रेंड निकले, सीवर प्लांट करके समझ नहीं है। एपेक्स, व्हाट अ राउंड, व्हाट एन इनक्रेडिबल राउंड। वो डीगल कमाल दिखाते हुए, चमत्कार दिखाते हुए, जिस कारण से मैं कहता हूँ डीगल बहुत पोर्टेड वेपन। यहाँ पे जेल ने जिस स्मार्टनेस के साथ ये खेला है, उनको पता था द मोमेंट ये स्मोक पॉप होगा, पुश करने की कोशिश करेंगे सामने वाली टीम। This flank was just bad. I mean, कहीं और प्लान करने की जगह नहीं थी उनके पास। एंड वहां पे पीक नहीं आना, सी कुछ मिलता है यहाँ पे। नहीं, we need a knife. 1-1. तुरंत देखिए एपेक्स will come up with a buy for themselves. And push कर चुके लॉन्ग की तरफ से, ready for a playground fight. थोड़ा डैमेज करेंगे, but now he has to back off. यकिंडर अपने टीममेट्स के साथ चैलेंज करने के लिए आगे आ रहे हैं। He needs to be worried, डिंक हो जाएंगे थोड़ा। ओह बहुत ज्यादा ओवर कमिट किया यहाँ पे, बहुत ज्यादा ओवर कमिट किया। सैम सॉरी, गो ऑन। बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके थे, he just backed off. But जैसे आपने बोला, like might be a blunder. लॉन्ग पे वेपन गिर चुका है, they can go to recover it because अभी के लिए तो कोई उसको चेक भी नहीं कर रहा है, और not even keeping in check in guard. And I think Liquid का वही इरादा है, they might look forward to recovering the weapon and then look forward to an execution. जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये गन उठाएंगे। This could be that onfall. Liquid क्या इस चीज का फायदा उठा पाएंगे? M4 अभी तक उठाई नहीं है, लग रहा है उनको शायद कोई होल्ड कर रहा हो सकता है, लेकिन जी नहीं। डिक्सन बेहतरीन पोजीशन पे यहाँ पे, लेकिन उनको किल निकालना पड़ेगा सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट। ये किल निकाला जरूर है, लेकिन अब नॉक के पास इंफॉर्मेशन है, ट्रेड नहीं होना था। लीज को शायद टेक डाउन कर पाएंगे यहाँ पे। जी हाँ लीज आगे आ जरूर है, लेकिन ओह माय गॉडनेस, किक्सन ने जो भी किया वहां पे नॉक 3 किल निकालेंगे।
किक्सिंग का जो सैक्रिफाइस है बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। नॉक 4 की निकालेंगे फमास लेके वहां पे, बेहतरीन क्रॉस फायर, बेहतरीन बेट एंड स्विच एंड टू क्लोज फॉर कंफर्ट। मैं कहूंगा उनका चेहरा देख के पता चल रहा है कि ये खुश नहीं है, ज्यादा क्लीन राउंड नहीं था ये। I mean, he also needs to be a little bit thankful to his teammate Gel. उन्होंने डैमेज किया था जिसके वजह से तुरंत वो नॉक के ऊपर टूट नहीं पड़े एंड नॉक उसका पूरा एडवांटेज उठाते हुए नजर आया। एंड यू सॉ द लास्ट प्लेयर, उनको पता था ही हैज टू डू समथिंग, स्पैम करते हुए शुरू किया बट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम। सेव करने में मजबूर टीम लिक्विड अपने मैप में। शुरुआत मिली थी बट उसके बाद इट इज एपेक्स स्टिल लुकिंग गुड। फ्लैश आएगा, नथिंग वर्क्स आउट, इनिशियल कांटेक्ट एक जरूर मिलेगा, नैफ उसको तुरंत ट्रेड करते हुए नजर आएंगे बट शॉट पे एक खिलाड़ी रहने वाला है। ही पिक्स अप वन फॉर हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर अ सेकंड बट अ नाइस हेडशॉट कमिंग थ्रू फ्रॉम नाइट्रो, बट वापस शॉट से खिलाड़ी आएंगे, लुकिंग फॉर अ सेकंड एज वेल, किक्स इन राइट नाउ मेकिंग श्योर एवरीबॉडी गोस इन। नॉक आएंगे हेवन से उनके आखिरी पिक लेते हुए। इट इज गोइंग टू बी एपेक्स विद अनदर। एपेक्स जिस तरीके से डोमिनेट करे फिलहाल बहुत शानदार नजारा है। जो फर्स्ट मैप का मोमेंटम था उसी के साथ कैरी ऑन करते हुए बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए लिक्विड दे नीड टू स्टेप अप। पहला प्रॉपर बाय राउंड आने वाला है जहां पे दोनों टीम के पास वेपनरी होने वाले, और ये जो स्मोक है बहुत इंपॉर्टेंट स्मोक। मॉन्स्टर का कंट्रोल डिनाई करते हुए जेकब लास्ट राउंड बहुत ज्यादा ओवर कमिट किया लेकिन टीम वाज गुड इनफ टू क्लीन इट अप। अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच करना चाहेंगे। डिफॉल्ट नहीं कर रहे, मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहे, स्मोक हटेगा तुरंत एक्सप्लोड करने की कोशिश होगी यहाँ पे। एंड किक्सन ये अंदाजा लगा चुके हैं कि शॉट से भी एक्सप्लोड हो सकता है, तो इंसेंडरी डाल दी वहां पे किल निकालने की कोशिश, लेकिन डैमेज डिश आउट करेंगे। यहाँ पे गन रीलोड नहीं करी साइको ने, शायद गलती कर बैठे। बैक एंड फोर्थ 3v4 सिचुएशन, नंबर एडवांटेज जरूर है बट ये AWP नॉक की तरफ से। ओह एंड आल्सो किक्स इन ऑन साइड, वाटर से आ गया है, फ्री पिक मिला। उनके सामने जो दो खिलाड़ी रहने वाले बहुत लो है बट देयर इज द कॉर्नर, ही नीड्स टू क्लियर, ब्रिलियंट हेल्प विद जेकब कमिंग थ्रू। आखिरी दो खिलाड़ी, किक्सन को पोजीशन एक का पता चल चुका है, दूसरा का भी पता चल चुका है एज वेल एग्जिस्टिंग मॉन्स्टर। किक्सन अभी ओवर कमिट नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे उनको पीक करने के लिए क्योंकि C4 जो है उनके सामने फ्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, गिर चुका है। इट इज 2v2, barely surviving are the players from Liquid. बाई राउंड था इनका एंड नॉक एंड किक्सन टुगेदर put them down. Apeks एक एक कदम एक एक राउंड लेती हुई नजर आ रही है। Liquid are unable to do anything. उनको क्यूज पता है, पोजीशंस पता है, but Apeks is just proving better in the duels. देखिए FPS गेम है, at the end of the day अगर आप if you can click heads then I think there's nothing better than that. No amount of strategy आपको बचा पाएगी, कोई भी strategy लगा लीजिए आप। लेकिन किक्सन की मैं बात करना चाहता हूँ, काफी पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। किल्स निकाल रहे हैं, जब भी जरूरत होती है बेट करने की तब बेट कर रहे हैं। लेकिन लिक्विड जैसा स्पंज ने कहा था, झागने की जरूरत उनको, बहुत ज्यादा राउंड्स दे रहे हैं एपेक्स को। और अगर एपेक्स ये मैप निकाल के जाती है अपसेट जरूर होगा, बट एट द सेम टाइम एपेक्स को क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज जिस तरीके काउंटर स्ट्राइक वो खेल रहे, जिस ब्रांड की काउंटर स्ट्राइक खेले हो फिलहाल, वो शानदार है। डोर ओपन था, स्पैम किया, थोड़ा डैमेज डिश आउट हुआ, बैड little damage but Steve को पोजीशन पता था, फ्लैश हो चुका है but फिर भी he gets the second. That's nasty. I mean उसी के साथ C4 गिर चुका है। It's a lost cause जिसके लिए फाइट कर रही है लिक्विड अभी। एब्सोल्यूट लॉस कॉज, लेकिन G2 सपोर्ट है यहाँ पे। हाँ जी, काश G2 हो पाती। निको एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम जो अभी तक एक भी मेजर नहीं जीत पाए एंड वो वैसा ही रहने वाले काउंटर ग्लोबल ऑफेंसिव में एटलीस्ट। बट स्काइको वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स जो 16/9 पे खेलते हैं, और बाकी सारे काउंटर स्ट्राइक प्लेयर्स प्रेफर करते हैं 4x3 स्ट्रेच पे खेलने का।
Team Liquid time out जरूर लिया, but looking at them, they don't look very stressed, but वो disturbance थोड़ा नजर आ रहा है उनके चेहरे पे. They're getting a little worried. उनको भी पता है अगर ये मैप पहला आ जाता and it could have been a different scenario, maybe Liquid would have played better. अभी वो प्रेशर के ऊपर खेल रही है कि पहली मैप वो हार चुकी है and now this map is going to be the recovery map. I think उसके वजह से ज़्यादा तकलीफ उनके लिए हो रही है. बहुत तेज़ी से बनाना कंट्रोल लिया जाएगा. दूसरी ओर मॉन्स्टर का कंट्रोल लेने के लिए थोड़े नज़दीक आए थे स्नैप, बट इट एवेंचुअली गेट स्मोक्ड ऑफ. कोई इन्फो नहीं मिलेगा अभी के लिए बनाना का कंट्रोल लेते हुए, एज वेल एज कनेक्टर. एपेक्स they'll make sure कि लिक्विड जैसे ही टीवे से आए अपर से बाहर, they're stuck at fountain. जी हाँ, ये देखिए डबल स्टैक किया था, पहला किल जरूर मिला लेकिन ट्रेड तुरंत लेंगे. लिक्विड प्लेइंग द नंबर्स एडवांटेज बेहतरीन तरीके से, लेकिन नॉक के पास अभी भी ऑप है, वो जिंदा है. शॉट के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल लेके बैठे हैं एपेक्स. 5 राउंड की जो विन स्ट्रीक है उनके पास, भरपूर फायदा उठाते हुए उसका. लेकिन अब फाइनली लिक्विड के पास वो मैन एडवांटेज है जिसकी तलाश से उनको इतने राउंड से, लेकिन क्या फायदा उठा पाएंगे उस चीज का, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है. देखो ऐसी पोजीशन में अटके हुए हैं जहां पे अगर स्पॉट होते हैं वो पहले स्पॉट होंगे, उनके पैर सबसे पहले स्पॉट होंगे. ओह माय गुडनेस, स्पॉट जरूर हो जाएंगे यहाँ पे. स्पैम करने की कोशिश, लेकिन लीजन के ऊपर किल निकाल लेंगे. मैं कह रहा था बहुत मुश्किल एंगल था वो होल्ड करना. अब जेल के ऊपर आता है पूरा का पूरा दारो मदार, क्या यहाँ पे किल निकाल पाएंगे? जी नहीं, नॉक को सेव करना पड़ेगा. पैसा है उनके पास, अगर कोशिश करना चाहे एक पिक निकालने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, इसलिए सीधा सेव. थोड़ा और एक्सटेंशन था इस बार. अगेन पिछले बार भी हुआ था जब एक स्ट्रीक मिला था, स्पेशली एट दिस कनेक्टर. डबल स्टैक था बट इट वाज ओनली गुड फॉर वन, एंड वहीं पे एक मैन एडवांटेज आता हुआ नजर आया. एंड आई थिंक आफ्टर दैट स्टीको जैसे वो खेल रहे थे शॉट की तरफ, ही वॉज वेटिंग फॉर दैट पुश, एंड वो सिर्फ पैर को देख पाए, जैसे आपने बोला, ही कुडंट फाइंड वैल्यू, सिर्फ डैमेज डिश आउट कर पाए. एंड दैट्स द रीजन उनका पोजीशन पता चलते ही कुडंट रन एनीवेयर, द एंगल वाज बेटर फॉर एलीज. फाइनली लिक्विड जो स्ट्रीक अभी तक एपेक्स लेके चल रही थी 5 राउंड का, उसको तोड़ते हुए नजर आएंगे. दे विल गेट द सेकंड ऑन बोर्ड. थोड़ी चेन के साथ जरूर लेते हुए नजर आएंगे, बट इट्स जस्ट द सेकेंड राउंड. अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा लिक्विड को अगर ये मैप जीतना है. लिक्विड फाइनली वो राउंड निकाल दे, इतना जरूरी राउंड था उनके लिए. अब देखना बनता है क्या वापस वो सेम एग्रेशन दिखाना चाहेगी एपेक्स. यहाँ पे वो डबल स्टैक जब काम नहीं किया, थोड़ा अनफॉर्चुनेट जरूर था उनके लिए, लेकिन स्टाई को वापस एग्रेशन दिखा रहे. शॉट पे इस बार बी शॉट पे ट्रिपल पी. लेट्स गो. यही एग्रेशन में देखना चाहता हूँ इस टीम के द्वारा. अगर वहां पे ऑफ होती और भी ज्यादा कारगर साबित हो सकता था. 1 शॉट किल, लेकिन नहीं, उनको भगाया जाएगा शॉट से. किक्स इन वापस और एग्रेशन दिखाते हुए. ए लॉन्ग पे रन बूस्ट एंड C4 भी गिरा हुआ है. 8-1 की अब ये हवा लग रही है जिस तरीके से C4 लेके गए थे वहां पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या ये रीच सीटी के पास आने वाला है? जेकम लॉन्ग पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं, लेकिन ये एंगल थोड़ा सा रिस्की है उनके लिए होल्ड करना. मुझे लगता है एलीश उनका गंदा सबसे पहले स्पॉट कर पाएंगे, खासतौर पे जब क्राउच करके बैठे हैं जेकम. तो बहुत रिस्की मैन्यूवर. मतलब ये इतना बड़ा रिस्क है कि अगर काम करता है, कारगर साबित होता है, तो फिर आराम से एपेक्स राउंड निकाल लेगी. लेकिन अगर वहां पे एलीश किल निकालते हैं तो इम्पॉसिबल हो जाएगा. एंटी फ्लैश खेल रहे थे बट किक्स इन. ओह एंड जेकम. एलीज ने सोचा कि वहीं पे एक फास्ट पुश करेंगे क्योंकि तब तक तो कोई चैलेंज नहीं आया था. नो साउंड्स एज वेल. शॉट से अभी भी नाइट्रो पुश कर रहे हैं. किक्सन इज स्टिल किकिंग. यस ही इज. गेट्स द थर्ड. आखिरी खिलाड़ी है उससे आग के ऊपर चले जाएंगे किक्सन टू मेक श्योर कि यहाँ पे लिक्विड अगर कुछ करने के लिए इंतजार कर रही है, सोच रही है, आई विल ब्रेक इट डाउन. ही इज रनिंग राइट अप द स्टेयर्स.
ओसी उनको जरूर निकाल लेंगे एंड वेपन भी बचा लेंगे अपने आप के लिए। अभी के लिए लिक्विड के पास पैसा है, बट ही कुड हैव गॉन फॉर मेकिंग श्योर कि एपेक्स एटलीस्ट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉस्टली राउंड जहां पे वो एक दो और वेपन गिरा सकते हैं। बट किक्स इन, व्हाट अ प्ले कमिंग इन, ब्रिलियंट पोजीशनिंग। जेकिम भी अपने एंगल को छोड़े नहीं एंड जब एलीज ने पुश किया ही गॉट वन। आई थिंक यही मैं बोल रहा था, ड्यूएल सारे अभी तक जीतते नजर आए थे। दिस इज एनॉमली, यस। बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है काउंटर स्ट्राइक कम्युनिटी के, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। ओह नो, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं। शेकिम, ये पोजीशन बहुत शानदार है। Run boost. They were unable to spot him though. First blood जा चुका है। AWP coming in from knock. Strikes right on a lead. Oh, the same thing. So good. Oh, check him. अभी तक छुपे हुए थे पार्टी की तरफ and finally he went to sneak for a sneak peek. Signs of pick मिला. Look at this. Oh, crouching backwards naf. Finally knock को ये Kindle shut down करेंगे, but what a weird way to lose your players. Incredible stuff. I'll be honest, बेहतरीन से बेहतरीन काउंटर स्ट्राइक का यहाँ पे नज़ारा देखने मिल रहा है। इवन दो एक टीम को डोमिनेट किया जा रहा है, लिक्विड स्ट्रगल कर रही है, बट एट द सेम टाइम आपको क्रेडिट देना पड़ेगा एपेक्स को। जिस तरीके से खेल रहे, जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं वो ऑपोजिशन को, सराहनीय चीज़ है। Apeks calling a timeout. And Apeks fans, I think ये कहीं ना कहीं उन players के family members भी हो सकते हैं। That's even more cool, you know? Yeah. और भी ज़्यादा cool चीज़ है, और भी ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि उनके family members इतना ज़्यादा support कर रहे हैं उन्हें। I think that's where you build such a big career and be on this global stage. वरना आसान नहीं रहता है without family support. लेकिन इसका अगर असली अनुभव करना चाहते हैं लैंड पे, सबसे बेहतरीन अनुभव मिलेगा। 7-2 का स्कोर लाइन, एपेक्स यहाँ पे डोमिनेट करे। किक्स एंड एडीआर देखिए, 174, that's unreal, that's unheard of. Stopping the charge on kill 16. अभी तक फर्स्ट हाफ खत्म नहीं हुआ। We are still just done with 10 rounds. 5 और राउंड अभी बाकी है। Quick execution looks like what Liquid have on cards, but ये जो smoke है monster की तरफ, I'll deny them from any quick aggression. But फिर भी they're pushing towards and looking forward to a shot control. Spam किया जा रहा है to look forward to any lower push coming through, but they are still making the sandbags push happen. Kixon still kicking, finds the first jail. दूसरी ओर रहने वाले, they're coming into a crunch. Back and forth इनके ऊपर बुलेट सिर्फ चलाया जा रहा है। एक डायरेक्शन सही तरीके से देख नहीं पा रही है लिक्विड। They just get mowed down. मुझे नहीं लगता लिक्विड के पास इस चीज़ का जवाब होने वाला। उन्होंने एग्जीक्यूट ट्राई किया, उन्होंने डिफॉल्ट ट्राई किया, लेकिन हर एक चीज़ का जवाब है एपेक्स के पास। एक प्लेयर हर बार एंटी फ्लैश खेल रहा था, जो प्लेयर एंटी फ्लैश खेल रहा है डिलीवर करता है। इस चीज़ का जवाब लिक्विड के पास मुझे नहीं लगता होने वाला है। ओसी ने ऑप जरूर उठाई है, लेकिन अब किल्स की जरूरत है। क्या ट्रिपल स्टैक करने वाले हैं? मुझे लगता कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं, नेवर माइंड, वो नहीं करना चाहते ट्रिपल स्टैक फॉर दैट फर्स्ट पिक। लेकिन नॉक बहुत ज्यादा एग्रेसिव। ये देखिए जेकम एक और बार कितना ज्यादा एग्रेशन, मैप कंट्रोल डिनाई कर रही है। इसी चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसी चीज की मैं चर्चा कर रहा हूँ। किंडर जैसे भी करेंगे। ओह माय गुडनेस जेकम, यू कांट बी मिसिंग दोस शॉट्स सन। वो शॉट आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे इतनी अच्छी पोजीशन थी उनकी, लेकिन कोई फायदा नहीं, कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। ये राउंड लिक्विड का हो सकता है। आप देख सकते हैं डिसिप्लिन अगेन गोइंग बैक। स्टीको
ऐसे पिक्स चाहिए था. He's walking towards Nitro, but वहां से सीधा कनेक्टर जा रहा है. ये इंटेंशन नजर आ रहा है. एलीज is watching it. Quick snap. but दूसरे खिलाड़ी भी आ रहे हैं. JL good for it. नंबर्स को इक्वलाइज करते हुए नजर आएंगे. Oh my god, the way players are surrounding. आएंगे Nitro, but it was a little bit too late. आखिरी खिलाड़ी रहने वाले. They are trying to go head on. It becomes a 1v1 situation, but Molly लेके जाएगा. Nitro पहले ही खड़े थे लोअर पे, बट उनका पीक नहीं आता है एंड वहीं पे स्विंग आउट करते हुए उनके बाकी सारे खिलाड़ी सीख. Oh my God. कभी कभी आप पूरा सीरियसली कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो एंड देन यू सी द ऑडियंस. Well, super fun. मतलब ऐसे जो भी हमारे ऑडियंस आ जाता है, इसलिए मैं बात कर रहा था. आई थिंक इट शुड बी अ मैंडेट लेटर डाउन द लाइन कि आप अगर कुछ अनोखे नहीं लेके आते हैं प्लान के लिए, इवन दो यू आर अलाउड, यू माइट नॉट बी अलाउड टू एंटर. फ्लैश कमिंग इन, किक्सन का सेटअप, जेकम का खात्मा करते हुए, a train down of bullets coming through. Jakem. The flash and go down. Thankfully ज़्यादा invested नहीं था इस राउंड पे. एक हीरो एक ही जरूर नजर आ रहा है, but man, Mamba, is this a map जो Liquid अपने बलबूते पे पिक किया है? Doesn't look like it. Digital Rattle, आखिरी जो उनको आखिरी मैप में हार मिली थी, उससे बाहर नहीं निकल पाया अभी तक. मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है वैसा. किंडर आ जरूर है, स्टैको के ऊपर किल निकाला, नाफला ने भी जेल के ऊपर किल निकाला. ये नहीं होना चाहिए था इतना ज्यादा मैप. गोदी में गिरी थी वो ग्रेनेड. अब नाफ 13 HP पे. इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, किक्सन होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे. ओह, 1 सेकंड लगा शायद नाफ को किल मिल जाए, लेकिन एपेक्स जिस तरीके से खेल रहे हैं, ऑडियंस भी काफी ज्यादा सरप्राइज है. Oh boy. I think this is just seeing Apex's growth throughout this last Paris Major. उनके सारे मैचेस जितने भी मैंने देखा था, it just was like unbelievable shows coming in उनके प्लेयर्स की तरफ से. उनके कोच विश्वास नहीं कर पा रहे. like, ये सच्ची में हमारा साइड जा रहा है मैप. उन्होंने ये पिक किया था. That's what he's wondering. मामा आप बताइए, like when this is happening, what goes through your mind? Oh boy. क्लासिक लिक्विड की याद आ रही है मुझे, जो हाई स्टेक सिचुएशन में चोक करती थी. कैपेबिलिटी है इनके पास, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जब बात आती है डिलीवर करने की तब वो नहीं कर पाते फॉर व्हाटएवर रीजन. एंड एपेक्स तमाशा बना के रखा है सामने वाली टीम का यहाँ पे. I think that would be the right way to put it. Oh, they're going for a 3. A big 3. Oh no. नहीं Psycho, थोड़ा और eager हो गए. And ये opening दे सकता है. जी हाँ, Akinder punishing them for all that. He goes for a big 3. He's looking for a 4th. Stico comes a little bit off guard, but Naf is there and he closes it. Oh, Mamba. The timing. Oh, I'm literally pressing my head right now, like, oh, so quick to act. Wow. एक और राउंड हो सकता था, बहुत डोमिनेंट राउंड हो सकता था यहाँ पे एपेक्स के लिए, लेकिन ये जो सिचुएशन होती है उसके बाहर निकलना पड़ता है. और जिस तरीके से ये किंडर ने वो किल्स निकाले,
वो वापस निकालने पड़ेंगे। ऑडियंस का चांस शुरू हो चुका है। मांबा आई थिंक एक गलती यहाँ पे किया है जरूर एपेक्स, बट पिछले बार भी हम देख पा रहे थे लाइक एपेक्स गलती करने के बावजूद दे रिकवर एंड लुक एट देम बिकॉज वो कंसिस्टेंट ब्रांड ऑफ काउंटर स्ट्राइक खेले जहाँ जो भी इनका डिसीजन मेकिंग है बहुत सॉलिड रीजनिंग के साथ ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लकीली उनको पिक्स मिल रही है, मेथोडिकली वो पिक्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओह नो, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फॉलो अप शॉट। ये देखिए कितने ज्यादा खुश। आपने शायद सही कहा, शायद उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जितनी पैशन के साथ चीयर कर रहे हैं यहाँ पे। I think by the end of this game I just might have goosebumps. जिस हिसाब से Apeks, I think I'm not too sure जो हो रहा है अभी के लिए। जो भी ओवरपास मैचेस हमने देखा है, it has been only one team completely having everything in their favor. Daps, can he change something here for Liquid? आखिरी टाइम आउट भी वो भी अपने फर्स्ट हाफ में इस्तेमाल कर चुके हैं। I think Cuban is like, मुझे कुछ बोलना भी है। I don't think so. जिस हिसाब से वो टीम खेल रही है, they're zoned in. उनके सामने सिर्फ एक टीम नजर आ रही है, Liquid, take them down. There's nothing worrying Apeks right now. That's how zoned in they are. 11-3. आखिरी राउंड। Weapons रहने वाली है, but can Liquid make some magic just before finishing this half? Check him. आगे भी आने के लिए मौका नहीं देते एकिंदर को। Already number disadvantage for Liquid. And now they're worried. Look at the long route they're taking. फाउंटेन की तरफ जाना भी नहीं चाहते, प्लेग्राउंड से लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, बट वहां पे तैयार है none other than नॉक। थोड़ा चिंतित है अगर कहीं ना कहीं वॉशरूम से पुश आ जाता है तो। He's quick on all those checks. ओसी वो किल जरूर निकालेंगे, जरूरत थी उनको ओपनिंग की, खास तौर पे जब जेकेम ने वो एंट्री फ्रैग निकाला था येकिंडर के ऊपर। मैन डिसएडवांटेज इक्वलाइज किया है, साइड में घुसने की पूरी कोशिश, लेकिन जेकेम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। शॉट के ऊपर वो किल निकाल पाएंगे जरूर, प्रेशर बना रहे, जितनी देर जिंदा रहेंगे उतना ज्यादा प्रेशर बना पाएंगे। ओह माय गुडनेस, नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये। मोलोटोव आई है लेकिन किल निकालेंगे। ओह बॉय, बैकस्टैप, he flank. Naf, he's not made a lot of sound. Trigger discipline, huge, और turn around कर लेंगे स्टी को। अब पता चल चुका है Naf, he's flying with the AWP. Can he do something? Oh my bad, it's OC. He picks up one on kicks and defuse के लिए already जा चुके हैं। Naf and OC make it happen. 12-3 का स्कोर लाइन नहीं होता है। It is going to be 4-11. Apeks knew they could, but वो flank. Brilliant play from Naf coming through, and then OC with the AWP step up किया जब चाहिए था। His opening on knock, उसके बाद the closure to make sure that defuse or like cover is not there for the diffuser. जिस तरीके से शुरुआत से खेलते आ रहे, पहला राउंड हारे थे, उसके बाद रिकवरी उनकी हर एक बार आउट क्लास किया लिक्विड को, और जो भी राउंड्स हारे थोड़ी छोटी मोटी गलती की वजह से हारे। यहाँ पे येकिंडर अनाउंस करते करते निकल रहे थे, इवन तो एक वॉल बैंक पे किल निकालने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए। स्टाइको क्रूशियल किल्स निकाल रहे थे यहाँ पे। ऑन टॉप ऑफ इट जो गोद में ग्रेनेड डाला गया था, ये फ्लैश बैंक में किल, जितनी तारीफ करे उतनी कम। I think your scoreline could have been even worse for Liquid. ज़्यादा
I feel like 2-3 राउंड यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड करके एपेक्स ने गलती किया, वरना we could have seen a scoreline of 13 as well coming through. But I think duels have been working out really well. Utils on point रहे एपेक्स की तरफ से. Look at this, यही बता रहे थे किक्सन का फ्लैश इन तुरंत जेकिम का स्विंग. This was an unbelievable round. Yekinder just casually walked in, right? वो राउंड में Yekinder ने जिस तरीके से एंट्री फ्लैग निकाले, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम, लेकिन नाफ्लाई को यहाँ पे गोली चलानी पड़ी थी, बिकॉज जैसे ही वो पीछे क्रीप अप करने की कोशिश करते थे, क्राउड ने आवाज निकालना चालू कर दिया था. एंड देखिए वहां पे लाइक 0.9 सेकेंड्स बचा हुआ था. अगर नाफ लास्ट 2 बुलेट्स नहीं चलाते, it could have been a defuse and 12-3 का स्कोर लाइन हो सकता था. Such a beautiful trophy. आखिरी मेजर का ट्रॉफी. I mean, वो बोलते ही आपको गूज़बम्स आ जाता है कि ये आखिरी मेजर है काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव का. इसके बाद सीधा हम मेजर के लिए मिलेंगे. It will be on CS2. Daps making use of this half. शुरू होने से पहले बहुत क्रूशियल रहने वाला है. अब डैप्स के इनपुट साइड चेंज हो जाएंगे. जिस हिसाब से एपेक्स ने कंट्रोल लिया, आई होप माम्बा लिक्विड भी वैसे ही अग्रेसिव कंट्रोल लेते हुए नजर आएंगे. 23 ऑन किक्सन एंड दैट्स द फर्स्ट हाफ. क्लोज कॉम्पिटिटर अगर बात करेंगे यकिंडर, बट ही हैज 16 किल्स एंड 14 डेथ्स. किस तरीके से काउंटर करेंगे लिक्विड यहाँ पे. मैसिव स्टेक्स, बहुत ज्यादा प्रेशर, क्राउड भी उनके पास है, उनकी साइड ले रही है. एपेक्स जिस ब्रांड की काउंटर स्ट्राइक खेले, क्यूबन उनके कोच, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, इतना ज्यादा अनुभव, 20 साल से ज्यादा का अनुभव है क्यूबन को प्रोफेशनल काउंटर स्ट्राइक का. पूरा फायदा उठाते हुए. लेकिन लिक्विड वो भी कोई एरी कैरी टीम नहीं है. That team is no pushover. देखना ये बनता है क्या सीटी साइड पे ये डिफेंड कर पाएंगे, क्या एक और मैप तक लेके जा पाएंगे. Will they be able to stay alive in the tournament? या फिर एपेक्स उनको घर के लिए रवाना कर देंगे. देखा जाएगा अगले चंद राउंड्स में. लेकिन अब सेकंड हाफ शुरू हो चुका है. स्टाइको कनेक्टर के अंदर डिफॉल्ट ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखा रहे एपेक्स. वेरी कंट्रोल्ड उनके अप्रोच में. That's how it has been. ए की तरफ जा रहे लॉन्ग से. 3 खिलाड़ी रहने वाले हैं. 3 खिलाड़ी ये जाने वाले थे. C4 थोड़ा बैक ऑफ किया जाएगा जस्ट टू कीप इन चेक कि बनाने से कोई एग्रेशन नहीं नजर आ रहा है. वेरी स्लो स्टार्ट. लिक्विड भी ओवर कमिट नहीं कर रही है. एग्रो जाके इन्फो नहीं ले रहे हैं. बट फाइनली वॉशरूम में मुलाकात 2 लोगों का एंड अलग अलग डायरेक्शन से गोली चलती हुई नजर आएगी. एंड लिक्विड के खिलाड़ी को वापस भाग के आना पड़ेगा. Elige. But on the other end, he calls in Ussi as well and aggress कर रहे बनाना की तरफ. Flash goes in, swing करेंगे. Nobody to spot. No duel to take. 30 second. Finally an initial connection. JKM is going to be the first to fall. C4 गिर चुका है. This is the opening that Liquid needed. OC finds one on Stico. JL फंस चुका है but Kickson tries his best. नॉक भी यहाँ पे साथ देते हुए. पर आखिरी 2 खिलाड़ी रहने वाले अगेंस्ट 3 प्लेयर्स गार्डिंग द C4. 1v1 एलीज अलग अलग डायरेक्शंस में आइसोलेट कर रहे हैं इस ड्यूएल को. बट फाइनली आखिरी खिलाड़ी आते हैं एंड देन ही विल बी ग्रीटेड विद 2 प्लेयर्स फ्रॉम लिक्विड. 5th ऑन द बोर्ड फॉर देम. डेजा वू फर्स्ट हाफ में फर्स्ट राउंड जीता था, लेकिन ये देखिए मोसेस यहाँ पे स्ट्रेस बॉल इस्तेमाल करते हुए. लेकिन जरूर कहना चाहूंगा जिस तरीके से लिक्विड खेल रही है, उनको इन राउंड्स की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाले. ओसी सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे मेजर के 4 राउंड दूर हो. बट ऑफ कोर्स क्यों ना करें.
जितना प्रेशर है उनके ऊपर जिंदा रहने के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर, वो आसानी से काउंटर नहीं कर सकते। अग्रेशन मॉन्स्टर से आगे कंट्रोल ले रहे, टी की तरफ पुश करने वाले हैं, नॉक सीज एंड स्पॉट्स, पर वहीं से वापसी करते हुए नजर आया। बट एक्चुअली दे आर वांटिंग टू चैलेंज। ये किंदर बहुत ज्यादा फुटस्टेप्स सुन लेते हैं, इज गोइंग फॉर अ स्मोक। किक्सन ज्यादा नहीं बना रहे पुश करने के लिए, बट दो लोग ऑलरेडी पुश आउट कर चुके हैं। ब्रिलियंट ग्रेनेड, किक्सन बहुत ज्यादा डैमेज खा लेंगे। अनदर ट्रिपल स्टैक कमिंग थ्रू। आई डोंट थिंक इतना ज्यादा उनको मौका मिलेगा कुछ करने के लिए। जंप स्पॉट सिर्फ कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि इफ ही कैन फाइंड समथिंग न्यू। बट दूसरी ओर इतने नजदीक है एक अंदर, ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके हैं। रैडलसन बुलेट दूसरे खिलाड़ी को बुला लेंगे। Naf and Yekinder want to go together up in the faces of the players of Apeks. Shot से push, okay, वो connector की तरफ जा रहे थे। I thought he'll open the door and shot की तरफ चले जाएंगे। 11-5. This looks like another round जहाँ पे Liquid अपने पास एक और round लेती हुई नजर आ सकती है, but Apeks is still trying to make it work. हो Naf, सारे खिलाड़ी उनके सामने आ रहे हैं। He's going for a spray down, looking for the fourth. Knock is only good for one. उनके पीछे से एक खिलाड़ी आने वाला है, and that's going to be Yekinder. Yekinder and Naf started the round and ended the round. Liquid अभी भी है. They are showing that they're still in the game. I mean, it was an eco round for Apeks. You think of it. बट इंटेंट नजर आ रहा है, जिस तरीके से मैप कंट्रोल ले रहे हैं, इंटेंट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर बाय डाउन होने वाला है। अब देखना जरूर बनता है क्या करती है एपेक्स। यूटिलिटी इतनी खास नहीं है, लेकिन ओसी कैन बी द डिफरेंस मेकर फॉर लिक्विड ओवर हियर, बिकॉज उनके पास ऑप है। अगर पहले शुरुआत में किल निकाल के लेके आ रहे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी एपेक्स के लिए। लेकिन एग्रेशन देखिए यहाँ पे, जहां एक्सपेक्ट करें फ्लैश का इंतजार करेंगे। जी हाँ, फ्लैश आएगा जरूर, लेकिन एलीज तुरंत ट्रेड हो जाएंगे। ये चीज मुझे देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिस तरीके से ट्रेडिंग निकल रही है। लेकिन ओसी ऑप, मैंने कहा था डिफरेंस मेकर हो सकते हैं। जेकेएम को भी टेक डाउन करेंगे, लेकिन ए पे प्रेजेंस दिखाने के बाद बी की तरफ रोटेट करें। लेकिन रोटेशन सीटीज ने अभी तक किया नहीं है। ओसी के हाथ में AWP, वो ए की तरफ रहने वाला है, बट द प्ले कमिंग फ्रॉम एपेक्स लुक्स टू बी एट बी। डबल स्टैक, इंतजार किया जा रहा है अभी के लिए। आराम से। ओह माय गुडनेस, ये गलतियां, प्रेशर बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। हेवन स्मोक कर दिया जाएगा यहाँ पे। नैफ इंतजार तो कर रहे, लेकिन हेवन से प्लेयर भी नीचे कूद जाएंगे। मॉली भी आ चुका है। स्मोक आपका रफली 14 सेकंड तक रहता है, मॉल्ट और 7 सेकंड तक रहती है। उसका भरपूर फायदा उठाएंगे यहाँ पे। लेकिन 2 वर्सेस 2 अभी भी स्टी को अगर ये किल निकाल पाए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। जी हाँ, 1 वर्सेस 2 में कन्वर्ट किया। ओसी हेवन पे है फिलहाल, स्मोक हटने वाला है। एंड ये अब शॉट्स मिस नहीं कर रहे। C4 प्लांट जरूर हो जाएगा। नॉक यहाँ पे पीक करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। स्कोप नहीं करना चाहते ओसी यहाँ पे। इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। जो स्विंग किया, जिस तरीके से स्विंग किया नॉक ने, बेहतरीन, शानदार। आई थिंक ऐसे राउंड्स, आई थिंक जहां पे लिक्विड अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं ना, इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ देम लूजिंग अ राउंड। ये 1v1 जो हारती हुई नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ द क्लच सिचुएशन, दैट्स ब्रेकिंग देयर कॉन्फिडेंस एज अ टीम, एज अ प्लेयर एज वेल। आप देख सकते तुरंत उनकी जो पूरी टीम में वो घबराहट नजर आ रही है, उसी के साथ पूरा चिंता नजर आ रहा है उनके सामने। Apeks calling in, oh it's not Apeks, Cuban अपनी टीम के लिए टाइम आउट कॉल करेंगे, बिकॉज इट वाज नॉट द क्लीनेस्ट ऑफ एग्जीक्यूशंस। बहुत स्प्रेड आउट हो चुका था, प्लेयर्स की कमी भी थी, एंड देन एपेक्स कन्वर्टेड इट, वो इंडिविजुअल ड्यूअल्स की वजह से। यूटिल भरपूर रहने वाली है। लिक्विड ऑन द अदर एंड विल मेक यूज ऑफ व्हाट दे हैव।
Early duel. Good for one. Oh! निकालते हुए यहाँ पे. Smoke it through. Random spray. धीरे धीरे अपनी तरफ मैच खींचने की कोशिश, लेकिन ये जो इनिशियल पिक्स निकल रहे हैं लिक्विड के मिड पे, इस राउंड में तो 2 किल्स निकाल के गए ऊपर से. मुझे लगता है एक कॉन्टैक्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे, एक कॉन्टैक्ट पे 1 किल, फिर डिसाइड करेंगे क्या वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं. बिकॉज मुझे लगता है अब अंदर जाके कोई मतलब नहीं होना. शायद सेव के लिए अभी भी डिसाइड कर लिया हो, लेकिन धीरे धीरे करके दिस कुड बी मैसिव, दिस कुड बी अ बिग प्रॉब्लम. ओह माय गुडनेस, नॉक होल्ड करने वाला ये पहला किल निकाला जरूर है, लेकिन जेल दूसरा नहीं निकाल पाए. यहाँ पे फ्लैश तैयार हो चुका है जेल के लिए अंदर जाने के लिए. ओह माय गुडनेस, ऑलमोस्ट. यहाँ पे अभी भी इंफॉर्मेशन डिले कर दी गई है. नॉक अगर यहाँ पे कोलैटरल निकाल पाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लिक्विड के लिए. ये 1 किल के ऊपर सारा का सारा दारोमदार, लेकिन ओसी ने स्पॉट कर लिया एसटीको को. पैर दिख गया था उनका, जी हाँ पैर दिखाता, और एक और किल स्मोक के थ्रू निकालेंगे, लेकिन अब नॉक को सर्वाइव करना पड़ेगा. बहुत बड़ा प्रॉब्लम. Nice hold coming in from Liquid. Nice push, especially जो पार्टी की तरफ करके आए थे वो. I think those openings were super crucial, and first frags जैसे निकालते हुए नजर आ रहे Liquid. ये duel, it was even Stevens in both the end. वहाँ पे विफ किया तो पनिश यहाँ पे मौका मिला एलीज को उठाने के लिए एडवांटेज. Knock will save the AWP. The Liquid, I mean, momentum इतना बढ़िया नहीं बन रहा है, but हमें पता है जब ऐसे ही एक एक राउंड आता हुआ नजर आता है, नजरअंदाज हो जाते हैं ये राउंड्स. That is when the opponent starts making a lot of mistakes, and ये पूरी गेम पलट सकती है. 5 राउंड सिर्फ दूर है लिक्विड अभी के लिए. साइको कनेक्टर के अंदर एग्रेशन दिखाते हुए नॉक के पास अभी भी ऑफ अवेलेबल जरूर है, लेकिन मुझे लगता है ये राउंड में लिक्विड के लिए आसान होना चाहिए निकालना. एपेक्स उनको समझ में आ चुकी है किस तरीके से मिड पे वो पिक निकाले थे. लीच को हमेशा फ्लैश करके आगे भेजा जा रहा था, जिसके ऊपर कैपिटलाइज कर रहे थे. ये देखिए कितना ज्यादा एग्रेशन, कितना ज्यादा मैप कंट्रोल वापस लेने की कोशिश. सीटीज हर बार ये कोशिश होती है उनकी कि मिड पे कंट्रोल पूरी तरीके से डिनाई किया जाए, लेकिन अब ग्रेनेड भी डाली, कोई डैमेज नहीं. लीच वापस सेटअप करे जाएंगे शायद फ्लैश के साथ, लेकिन नहीं, वो पीछे हटना चाहते हैं. कोई इन्फो नहीं मिला. जस्ट बीन स्मोक्ड ऑफ. लॉन्ग की तरफ C4 के साथ जा रहे हैं खिलाड़ी. अभी के लिए वॉशरूम को स्मोक ऑफ किया गया है. दी एंट्रेंस फॉर एपेक्स. बहुत नजदीक रहने वाले हैं. आई थिंक दिस कैन बी एन इजी वन फॉर जेकिम. क्रूशियल फ्रैग, बट अभी भी खिलाड़ी रहने वाले हैं साइड पे. ओसी पुशिंग अप वॉशरूम. दूसरी ओर लॉन्ग के तरफ से भी प्रेशर आ रहा है. इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग. ओसी was about to spot. Oh, he's good for one. Elise उनके साथ देते हुए they get to make it Naf as well as coming in with OC, and यहाँ पे पूरा wrap up करते हुए Liquid. Clean round coming through. Brilliant positioning, great time to swing, and Liquid एक और राउंड अपने बोर्ड पे लगाते हुए नजर आ रहा है. लिक्विड जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है फिलहाल, जितने मौके दिए जा रहे हैं सारे के सारे मौकों का फायदा उठाते हुए, और यही चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं वर्ल्ड क्लास टीम जो कोई भी हो. जितने भी मौके मिलेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सारे मौके का फायदा उठाते हुए. और अब देखना ये बनता है कि मिड पे वापस इक्वेशन दिखाई देगा कि नहीं. अलीज वापस सेटअप जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन एपेक्स स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे सीटी साइड से जब से निकले हैं सेकंड हाफ में, टेरेस साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए. पैसा नहीं है ये राउंड में उनके पास. एक और फ्री राउंड मिलने वाला लिक्विड को, अनलेस ऑफ कोर्स एक चमत्कार ये करके दिखा दे यहाँ पे. लेकिन लीच अभी भी धीरे धीरे क्रीप. Deagles. Sometimes they're nastier than the rifles. Show connections बैठता है. अभी के लिए उसको पनिश करने के लिए 2 लोग पुश आउट कर रहे हैं. नाइट्रो along with यकिंदर.
मिलना चाहिए आसानी से फ्रैग. Ekinder picks up one. There it is. Nitro took look forward to the second. तीसरा यहाँ पे Ekinder उठाते हुए and आखिरी खिलाड़ी रहने वाले चौथे जिनके ऊपर भी Ekinder पुश करना चाहते हैं. Already spotted. Can JL pick up another deagle shot? At least to do some kind of damage. But 1v4. Nitro says no. 2 for Ekinder, 2 for Nitro. And that is another round. But Mamba, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा Apex को. Trouble might start because पिछले बार जब ये स्कोर लाइन देखने के लिए मौका मिला था जब लिक्विड नजदीक आ रही थी, Apex were already comfortably sitting close to 14 and 15. But अभी 12 पे अटक चुकी है. And it is just Liquid making rounds in their favor. अब देख पाएंगे क्यूबिन जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी अनुभव है अपना, सारा निचोड़ते हुए अपनी टीम को दे रहे हैं, जो जरूरी है फिलहाल टीम को जरूरत पड़ने वाला है. आपने बिल्कुल सही कहा. एपेक्स आखिरी बार जब अपने आप को ये सिचुएशन में पाया था उन्होंने, लिक्विड के पास इतने ज्यादा राउंड्स नहीं थे, लेकिन अब इम्पेकेबल काउंटर स्ट्राइक खेलना पड़ेगा एपेक्स को, क्योंकि अगर ये राउंड हारते, ना कि उनकी इकोनॉमी टूटेगी सिर्फ, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा टूटेगा. थोड़ा सा डेस्परेशन मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मिड कंट्रोल इतनी आसानी से डिनाई कर रही है. देखिए अलीज एक और बार कनेक्टर में जाके किल निकालेंगे. मिड और कनेक्टर डोमिनेट कर रही है लिक्विड यहाँ पे, और इसका तोड़ निकालना पड़ेगा. अदरवाइज मुझे नहीं लगता एपेक्स यहाँ से कोई भी राउंड निकाल पाएंगे. Shakim picks one, brings it to 4-4. Elige बहुत लो जरूर नजर आ रहा है. Kixon right now is guarding Monster. Elige की तरफ जरूर जा रहे खिलाड़ी, बट उनको कवर करते हुए एक और खिलाड़ी रहने वाले से. It's not going to be an easy one. Naf, can he make sure that Elite survives? बहुत crucial round है. This is going to be super crucial for both Liquid as well as Apex. अगर Liquid यहाँ पे जीतती है, they might be just in the game. On the other hand, Apex अगर जीतती है, they might just start clinching rounds in their favor and इस मैप को close out करने के लिए एक मौका खुल जाएगा. C4 को रिकवर करके they are making their treads towards B. अभी के लिए क्लोज अप मॉली आएगा मॉन्स्टर की तरफ. दूसरी ओर शॉट से भी पुश आ रहा है. दिस माइट बी अ टाइम्ड अप्रोच कमिंग थ्रू. दूसरी ओर ओसी ही इज बैकिंग ऑफ. ब्रिलियंट पिक फॉर जेकिम. एलिज को डाउन करेंगे. ऑलरेडी लो थे, पर अभी जेकिम खुद लो जरूर हो चुके हैं. बहुत क्रूशियल राउंड यहाँ पे एपेक्स के लिए. नॉक की पोजीशन काफी अच्छी है, लेकिन किक्स इन उनके साथ जिस तरीके से बैठे. लिक्विड हैव डिसाइडेड टू सेव. वेट नो, आई थिंक वो जेकिम के ऊपर थोड़ा वरीड है. लाइक जेकिम फाउंड वन ऑन एलिज, तो वो सोच रहे हैं अभी भी वो लेट पुश फ्लैंक आ रहा है. 100% आ रहा है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, उनको ऑब्वियसली नहीं पता है. लेकिन यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा गन्स गिराना. सबसे बड़ी दिक्कत वो है क्योंकि अगर यहाँ पे गन्स गिराती है एपेक्स, तो वो लिक्विड से ज्यादा प्रॉब्लम में होगी. नॉट जस्ट मेकिंग श्योर निंजा ना कर पाए. Apex की फैंस they getting back the energy back in, but ये थोड़ा फ्री पिक देने का. I mean वो सोच रहे थे कि कोई ऐसे कनेक्टर से बाहर नहीं आएंगे, but it was just brilliant. ये Apex slowly discipline and waiting for the opportunity, but इतना ज़्यादा भी वेट करके स्लो होके नहीं खेल सकते क्योंकि लिक्विड आर कैचिंग अप. 39. Yeah, Liquid are catching up. लेकिन ये जो राउंड था बहुत क्रूशियल राउंड था. एक और राउंड, सिर्फ एक और राउंड की जरूरत है इकोनॉमी तोड़ने के लिए, एंड फिर लिक्विड डेस्परेशन पे होगी. लेकिन एपेक्स वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते गलतियां करना. यहाँ पे एक गलती उनको भारी पड़ सकती है. तीसरे मैप तक लेके जा सकते हो. तीसरा मैप इट कुड गो ईदर वे, लेकिन यकीनन इस बार डबल ऑप सेटअप है लिक्विड के पास, जो काफी
इम्पैक्टफुल हो सकता है साबित, लेकिन उतना ही रिस्की। अगर साइड का कंट्रोल लेते तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए। लेकिन एक ड्राई पीक करेंगे लॉन्ग पे और बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा उनको। पिछले राउंड में ही वाज द वन क्रूशियली डिस्ट्रैक्टिंग बट अभी के लिए ओसी क्या वो स्पॉट कर सकते हैं। राइडर इज नाउ कीपिंग आइज ऑन शॉट और दूसरी ओर पुशारा फाइनली शॉट से भी आएगा, नॉक को डाउन करेंगे एंड नाउ दे आर गोइंग टू अग्रेस फ्रॉम मॉन्स्टर। नाइट्रो गुड फॉर वन, किक्सन जरूर नाइट्रो को डाउन करेंगे बट राइट नाउ इट इज अ 2v4 सिचुएशन। ध्यान से खेलना पड़ेगा। जेएल का पोजीशन ऑलरेडी स्पॉटेड था प्रीवियस जंप पीक में, सो दे नो वो भी कहीं ना कहीं बी की तरफ आ सकते हैं। ब्रिलियंट पोजीशनिंग, ये डबल ऑप सेटअप जैसे आप बोले, इट कैन आइदर मेक इट ऑल और ब्रेक इट। इट्स मेकिंग राउंड्स फॉर लिक्विड। जी हाँ, बहुत क्रूशियल राउंड था बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट किया था इस डबल ऑप सेटअप में लिक्विड ने वो बहुत भारी था। अब दिक्कत की बात होने वाली, एपेक्स के नॉट बी डूइंग दिस। एक एक राउंड जीत के अगर वो राउंड हारते रहेंगे तो फिर उनकी इकोनॉमी, खासतौर पे जितने प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं राउंड हार रहे जीत रहे तो पूरी टीम सर्वाइव कर रही है। बहुत प्लेयर्स वहाँ पे एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन डबल ऑप सेटअप काफी एग्रेसिव सेटअप उसके ऊपर। और जिस तरीके से जेके ने ड्राई पीक करने की कोशिश करी थी ए लॉन्ग पे, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई उनके लिए। 13-10. Finally, Liquid on double digits. Weapons जरूर नजर आ रहे हैं. Couple of mixes as well. सब लोगों के पास एक ही नहीं है. दूसरी ओर इस राउंड में कोई डबल ऑप सेटअप नहीं है. They're going to stick on to one OC. दो AK जो लेने के लिए मौका मिला था, Yekinder and Naf are going to make use of it. मॉली जाते हैं एंट्री लेने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, बट नाइट्रो बैरल की तरफ से स्प्रे डाउन करने के लिए ट्राई किए. टीको इज द फर्स्ट वन. जेकेम को बहुत ज्यादा डैमेज किया. किक्सन इज आल्सो बैरली सर्वाइविंग. नाइट्रो अभी भी डैमेज करना चाहते हैं. शॉट की तरफ से उनके ऊपर ग्रेनेड आएगा, बट ही स्टिल सर्वाइविंग. किक्सन इज गोइंग टू बी द लास्ट प्लेयर. 10 HP में बचे. C4 उनके सामने रहने वाला है. 3 और खिलाड़ी उनके सामने रहने वाला है, एंड देयर इज नथिंग ही विल बी एबल टू डू एक्सेप्ट टेक नाइट्रो एंड देन फॉल. 11-13 का स्कोर लाइन बन चुका है. लिक्विड एक एक करके बहुत नजदीक आ चुके हैं अभी के लिए. इट इज एपेक्स हु आर फीलिंग अनकंफर्टेबल राइट नाउ. ना सिर्फ अनकंफर्टेबल, लेकिन उनको पुश किया जा रहा है बहुत ज्यादा. क्यूबन वापस अपना जितना भी है उसका इस्तेमाल करके अपनी टीम को थोड़ा हौसला देने की कोशिश. लेकिन Yekinder जिस तरीके से परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनका सपोर्ट देखिए. जो डबल ऑप सेटअप था, that actually worked out so well for Liquid. अब सवाल ये होने वाला है एपेक्स इसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, बिकॉज पैसा नहीं है उनके पास. 13-11 का स्कोर लाइन, और हम लिक्विड को चोक करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एपेक्स के पास वो प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है. सेव कहीं ना कहीं स्कोर मुझे इक्वलाइज होता हुआ नजर आ रहा है. मांबा बहुत अग्रेसिवली क्विक टेकिंग कंट्रोल. प्लेग्राउंड का कंट्रोल मिल चुका है अभी के लिए लिक्विड को, एंड दैट इज गोइंग टू बी एलीज. वहां से वो पार्टी जा चुका है. दूसरी ओर उनकी टीममेट्स साथ में मिलकर बनाना के कंट्रोल ले चुके हैं. मॉन्स्टर के नजदीक ग्रीट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं नाइट्रो, बट दिस टाइम इज ओनली गुड फॉर वन. नैफ ऑन द अदर एंड फाइंड्स अ वे टू टेक 2. और उसके बाद जेएल एक खिलाड़ी को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे. तुरंत एक रोटेशन आएगा. हेवन को जरूर उन्होंने स्मोक ऑफ किया गया, सो देयर इज नो विजन, बट लुक एट अप क्लोज सीटी पे जेएल. C4 प्लांट जरूर हो चुका है. उसके बाद वाटर की तरफ छलांग मार लेंगे, बट ही इज गोइंग टू क्लियर दिस कॉर्नर. Yekinder अगर ये कॉर्नर नहीं क्लियर करेंगे, वेपन मिल सकता है, बट ही इज कॉलिंग इन. देखिए दोनों पीछे देख रहे हैं क्योंकि ऑडियंस आवाज कर दी. Oh, Yekinder, he checks it. Who knock? 1v1 situation. He makes it. This is another 1v2, 1v3 situation जो नॉक फेस कर रहे थे. He's made the clutch happen. Oh.
गोली नहीं थी उनकी गन में, इसलिए आराम से वो गोलियां चला रहे थे. What a round. नॉक जो इतने ज्यादा इमोशन नहीं दिखाते, वो भी इमोशन दिखा रहे थे वहां पे. यहाँ पे जेल बहुत ज्यादा उनको डैमेज दिया जा रहा है, लेकिन अब चीजें ट्रिकी हो जाती है सीधी साइड के लिए भी. अगर ये राउंड निकाल पाए, मुझे लगता है कि फिर ये गेम लॉक इन हो जाएगा, लेकिन पेशेंस दिखानी होगी एपेक्स को. ओवर कमिट नहीं करना, अगर करेंगे तो दिक्कत हो सकती है उनके लिए. लेकिन काउंटर फ्लैश, काउंटर मॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज देते हुए ओसी पहला किल निकाल गया, दूसरा निकाल पाएंगे जी नहीं. किक्स इन आके, लेकिन नाफ्लाई विल होल्ड द लाइन. यहाँ पे नेड्स, मॉली, फ्लैशेस सब शुरू हो चुके, लेकिन नाफ्लाई उनको सर्वाइव करना पड़ेगा यहाँ पे. इतना ज्यादा डैमेज, लेकिन 3 शॉट से फ्लैंक आना शुरू हो चुके. क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे जी नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा. स्टीको मैक 10 लेके करेंगे उनको, लेकिन स्टीको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. लीज आई एम प्रीटी श्योर नोज वहां पे एक और प्लेयर है. जेल बैठे वहां पे, लेकिन नॉक मिसिंग दैट शॉट. बहुत क्रूशियल शॉट था. जेल हेल्प कर रहे थे. ये किंडर, ये ड्राइव पीक बहुत भारी साबित हो सकता है. जेल, व्हाट इन द वर्ल्ड वाज दैट शॉट? It's Liquid right now making all mistakes. Pick मिल रहा है, उसके बाद swings coming in, forcing the duels, aggressive controls लेना, and Liquid are unable to stop this team. Apeks, ये जो confidence जो आया है इस टाइम आउट के बाद, and especially that 1v3 जो Knock ने pull off किया है. Sometimes it happens when one player makes such a play happen, he instills confidence in every other player, and वही यहाँ पे Apeks के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है. They are on map, match and series point. They're ready to close this off and head over to semi-finals. मुझे लगता है यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है एपेक्स के लिए, बिकॉज जिस तरीके का मैप कंट्रोल लिया लिक्विड ने. स्टीको ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे. अगर ये टेक डाउन होते तो दिक्कत होगी. 5 प्लेयर्स बी की तरफ है, 2 कनेक्टर, 3 बी शॉट. जेल को जिंदा रहना पड़ेगा उनको. पहला किल जरूर निकाला, दूसरा निकालेंगे यहाँ पे. स्प्रे नहीं, लेकिन नाफ्लाई कीपिंग द होप्स अलाइव. जेकब बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर, जिंदा रहना होगा, इतना ज्यादा डैमेज दे चुके हैं. नाइट्रो will get taken down. Naफ्लाई on 7 HP. Iklaude player, 1 versus 2, 1 versus 1. लेकिन नहीं, Liquid gets thrown out of the major. Apeks, आपके चौथे semi-finalist. They can't believe it. Liquid can't believe it. The fans can't believe it. Cuban can't believe it. लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया यहाँ पे Apeks ने, तारीफ करनी होगी, दाद देनी पड़ेगी. और Liquid एक और बार एक बड़ा स्टेज, और वो जो परफॉर्मेंस की जरूरत थी वो नहीं कर पाए. ना वो आगे बढ़ पाए, ना उसके ऊपर खर्च कर पाए. और इमोशंस देखिए आप. Man, unbelievable show coming through. Yep, emotions देखिए. It was a big team to defeat. Cuban भी बहुत खुश है. I think the last stretch, the last time out जो बात किया उन्होंने, and उसके बाद that Knox clutch coming through, that will be the highlight of the day. Standing ovation, पूरी stadium आप देख सकते हो. Well, let's go to our host. This is obviously not the ending you wanted to the journey, but we did get Liquid back into the playoff side of a major. I want to just start by talking about when it comes to this Ancient, we've seen it been a bit of a weakness from you guys. You would have expected it coming out from them for sure, but they were still able to outplay on the utility. We didn't see the same Liquid. What did it feel like in game at that moment? Well, I think on Ancients, they love you. They still love you, bro. Thanks, guys. I don't know, I feel like Ancient was just like a really hard map in general for us. It was a map that we had a lot of confidence in coming in from the boot camp, but it just never ended up getting anywhere. And we had rounds where we had like man advantages that we ended up like throwing away. And even on Overpass, we
ended up giving up the entry a lot of the rounds, and it was really hard for us to, get our foot into the game because of that, just being down so much. And then when it comes to this overpass, it has been a good map for you, it's been a strong one. We've seen some closer games on it for sure, but it seemed like they just had your number time and time again. What point, though, did you think that you could make the comeback? What point did you feel like it was happening? Because it was so close, so back and forth. Yeah, I mean, we really just need a couple rounds on T-side, and even though we didn't do as well as we wanted to on T-side from giving up so many entries and being down 4v5 a lot of the rounds, we still had a chance because we got pistol rounds and we had reads on what they were doing, but we ended up just not being able to, deliver it individually, I think. And for you, Elise, right? You've had 12 major appearances. We've seen you win the Grand Slam. We've seen you be the best team in the world. You've had 8 years on one team, being the front man, being the dominant one. So I just want to let you say your final piece here at the last CSGO major to everyone out there, everyone that loves you. Yeah, I mean, this was an awesome major. There's so many fans here. This is such a crazy stage, and it really sucks not being able to go any further. But, CS, it's always going to be there. We're going to be here still. CSGO's not gone. It's just getting an upgrade. So we'll be here for the next major, and hopefully we'll be back. 8 more years on Liquid, CS2? Yeah, I hope so, yeah. I love it. Thank you very much, man. Well, Jacob, what a journey it has been on the other side for you. You guys come in as the underdogs. We look at this Ancient. You beat them last time, you beat them in a better fashion this time. You guys have a huge amount of confidence. Did you expect Liquid to make more changes or adjust more between the games of when you played them last? We expected definitely them to do a little bit of changes. I would give a shout out to our team behind us that found and did our anti-strat. We knew what was coming. You can see in our reaction. You even see like one smoke flying. We know which smoke it is. We just run into B because we know he's alone. So we definitely had really good reads, and some of the new players on the stage was playing fucking amazing. So yeah, shout out to everyone on the team. We were so happy. Yeah, when you say about the new players to a stage, Kixan, first majors, absolute dominance game after game. How was he calling with this type of pressure in this arena, in this place? Because you've been here before, but he certainly hasn't. Yeah, I mean, this was his game. Both him and Nok played amazingly. Pico on the first map as well. I don't know, he has no nerves. He's a man of steel, and I've seen it in a couple of games, but today was really, really impressive, and he's one for the future. He definitely is. Now, I want to touch on it for you, Jacob, and the fact that we haven't seen you at a major for quite some time. It was Berlin 2019. We last saw you there. You were in the semi-finals back then. You're in the semi-finals now with a completely different team, new surroundings. But what's it feel like for you to be back in this stage once again where it's been so long? I mean, it's been a while. I never expected, honestly, to be in a semi-final again. I had hope of being at the major again. But here we are. We've been working our asses off, and it pays off. And, I'm just very fucking proud. You should be proud. Guys, are we proud of them? And finally, mate, I have a question from the Blast TV viewers at home. You can't choose your own sticker with this question. It says, which Blast TV Major 2023 sticker do you think is the best? Like player? Yes, but not yours, and not from your Mine is the worst. Yours is the worst? Okay. Yeah, like, to be honest, I thought I sent in the new one. And then when it came out, it was my 2015 one. I was like, what the fuck is that? But the best one maybe Cadian. Cadian is a pretty good one. Okay. Yeah. Okay, you like Cadian as well. Thank you very much, Jacob. Welcome to the semi-final. They may not like Cadian, but maybe you can eliminate him tomorrow. We'll have to wait and see. Guys, give it up for Jacob and Apeks! Against all of the odds, Apeks part the waves. They dissect Liquid in just 2 maps, and they net their spot in a well-deserved semi-finals place. A story of the underdogs truly taking a bite out of the big guns. And man, we can just see pure elation on the faces of every single member of that Apeks squad. Because Jacob, they do it in style. They do it in style. I think Chat summarized it pretty well. You could see the joy, you could see the happiness. It felt like an out-of-body experience for all these Apeks players. I love the fact that JChem is
standing there on the stage thanking the team behind Apeks as well. We talked about it. We've seen them, everyone from the player to the coach to the vlog team who's creating vlogs every single day. It does feel like Apeks is coming down here with a family, and it shows on the server. They were playing exceptionally well today. And I do want to point out two things right here. JL and JKim have been the two best performing players for Apeks throughout the entire tournament. They were the two worst performing players in this game, and they still won with ease against Team Liquid 2-0. That speaks to a team that has a lot of different strings to play off, and my oh my, that's a team you have to respect in a semifinal. Oh yeah, the way that Apeks were able to decimate and tear apart Liquid across both maps showed a level of preparation, a level of calling, and the fact that everybody was able to contribute in their own ways. This is a legitimately comprehensively strong team. It's one that definitely flew under the radar for a long time. They didn't give us too much to be really too excited about going into this major, but it's been nothing but excitement once they have hit this stage. What a game to send Liquid home. And for Apeks, I think that they have to recognize the fact that Kixan is an exceptional in-game leader. I feel like the story of both of the games we've watched today, with Shuhei winning for GamerLegion, with Kixan for Apeks, both of these guys are bringing incredible strategies, incredible reactions, and very strong individual play on top of it to bolster their teams in both tactics and in firepower. Yeah, let's run some Kixan highlights just to relive the magic that he was able to deliver on the server. Maui, you are so right, not only in the strats that he was calling, but the actual individual frags that he was able to have impact in as well. There's so many highlights coming out from Kixan, and what I love about him the most is that he strikes me as this modern, new day and age in-game leader. The fact that he's leading by example. We saw it on Ancient. All these aggressive plays, he's the first guy in. He wants to be involved. He's not calling something, then standing back, watching it, observing it, not being part of it like some of the old school in-game leaders sometimes have a tendency to do. Now he's in your face. When he's calling something, he will lead that team by example, and he did that throughout the entire game. The first half right here on Overpass, I believe he finished with 22 or 23 kills. That was absolutely outstanding from the in-game leader of Apeks. That's absurd. Yeah, if 20 kills as an IGL on a half, that's just monstrous performance out of this guy. Excellent stuff from Kixan. I mean, the change that Apeks made to bring Kixan on this roster to rethink things, I think it also was one of those ones where probably people in the tier 2 space saw it, and given the record that Blue Jays had, that Northern Macedonian team, and finally Kixan just opening him up to international offers, going with it, leaving his fellow countrymen behind, it's lifted him, it's lifted Apeks to a new high that they are willing to ride, and they want to ride going into the semis. Jacob, you coined it as the best roster move you've seen in this year. Yeah, it's paying off. It's paying off massively. It's been a while since I've seen a roster change that had so much impact, especially when you think about the context of it, right? You said it, Apeks coming into the major, I don't think anyone really expected him to be part of the playoff. Anyone didn't expect him to be part of the Legend stage, but every single round they've been punching above their weight, I would say. They've been playing better and better. They're growing as a team, and as I said tonight on the stage right here, we saw JKim and JL being by far the two best performing players throughout the entire group stage for Apeks. They weren't even needed in order to win against Team Liquid. That speaks volume to how good this team is. And it was such a dominant start from the side of Apeks as well. I think we need to put one moment under the spotlight. It's round number 9, where it's literally everything, everywhere, all at once for Apeks. Yeah, incredible movie, but an even better round for the side of Apeks. I mean, just defaulting out, you see that by getting this player in connector early on, by having a player deep in party and JKim, that they were able to just find, after some of their set pieces worked on the CT side, after they were able to build some momentum, they started taking a lot of risks, and it started becoming unplayable for Liquid. When you have a team that's so empowered, what Apeks was doing on Ancient and earlier in that half was with teamwork. They were throwing nades, they were joining up onto a site, they were actually working together in tandem, but then that's a round where they're just going everywhere. And you can't, like, Pimp, when people are just running in 5 different directions at once, it feels like a pug. It feels like, how am I supposed to know what's coming next? And I think that's what Apeks wanted to do in a round like that. They just wanted to throw caution to the wind and see if they can gamble, push in every direction, and it worked. They wanted to simplify the game. Sometimes Counter-Strike is about winning your duels, especially on a CT side like Overpass. You can allow yourself to do it because it is very tough as a T player to win some of those duels. And yes, you can cook down Counter-Strike to the most simple game in history ever. You win your duel, you most likely will win your round if you play like this. So yes, it was sort of like a Poggy style, but I love the fact that you're able to do it. We taught Liquid as being the better team in terms of individual powers, in terms of, you know, the playmaking they had on the team, but in this game it felt like Apeks were the better players. Well, it almost looked like Liquid were going to be able to turn the tides coming into that second half, obviously moving on to that favoured CT side, and then Nork said, hell
hell no. Just an absolutely unholy clutch to net Apeks 14. Oh, he was so clutch in this one. Yeah, we've been talking about the fact, or at least it's been a kind of an underlying storyline that Nock has been one of the most clutch players. I think he has the most 1vx's now after this one. And look at this, great clear from Yakindar using some of the crowd to his advantage, but this is a blinder from Nock, and he's now knocking at the semifinals door. What you're watching right now in this round was where NA died. That was what, sorry, where NA died. Liquid died in that one. You look at the fight. You died as well. I literally died in the green room. I'm surprised I'm here. You resuscitated me. You had to get the shock paddles out. You're like, I was like, no. I was desperately trying to find the mute button for you throughout that entire game, but it didn't work out for me. I'm not going to lie. That's exactly where Liquid died in that round. 13-11. They were coming back into the game. You see the buy from Apeks as well. It's pistols, it's armor. It's a round that you cannot lose if you're Team Liquid. And I think that's where we should steer the direction as well. Yeah. We praised Apeks a lot in this game, and they played fantastic Counter-Strike. Rightly so, yeah. But Liquid, you cannot be proud of this performance. You cannot be happy for this performance. I know the silver lining. Yeah, we got them into the playoff for the first time since 2019. Congratulations. But you're supposed to be one of the best teams in the world, and you were not in this game. I hated actually watching Liquid for the first 6 or so rounds, even the one that we highlighted earlier on, because it felt like they were scrambling into positions a lot of the time. So many times, Apeks just would peek into a tunnel. I think round 2, they were able to reset Liquid because they just started peeking in multiple directions, and Liquid are just, they have their nades out all the time. They're not ready to trade. The amount of times they were caught with nades out is ridiculous because Apeks were just going for peeks here and there. After a while, if you're Liquid, you need to just hold your nerve a little bit better. Call for a hold call, and I think now it may be said that with Yakindar switching to in-game leading roles, and if that's supposed to be the big voice on the roster, when he's the one that's actually winning a lot of the duels, he feels like he's in control of his motions, what he's doing. Sometimes it's still hard to be an in-game leader and be outputting on the fragging side of things, because the calling in this game from Liquid was simply not up to par with what we even saw in the Legend stage, where Yakindar was calling. So the big stage moment for Yakindar, sure, he performed as an individual, but you could tell that Liquid were a little bit in their heads in a lot of the moments of transition. That's the thing. Yakindar was trying as he might, trying to get those openers to work. He was, you know, sometimes getting a little pick here and there, and then Liquid just weren't able to capitalize upon basically any of the openers he found. I feel like Yakindar was the only one trying on Liquid's T side, and yes, maybe he's calling, maybe he's setting himself up for success, but his rating on the T side in this game was 1.29, which is somewhat decent in a game that you're losing in this fashion to Apeks. And the next one on the Liquid scoreboard is Nafly with -3 KD and 0.99. It felt like Yakindar was the only player on the server, especially on Overpass. Nothing came out of Nafly, nothing came out of Liquid, nothing came out of OC. We praised OC for having a great group stage. We always talk about the playoff OC coming into clutch. He had 0 impact in that game. I never saw him make the difference with the AWP, and we even talked about it against a player like Nock, who's also defensively installed, who's also not a guy who's out there going for the peaks. There was so much space for OC. He could have done whatever he wanted to, but he didn't, and that was a massive issue for Team Liquid. And it's just such a disappointment when we were looking at Liquid, you know, ramping up into this playoff stage. We're talking about a team that were down 0-2 in the challenger stage, that somehow, someway managing to run it all the way back. I was, you know, thinking maybe a little bit of copium in my blood, thinking maybe we're going to see a Cloud9-esque level performance, making it all the way to the grand finals, and then Liquid just crumbling in this situation. It does feel like they finished as they started. We talked about it, right? They came in, they lost unbelievable games in that first stage of the major. 0-2 down, you lose the first map to Flux, so you're one map away from going out in the challenger stage, which in itself would have been an absolute disaster for Liquid. Then you have this string of games where you win 5 out of 6, you almost beat Heroic as well in a best of 3. We think to ourselves, we're standing right here, very positive around Team Liquid, thinking that's a team that can contend for the title, and then they finish in this fashion. At least we made a sour taste because I don't know where to put him. Yeah, I mean, when you look at them and where their future is, where do you want to put them? Yeah, it's tough to see that they're anywhere but just kind of, you know, a top 8 team. Like they're definitely not title contenders like they may have believed they were based off of recent results, and it feels like Liquid have done a decent job at creating consistency in terms of at Katowice they made playoffs, you know, at the World Finals they went deep, Fall Finals they went deep, a lot of tournaments they're going deep, but we see where their ceiling is. I think we've seen it once again, and to lose to Apeks in this fashion, I'm not sure if changes are on the horizon for Liquid, but I think it's time to take a step back and recognize that whatever's going on right now, even after the multitude of changes, changing IGL, changing map pool, bringing in Yakindar itself, like this 5-man lineup,
might not have what it takes to actually capture a title, because this road for them here, with Apeks as their first opponent in the playoffs, that should have been a semifinals berth at least. I want to contextualize it, right? Because I agree with you. When you look towards Liquid, when you look towards the budget of Team Liquid as well, the player material they have to work with, just being a top 8 team is not enough. You as an NA resident would be the first to agree with me.